मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा विलंब हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इंतज़ार जो है वाकई बहुत और अच्छा खूबसूरत होने वाला है। तो फाइनली आप सबका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत तहे दिल से मैं गगन गौतम स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम करता हूं। जैसे कि मुझे पता चला है कि कुछ हमारे जो गेस्ट हैं वो अभी भी रास्ते में ही हैं, हार्डली 5 to 10 मिनट्स मोर, और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज जो एक ख़ास दिन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वाणी जी से मेरी बात हो रही थी कि बहुत विश्वास रखती हैं ठाकुर जी में, तो आज मैम एक ऐसा ही ख़ास दिन है। आज आपको पता है कौन सा ख़ास दिन है? मैं बता देता हूँ। आज है जगन्नाथ दिवस रथ यात्रा। ये अर्चन से मुझे सुबह पता चला था। दूसरा जो दिन है डॉक्टर्स डे है, और तीसरा दिन क्या है आज? जोक डे। यस, आज जोक डे है। तो इसके लिए हमारे बीच में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट आगरा से आए हैं। आगरा से आए हैं तो इसका मतलब वैसे कुछ गलत मत समझिएगा। बहुत अच्छा यहाँ लाफ्टर आपके बीच में आपको मिलेगा, और भी बहुत कुछ देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। तो कहने का आशय यही है कि जिस तरीके से मेरी अभी जितेंद्र से बात हो रही थी, जो भी हमारे गेस्ट हैं बहुत जल्द हमारे बीच में होने वाले हैं, 5 to 10 मिनट्स मोर। सो प्लीज़ जब तक आप थोड़ा सा और धीरज बना के रखिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।
Good morning to all of you. Thank you, Pal. Mr. Jitendra, can I start? 3 में? Thank you. I request to all of you, please, आप लोगों अपनी अपनी सीट ले लीजिए. राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम है गगन गौतम. क्या बात है, थैंक यू. जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज. थैंक यू. कुछ ऐसा ही अंदाज होता है सुनो शारदा 90.8 FM पर. मेरा नाम है गगन गौतम, क्योंकि सर मैं सुनो शारदा 90.8 FM का सुबह का जॉक हूँ, और वहाँ पर मस्ती कमाल धमाल होता है, सब कुछ होता है, इंफोटेनमेंट होता है, ज़बरदस्त होता है. सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कार्यक्रम थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन सच बात तो ये कि मौसम का जो मिजाज है जो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े अतिथि यहाँ तक हमारे लेट पहुँचे, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ. भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़ी ही खूबसूरत बातें हैं कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि मेरी अभी वाणी जी से बात हो रही थी, तो गगन ठाकुर जी को मत भूलेगा. सच बात है कि हम ईश्वर को, खुदा को, वाहे गुरु को सर कभी कुछ नहीं भूल सकते, उनको हमेशा याद रख के चलते हैं. और जब हम बिस्मिल्लाह करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे कार्य हैं, जो काम हैं, वो शुभ होते चले जाते हैं. सो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हमारे इस कार्य में कहीं कोई विघ्न बाधा ना आए और बड़े ही सुख शांति पूर्वक ये कार्य हमारा संपन्न हो. जिस तरीके से भारतीय संस्कृति में एक बात कही जाती है वाणी में, क्योंकि आपसे बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से इस वातावरण में एक माहौल है, चाहे वो यूक्रेन की घटना हो, कोरोना हो, और अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में एक प्राकृतिक आपदा आई हो, बहुत अच्छी लाइनें हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो. धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो. क्या बात है, जोरदार तालियां आप सबके लिए. थैंक यू सो मच. सो फाइनली ज्यादा समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं लाइटिंग लैंप के लिए इनवाइट करना चाहूँगा. हमारे बीच में हमारे गेस्ट आ चुकी हैं. आप हैं श्रीमती राखी गुप्ता भंडारी मैम, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ पंजाब. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. जोरदार तालियां मैम के लिए प्लीज. साथ ही साथ हमारे बीच में है डॉक्टर एस कृष्ण कुमार, IAS रिटायर्ड, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चेयरमैन नेशनल बोर्ड फॉर मेंटर एंड मैस्कॉट इंडियन फिल्म फेडरेशन. सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. साथ ही साथ हमारे बीच में हैं श्री विवेक गुप्ता जी, रजिस्ट्रार शारदा विश्वविद्यालय. सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. हमारे बीच, तालियां प्लीज, जोरदार तालियां होनी चाहिए ना. हमारे बीच में SMFE यानी कि जो अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंटरटेनमेंट की डीन डॉक्टर रितु सूद मैम, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है. शारदा लॉन्च पैड से हैं अमित सहगल जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल. और इसके अलावा हमारे बीच में हैं जितेंद्र पाराशर जी, जो कि ग्लोबल चेयरमैन हैं MIF के. तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल, खुशामदीद. एक शेर मैं पढ़ रहा था, अज्ञात साहब का बहुत ही खूबसूरत शेर है कि शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी. वाह वाह, आने दो. शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती. अज्ञात साहब ने कहा है. सो फाइनली मैम मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूंगा लाइटिंग लैंप के लिए. प्लीज आप आए, दीप प्रज्वलित करें. ऑडियो विजुअल अगर आपके पास है तो प्लीज अर्चन भाई, हम उसको चला सकते हैं.
निलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विश्वविनोदिनि
बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जितेंद्र, वाकई बहुत अच्छी ऑडियो वीडियो है ये, और कहीं ना कहीं एक संदेश देती है कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और ये जोत जिंदगी में हमारे जलती रहनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी में अंधेरा हो, और यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शारदा विश्वविद्यालय यानी कि शारदा लॉन्च पैड इन एसोसिएशन विद SMFE यानी शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट is organizing Mmiff. It means Mentor and Mascot Indian Film Federation, Indian Innovative Startup Conference, and Iisa. Iisa, it means Indian Innovative Startup Awards 2022 में आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। इसके जो की फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो होने वाले हैं बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, guest speaker session by renowned industrialists and motivational speakers, panel discussion with the fame of Shark Tank India, business networking, award ceremony, and finally singing performance by Axi. और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं, बहुत दूर से आए हैं, जिनका नाम है भूपी फ्रॉम यूपी। बहुत कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें कि हास्य आपको देखने को मिलेगा, इश्क आपको सुनने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए फाइनली जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए। हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे प्रो चांसलर सर YK गुप्ता सर, शारदा विश्वविद्यालय से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, सबका वेलकम सर। जोरदार तालियों के बीच सर का स्वागत प्लीज। डीन मैम अगर आप अलाउ करें तो सर को कॉल करें। सर दो शब्द सुनने के लिए हम बेकरार हैं, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। YK सर प्लीज आप स्टेज पर आएं, हम आपको सुनना चाहते हैं इस संबंध में। जोरदार तालियों के बीच YK सर का स्वागत करते हैं प्लीज सर, वेलकम सर। बहुत खुशी की बात है आज शारदा विश्वविद्यालय में हमारे बीच डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, चेयरमैन MMIF नेशनल बोर्ड हैं, और रवि गुप्ता भंडारी जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर पंजाब से, मैं उनका शारदा विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिनके तत्वाधान में ये आज आयोजन हो रहा है, मेंटर एंड मैस्कॉट इंडिया फिल्म फेडरेशन, जो मुझे लगभग 1 महीने पहले मिले थे, और उनके मन में ये भाव था कि देश में जो तमाम स्टार्टअप्स हैं उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया, और आज इंडियन इनोवेटिव स्टार्टअप अवार्ड्स जिसका आज आयोजन है और जिसकी आज कॉन्फ्रेंस है, और पूरे देश से जो तमाम सम्मानित स्टार्टअप्स यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सभी का शारदा विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि भारतवर्ष में स्टार्टअप की जो दुनिया है, अगर आज से 7-8 साल पहले देखूँ तो कुछ फ्यू स्टार्टअप्स पूरे देश में हुआ करते थे, और आज पिछले 7-8 साल में प्रधानमंत्री जी की
नेतृत्व में और इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया गया और आज पूरे देश में लगभग 60,000 स्टार्टअप्स हैं और ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि देश के नौजवान, देश के यूथ, जिसमें तमाम क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उन क्रिएटिव आइडियाज़ को कैसे बेहतर और बनाया जाए और स्टार्टअप के माध्यम से उनको एक पोर्टल दिया गया और शारदा विश्वविद्यालय जो कि स्टार्टअप का एक बड़ा सेंटर है जिसको हम शारदा लॉन्च पैड के नाम से जानते हैं और तमाम शारदा विश्वविद्यालय के तमाम स्टूडेंट्स और आसपास के जो भी लोग उस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय की सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स तत्पर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि आने वाले समय में भारत से तमाम बेहतर यूनिकॉर्न निकलें। मुझे खुशी है कि देश में साल में अब तक मेरे ख्याल से 40-50 यूनिकॉर्न आ चुके हैं जो कि बहुत बड़ी बात है और एक जब यूनिकॉर्न आता है तो देश में मिलियन नहीं बिलियन ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट आता है। तो आज इस आयोजन पर मैं सभी उन स्टार्टअप्स को जो भारत देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों ने अपने तप से, अपनी मेहनत से, क्योंकि एक स्टार्टअप को मेरा मानना है कि सक्सेस होने में जब 100 स्टार्टअप फेल होते हैं तब एक स्टार्टअप आगे बाहर निकलता है। तो आप लोगों ने अपना जो पैशन है उसको खोया नहीं और अपने पैशन के साथ, अपने जुनून के साथ उस स्टार्टअप पर लगे रहे और आज इस आयोजन में आपको संस्था द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक जो संगम है इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिससे हम आने वाले समय में देश में एक बेहतर इनोवेशन, बेहतर रिसर्च और बेहतर पेटेंट हम इस देश से निकाल सकें। आज कोई भी डेवलप नेशन पूरे वर्ल्ड में है तो वहाँ पर जो रिसर्च हो रही है, अब हम देखें यूएस की हिस्ट्री को, हम देखें कनाडा की हिस्ट्री को, हम देखें यूके की हिस्ट्री को, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन रिसर्च जो कि इंडिया पिछले 60 साल से काफ़ी वीक था। पिछले 10-15 सालों में इस कार्य में बहुत तेज़ी से आई है और मैं हमेशा मानता हूँ कि भगवान ने हम सबको जो टैलेंट दिया है, हर स्टूडेंट्स के पास, हर मनुष्य के पास भगवान का एक टैलेंट है। इट इज़ अप टू अस कि हाउ वी कैन शार्पन इट और कैसे उसको आने वाले समय में हम समाज को बेहतरी के लिए उस टैलेंट को लगा सकते हैं। और इस स्टार्टअप में एग्रीकल्चर को अगर मैं देखता हूँ, एग्रीकल्चर बेस में तमाम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नैनो ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है स्टार्टअप्स का। और मैं कोई अभी आर्टिकल पढ़ भी रहा था 10-12 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में कि देश में आज की डेट में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बायोटेक के ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के माध्यम से और इनोवेशन के माध्यम से हुआ है, जो कि पिछले 8-10 साल में जो कभी $800 मिलियन होता था वो आज लगभग 6 लाख करोड़ का हो चुका है। तो इसी तरीके से आईटी सेक्टर में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। जितना भी हम रिफॉर्म्स आज की डेट में देख रहे हैं ये सब आप लोगों की देन है। मैं आप सभी लोगों के आपके इस पैशन को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में आप अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से इस देश को नई ऊंचाइयां पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों को शारदा विश्वविद्यालय में आने के लिए और यहाँ सम्मानित करने के लिए मैं संस्था को भी धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने इस माध्यम से देश को नई ऊंचाइयाँ बनाएंगे और एक ऐसा अभियान जो निरंतर चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपके इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती राखी गुप्ता भंडारी मैम, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ पंजाब। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ जोरदार तालियां मैम के लिए। बुके
अतिथियों का जो सत्कार है भारत की एक परंपरा है, उसी के तहत अभी सर ने जो कहा बिल्कुल सच कहा कि अभी आई थिंक मंडे की एक खबर ही मैं पढ़ रहा था जिसमें स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बातें बताई गई हैं और हिंदुस्तान का जो नाम है दुनिया में, वर्ल्ड में 19वें नंबर पर रैंकिंग आई है भारत की। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग, तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच में है डॉक्टर एस कृष्ण कुमार सर, IAS रिटायर्ड, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चेयरमैन नेशनल बोर्ड फॉर मेंटोर एंड मैस्कॉट इंडियन फिल्म फेडरेशन। वेलकम सर, जोरदार तालियां सर के लिए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, डॉक्टर एस कृष्ण कुमार सर, सर हम आपको सुनना चाहते हैं सर, प्लीज। मिस्टर जितेंद्र। जितेंद्र जी, सर को मैंने, हाँ प्लीज। जोरदार तालियां सर के लिए प्लीज। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। Distinguished founder and chancellor of the Sharda University, Sri G.K. Gupta, the Resident Commissioner of Punjab,
in Delhi, Srimati Rakhi Gupta, Mr. Jitendra Sharma, Chairman of MMIFF, Mrs. Vani Sharma, MD, Chairman of the International Commission, Sri Gaurav Gupta, Sri Vivek Gupta, Registrar of the University, Dr. Ritu Sood, Dean of the University, Dr. Amit Segal, Director, Sharda Launchpad, other distinguished guests, members of the faculty, dear friends, the students of this International Center of Learning of India. It is my privilege today to be standing at the sacred premises of one of the best and most well-known universities of our great country. I'm here as the president of this Film Federation, who are the co-hosts, and I'm privileged to be as part of this organization, which is dedicated to serving all the personnel of different branches of the Indian film industry, which is the biggest cinema industry in the whole world, with more than 1,000 feature films and 1,000 short films every year. It contributes $10 billion to India's GDP. It employs 3 million people. And apart from being a unifying force of India's diverse culture, this industry has footprints all over the globe, especially in South Asia, Middle East, Eastern Europe and Russia, even in China. As India moves towards modern nationhood, it is already the 5th largest global economy and the fastest growing one, under, may I say, the leadership of our dynamic Prime Minister, Sri Narendra Modi. The film industry has a significant role to play in India's nation building. I would like to mention one of the new trends in the film industry which may be relevant to the student community of this university. Once the film industry was the prerogative, if not the monopoly, of big production houses. Now, with the expansion of the industry to OTT platforms and so on, the advent of technology, young people who are interested in acting or other aspects of this industry have tremendous opportunities for startups in this industry. This federation will be happy to mentor them, give them all facilities. Perhaps they can open a facilitation center in the university campus itself. Today's motto of the seminar is startups. Startups are the future in our country. We have liberalized the economy, and now is the time for young filmmakers. The budget of the budgetary constraints of the films have come down. Now there is scope for great creativity and initiative for entrepreneurship, not only in the cinema industry, but all over the spectrum of India's economy. They said I have to say a few words, and I'm already done. I wish the students of this university a great future. It is a privilege to be students in this university founded by Mr. Gupta. And as India moves to become again to be in the forefront of nations, you have a role to play. Be dedicated to this country. Go do the extra mile.
make full use of your educational opportunity in this university. Become valued citizens of this country. Give your best to this country because this country deserves it. This country is our motherland. I wish you all Godspeed and good luck. Thank you. थैंक यू सर, आपकी शुभकामनाओं के लिए। सॉरी गया। अभी मैं परंपराओं के बारे में बात कर रहा था और अभी जितेंद्र मेरे कान में एक बहुत अच्छी बात कहकर गए हैं। और ये अक्सर हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, घर घर में होता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो पहली चपाती गैया के लिए निकालते हैं, एक कुत्ते के लिए निकालते हैं, प्रभु का भोग लगाते हैं। तो जितेंद्र ने बहुत अच्छी बात मेरे कान में कही कि गगन भाई ये ज़रूर कहिएगा कि जो पहला अवार्ड है आज का मैम, हम ठाकुर जी यानी कि बिहारी जी के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र। और इसके लिए मैं फिर एक बार मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे बीच में है राखी गुप्ता भंडारी मैम, प्लीज़ आप आएँ। वाई के गुप्ता सर प्लीज़ आप मंच पर आएँ। मिस्टर जितेंद्र एंड वाणी, आप लोग प्लीज़ मंच पर आइए। अगर आप कहें जितेंद्र ये अवार्ड मैं ले जाऊं, मैं मथुरा से हूं। थैंक यू। क्या बात, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। तो जय हो ठाकुर जी, राधे राधे। मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियों में, मैं तो खोई रहूंगी शाम। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गाना है ये राखी गुप्ता भंडारी जी ने खुद गाया है टी सीरीज के लिए। वाओ, लवली, बहुत ही खूबसूरत मैम। भंडारी मैम, हम आपको सुनना चाहते हैं और साथ ही साथ आपने जो गाना गाया वाकई बहुत अच्छा गाया, बहुत खूबसूरत गाया। जोरदार तालियां मैम के लिए, क्योंकि ये जो आवाज़ अभी आप सुन रहे थे, मधुर आवाज़ भंडारी मैम की थी। मैम 2 शब्द आप हमारे प्लीज़। थैंक यू मैम। Thank you very much for inviting me here. It's a pleasure and privilege to be present on this occasion when we are honoring and encouraging all the startups which India is seeing today. From 5,000 and nearly, in fact 500, we've grown to about 65,000 startups, which is a complete feat in itself. I would like to really thank the Vice Chancellor of this university, Mr. Gupta, and all the other dignitaries present here, especially Jitendra ji, who has always encouraged, and he was, in fact, literally he was telling me that, madam, aapko aaj yahan aana hai, kyunki Banke Bihari ji ka award hai, which was very important to me as well. And मुझे लगा कि आज ये मुझे कृष्ण जी ने शायद यहाँ बुलवाया होगा, तो इसीलिए आज ये अवार्ड भी यहाँ प्रेजेंट करना था। और this is seriously such a coincidence, and I hope this is a very auspicious beginning. भजन आपने सुन ही लिया है, तो उसकी 2 लाइन अब मेरे गाने से यहाँ पर कुछ वो नहीं आपने सुन ही लिया है। You can go on YouTube and just click. मैं एक लाइन गा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियों में, मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियों में, जय राधे 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 राधे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारी ब्रज की जो भाषा है मैम बहुत चोखी है, तो जब आते हैं यूँ कहेंगे कि चोखो आनंद आएगा साहब। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फाइनली जिस घड़ी का हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कुछ हमारे पास जो हमारे बीच में पैनलिस्ट हैं वो आ चुके हैं।
सो पैनलिस्ट को इनवाइट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में SMFE की स्टूडेंट तनु। तनु प्लीज़ आप आइए। तनु के लिए ज़ोरदार तालियां। ये एक SMFE यहाँ मौका देता है स्टूडेंट्स को कि वो आए, सीखें, समझें, अपनी बात आगे रखें। तो तनु अब आपके लिए थैंक यू। Thank you, sir. So, we are glad to invite our first panelist, which will be moderated by Mr. Munish Jindal, sir. And our panel members are Dr. Parmeet Singh Chadha, who is WordSec Chamber of Commerce CEO Word Experts, Priyanka Behel, Personality Architect, Communication and Leadership Coach, Professor Dr. Shantanu Das, Shishadri Puram Group, author Sherry, Dr. Gaurav Gupta, sir, Founder President of Global Trade and Technology Council of India and Chairman International Board for Mentor and Mascot and Indian Film Federation. Please welcome, sir. Please welcome on the stage, sir. Wow, this is wonderful. How's the energies here? Wow, wonderful. This is what is needed. So let's quickly, first of all, give a standing ovation to Jitendra ji and Sharda University for making it possible. Let us all give a standing ovation. Thank you so much. This is much needed. Jitendra ji, for making it possible at Sharda University. This is much needed in the post-pandemic world where we all are craving for this personal touch. Thank you so much. And where would you see such a star-studded panel right on the podium, on the stage? Guys, it is all tough to meet even for a person like me individually, and they are in front of us all together. So I'm so happy today that we are discussing our startups, our business discussions, about entrepreneurship, and we have wonderful seasoned professionals, entrepreneurs, educationists, and academicians among us. So I'm so glad that we are beginning this with Ishan ji, Gaurav ji, Chadha Saab, Sherry ji, Shantanu Das sir, and Priyanka Behel ma'am. So without taking much of time, I would really love to know. Let's start with maybe Ishan ji itself, as he is at the first spot. Ishan ji, what do you feel that what it takes for a startup to start and convert it into a glorious journey? First of all, I would like to thank so much to Sharda University for organizing such a wonderful event and honoring the startup situation in this country at this present point of time. And also the esteemed panelist just sitting next to me. And because giving me an opportunity, being the youngest member in this panel, itself is a deep honor.
and also to my lovely friends sitting on my left and on my right. I hope you will learn a lot from this session today. And the very first question which was asked by Sir, that what is the first basic need of the startup? I think the first basic need of the startup to build an ecosystem for startup is the formula for 3 C's. And the 3 C's is, the first C is the courage, the second C is the capital, and the third C is the connectivity and connections. And also the vision of the government, which is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. So actually, startup is the journey of the India's youth's enthusiasm and energy. And by now we have seen that just from 2015, when the Honorable Prime Minister launched the Startup India National Plan, and we were only, I think, 50 to 100 startups, and now we are more than 50,000. And also the initiatives of the government, which are such as providing the much more financial assistance, much more employability, and tax exemptions up to 7 years, from 3 years. And especially I'll just give one message to all the youth sitting in this auditorium, that do not go for jobs, because a country who has a youth population of more than 65%, जिस देश की 65% आबादी 32 वर्ष के नीचे हो, उसे रोजगार की जरूरत नहीं. अगर नारायण मूर्ति रोजगार तलाशते तो नारायण मूर्ति नहीं बन पाते. I'd just like to say, वो अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है, वो अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है, हौसला हो तो दरिया पार भी कर सकता है. और ये हुकूमत है, इमदाद भी कर सकती है, ये हुकूमत है, इमदाद भी कर सकती है, पर तू कलंदर है, इनकार भी कर सकता है. So, Startup India is a very new concept which has been developed, and I think now the further panelists will much more guide and lighten us on this issue. Thank you so much. Thank you so much, Ishanji. It's a wonderful, and I loved it when you said that don't go for jobs. A live example sitting here in front of me, myself. It was year 2005. I was last day of my university in Australia. I got offered a PR to Australia and a 60 lakhs package. Guys, life sorted, right? That on one hand you have a PR to Australia, and on the second hand you have a package of 60 lakhs. I rejected both the things because I always wanted to be an entrepreneur, came back to India, and as of now I'm running 9 startups, all self-funded in 65 countries. Thank you so much. So I'm totally in sync with you, Ishanji, and it's people like you who are an inspiration, and we can create value. And when it comes to inspiration, we have Mr. Gaurav Gupta, right sitting next to Ishanji, who is running a magnanimous show. I don't know how many companies he owns. I don't know how many places he is at. Certain times I see his Facebook. At the same time, he's at multiple places. So I really need to know what kind of power you have, that at the same time we see you at 10 places. And what kind of, you are running so many companies, so what kind of advice you would give to someone who want to set up his own new company? Thank you, Manish ji. You are asking my secret, that is the power of love. First of all, I would like to thank the organizers, the Sharda University, Gupta ji and his team, and Jitendra Sharma ji and Vani ji and all the group from MIIF and other organizations who are the part of this great startup initiative. Who has thought Facebook, Google, Ola, Uber, they were all startups. एक छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी. अभी माई को पैनलिस्ट हैज सेड 3 C's, बट उसमें मैं ऐड करूँगा पैशन चाहिए. यू नीड अ पैशन टू डू एनीथिंग. कोई चीज़, कोई बिजनेस छोटा या कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता. इफ़ यू हैव पैशन, यू हैव करेज, यू कैन डू एनी वंडर्स. स्टार्टअप के लिए जो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का विज़न आया है, और जो पूरा ग्लोब आज, आपके पास पैसा है या नहीं है, पैसा भी कैपिटल इसमें है, लेकिन कैपिटल अगर आपके पास नहीं है, यू विल गेट, योर आइडिया इज़ ग्रेट, यू विल गेट फंड बाय एनी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी. गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो उसको भी आपको सारी सपोर्ट मिलेगी. तो मेन थिंग इज़ अ पैशन एंड अ करेज टू डू एनी गुड थिंग. मनीष जी. Thank you so much. Hearing the words of wisdom right from Gaurav Gupta ji, this is commendable. Trust me, you can browse him and you will see
how in a single day, I believe he has multiple powers to command his day, and I sometimes feel he is doing a work of 5 days in just one day. So he's an inspiration. Thank you, Gauravji. Thank you. Now, right next to Gauravji is Chadda Saab. And guys, trust me, you also need to Google him, and you need to know the kind of work he's doing, and he's spreading it across the world. It's not a work, it's a movement in itself. So I would really love to know, Chadda Saab, how you have converted your work into a movement, and what are the secrets that are required from converting a startup into a glorious journey? Thank you, Manish ji. Thank you, Jitendra ji. Thank you, Sharda University, and thank you to all the wonderful audience. Because without audience, ये conclave possible नहीं है. हम लोग बोलेंगे किसके लिए अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो. और साथ में मैं अपने पैनलिस्ट को भी धन्यवाद करूँगा कि हम लोग यहाँ बैठ के इतना अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. जैसे गौरव जी ने कहा, मेरे साथ में पैनलिस्ट ने कहा 3 C's और पैशन. बिना पैशन के आप कोई भी काम आप नहीं कर सकते. सो टू अचीव वॉट एवर यू आर डूइंग, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहें, वो कहते हैं ना, कहावत है, जो काम करते हुए, जो पैशन से काम करते हुए अगर आपको नींद नहीं आती, सो वही आपको पैशन है. तो चाहे आपका किसी में भी, मैं सारे बच्चों को यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपको फिल्म मेकिंग पसंद है, आपको एक्टिंग पसंद है, आपको पढ़ाई करना पसंद है, आपको कोई भी फील्ड में जाना पसंद है, उसको अगर आप पैशन से करें, और अगर आपको उस चीज़ में नींद नहीं आती, जैसे जनरली हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हमारे को नींद आ जाती है. सो डू वॉट एवर यू लाइक टू डू इट विथ पैशन, और उस पैशन को आप एंटरप्रेन्योर बन के अपनी इनकम में कन्वर्ट करो. और मुनीश जी ने पूछा था कि मैं कैसे कर रहा हूँ. सो आई स्टार्टेड वेरी अर्ली इन माई एज. मैं 14-15 साल की उम्र में मैंने बिजनेस शुरू किया. लाइफ में 10-15 साल अपने आप को सेटल किया, लोगों को बहुत सारे स्टार्टअप्स को सेटल किया. स्टार्टअप्स तो आज शुरू हुए हैं. सो हम लोग तो 1995-96 से वी आर डूइंग स्टार्टअप्स. सो स्टार्टअप को सेटल किया, आज अपने आप को लाइफ में ऐसे सेटल किया. सो नाउ वी आर डूइंग ट्राइंग टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, सोसाइटी. वी मोटिवेट पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अगर आप बनोगे तो आप 100 लोगों को के घर में रोटी दे सकते हो. अगर आप खुद नौकरी पाओगे तो आप अपने और अपने परिवार का ही पेट पाल सकोगे. सो जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए. अगर आज हम लोग इंडिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन भी अगर स्टार्टअप्स की तरफ चली जाएगी तो बाकी 95% ऑटोमेटिक उनका पेट भर जाएगा. सो वी मस्ट डू वर्क. अपने लिए तो सारी दुनिया करती है, सो वी हैव टू वर्क फॉर द कम्युनिटी. सो यही एक विजन है. अगर आप व्हेन यू वांट टू सर्व योर कम्युनिटी, यू कैन डू वंडर्स, एंड तब आपको कभी भी थकान नहीं होएगी और आप अनलिमिटेडली काम कर सकोगे. सो मेरे जितने भी जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबसे पहले अपनी और अपनी फैमिली के लिए काम करो. व्हेन आपको जब लगे कि मैं सेटल हो गया हूँ, मेरे पास अच्छी इनकम आनी शुरू हो रही है, देन स्टार्ट वर्किंग फॉर योर कम्युनिटी. आपने बैठना नहीं है कि नहीं जी अब मेरे पास इनकम आ रही है तो मैंने मौज करनी है. जब आप सेटल हो जाओ तो स्टार्ट वर्किंग फॉर योर कम्युनिटी, तभी ये कंट्री और ये सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बन सकेगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Wow, that's Parmeet Chadda ji sharing his golden nuggets. And Chadda Saab, I can very much correlate with you because I was 14 when I started working. From there on, building the empire to 9 companies that happened like this. I learned early on during my graduation that if in a span of 3 years you can earn a graduate's degree, why cannot you launch a new company every 3 years? And this is what we are doing, like launching a new company right from the scratch. And in that company, you are the peon, you are the clerk, you are the CEO, you are the marketing guy, and making it big by yourself. And this is what human beings like Chadda Saab, who set an example and set the bar high, when he's saying that a true leader is the one who create other leaders. This is what is much required at the top level, the leaders who are sitting, and this is my urge to them, that make sure you pass on your legacy and create more leaders around you. And when we are talking about leaders, I have another wonderful leader, author Sherry, sitting right on the right side of me. He's a communication coach as well. So when we're talking about all these about startups, how to have a glorious journey, leaders and all, what do you feel, author Sherry, how important is the role of communication in that?
Thank you, Dr. Manish, my brother from another mother. We already known each other for some time. Thank you very much. What an honor to be with you, sharing the stage with such an eminent panel of panelists and honorary guests. I would like to thank the entire management of Sharda University, all the Shardans. Good morning. And the entire management, because they have taken this meaningful proposition, tying up with the India Innovative Startup Association, and all thanks and credit to Jitenderji, who's doing fabulous work, such sparkling work. And right from the start go, when I walked into this entire building, such positive aura and reinforcement. I'll be talking about some statistics and frameworks today, ladies and gentlemen, as Manish has just spoken about communication. I want you to look at certain frameworks today. Firstly, I want to bring some statistics for you. Every day in India, 70,000 kids are born, and each day 4 startups are born as well. Less a number, but quite good. And from startup itself, 65,000 to 1 lakh jobs are created every year in today's time. And we are, I can proudly say this, and as an Indian, we are the 3rd largest startup ecosystem globally right now. And as Honorable Dr. Kisan has also mentioned, that we are producing every year 50 to 60 different startups who are touching heights, bringing funds to our country. Now friends, when we talk about creating a startup, Pawan has rightly mentioned about the 3 C's. Dr. Gaurav Gupta has also very kindly mentioned about the power of passion. And I really resonate with what Dr. Parmeet Singh Chadda said, to build up a community for the fellow entrepreneurs. And I also like the fact that 65% of the population in India is youth. So friends, communication, pitch deck. Pitch deck is an important aspect. Today we are expecting some Shark Tanks. Jitendra shared with me that some Shark Tanks are also coming who are pitching their business. And imagine if you will go to Shark Tank. Just imagine. You're having your pitch deck ready. So what is pitch deck? Pitch deck is when you present your idea graphically, virtually, or you are presenting your idea physically with some statistics, and you know what problem you have solved for the country, for the community, for the people. That's pitch deck. That's what makes you eligible for a pitch deck. And in order to have a pitch deck with you, you need to have the right set of communication. So I'm going to present 6 frameworks today from all the popular startups which you have heard. Number 1 is Airbnb. The framework which Airbnb followed when they did their pitch deck was rule of 3. They spoke about hotels, they spoke about customers, they spoke about prices. So rule of 3, be specific, because specific is terrific. The second framework which I want to mention is about Facebook. They leverage their testimonials of customers. So leveraging your testimonies is an art in business. The third framework which I would like to share with you is of Dropbox. How they have shared the competitive analysis of features and benefits using the sync feature, the interface, the web analysis, so beautifully done. So how you present the features and benefits is an art. That's a framework. Fourth is very popular. Tinder. Some of the people are smiling. It's all about love, isn't it? Tinder. Now, interestingly, this app, they have launched one slide where they says, Matt is in a party hall. Matt is in a party hall. He wants to meet a girl, but he does not know how to approach that girl. Storytelling, that's the framework they have followed. The fifth is Sequoia Capital, a very popular venture capitalist company in the world. Sequoia Capital interestingly followed a framework of structure, which is not limited to the company, the entire objective of the company, the analysis, the statistics. So their framework was structure. And last but not the least, it's about the Open Door, which is a hybrid real estate platform, which talks about the power of management. So in the first slide, when they did their pitch deck, they were speaking about their management. Who is and who of the world is on the management.
So these are the 6 frameworks I want to share with all of you. Now, being a startup, there's an important statistics related to communication. According to a recent GPAT survey, oral communication is the #1 skill right now. The second is listening skill, and the third is writing skill. So my dear friends, to wrap up my message, I would like to take another example of insurance, the insurance Shark Tank, if you remember. They're also coming here. So they also follow the rule of 3. They spoke about #1, the mis-selling part, the second, the claim settlement, and the third, customer service. So in India also, startups are following the right pitch decks, they are following the right set of communication. You see, creating a pitch deck is very easy, but it's not simple to follow it and present effectively, and that's where you need somebody to help you. And all I have to say is, learn the art of communication. People don't do things different. People don't do different things, they do things differently. Thank you. Wow. Wonderful, wonderful. What a beautiful message you have closed it with. I will complete it with like this, that extraordinary people, they do things differently. This is how we do it, and that is what Mr. Jitendra, he's another extraordinary human being who has done it possible with IISA, and that he has collaborated all of us under one roof. And when you were talking about the Shark Tanks, how many of you have ever thought, rather than going to a Shark Tank, being the Shark Tank? Rather than going and approaching a shark, being the shark yourself. That is what we have done at the MentorX. We have a real world Shark Tank whereby you can come, pitch your startup, you need funding, you need incubation, you need bootstrapping, that's the one side. On the other side is whereby I urge people like Gaurav Gupta ji, Chadha Saab, Author Sherry, Shantanu ji, Priyanka ma'am, Ishan ji, if you want to be on the part of whereby you can be the jury, you the angel investors, or Jitendra ji, all of you are most welcome. So what we are doing is we have created this ecosystem that we have dedicated to all the 8 billion people, and we are just hand holding both the sides. So thank you, Author Sherry, for this wonderful message. Now my focus shifts to this wonderful human being, Dr. Shantanu Das. He is from Shashadripuram group of institutes from Yelahanka, Bangalore. He's a walking scientist. Yes, we are privileged that he's among us. He's working on clean tech, green energy, biotechnology. So I have a very simple query kind of a thing. How important or how wonderfully you think clean tech or green energy or biotechnology can lead us towards a holistic life in the world of technology, AI and robotics? Yes, Dr. Munish, I am privileged enough to be one of the panelists here. And I am from a 92-year-old organization. And in Bangalore or all over world, we could see that today in India is going for zero plastics. So this concept was long back conceived, but we were not trying to follow. And if we go to Asia's neighbor, India had plastics. We are just spending crores of money just disposing the plastics or garbages from our house. And in Hindi we just tell, hamari kachre just bahar feko. Baki sarkar ki hai aur baki padosan ki hai, headache wo kya kare. But we are not really coming out the solution. So if I go back to just 8 years, from 50 to 5,300 startups, 80 billions in 8 years, and it has reached whatever biotech sector you take, either it is biodiesel, either it is biopesticides, it's organic or biomedicines, and COVID has come to us telling that we have to go back to our roots to find lives. And I'm proud enough that I'm from a life science background, and we nurture life in either machine through form of biodiesel, and I think few of our panelists will speak later on about green energy. And the project what we are working is solving entire bio-waste problems which we come across for every occasions. Either take it as a banana leaves or the fruits or flowers or vegetables. And today in the Rath Yatra you could see by evening Puri or entire Odisha how much garbages will be dumped aside. But where it goes to the landfills. And Delhi, we know recently there was a big fire in the landfills. How to resolve this issue which has been man-made, or we have created it. For that we have a solutions, but the solutions we have going for a patent, and it is already in the PMO's office and MHRD ministry.
It's very simple. It's there in the nature. It's in the Western Ghats. It's in the mountains. We see that we have to learn from animals that never they waste or never they create nuisance regarding to polluting the environment. It's we who pollute. And the solutions is from the microorganisms, solutions is from the fungus, solution is from the bacteria, which has been giving us the solutions from age old. To tell a fact about the Gulf War, I could see that Indian scientist who has from Bacillus Pseudomonas putida found out the superbug which was used to remove the oil spills in the Gulf War. But ironically, it was an artificial one, so it goes deep into the sea and was looking for the hydrocarbon. It was stopped in between, but there are certain noble situations or noble concepts, which even one of my students who was invented recently in, that is called Milan Labs, that is remdesivir drug, which has been production cost is 200 rupees, but it has been sold, I need not to tell you how much price we have been selling, and many people died of lack of remdesivir. So biotech has a wide opportunity, and a classical example I can give you, the lady entrepreneur Bangalore, Kiran Majumdar Shaw, who has started her vaccine production from a garage, and now she is a world topmost pioneer in biotech. And in Bangalore, always you people are welcome to have a collaboration, and tie-up and MentorX is there. So we can do wonders, and we correctly say that let us not look for jobs, let us create jobs for the people or the youngsters, nurture their ideas, give concepts. They are young birds have concepts. Only thing is that we have to fuel that ideas. We always subside their ideas. No, ye sahi nahi hai, ye galat hai, you can't do this. Always there is a negative approach. And with RevUp and MentorX, we learn that positivity. If we feel the positivity, definitely we can do wonders here. Wonderful, wonderful. Thank you, our walking scientist, Dr. Shantanu Das, for this wonderful insights. And when you mentioned this pollution, this world is created by us. Now we again working towards removing it. So the very first step is let's not make it happen. Let's not pollute this world. This belongs to us. And that is what we are undertaking through Hover Robotics as well. That is my another startup. We are into e-mobility. I'm the pioneer of e-mobility in India. We brought the concepts of hoverboards, Autobots, mobility robots to India. And that is towards that why should we have our dependence upon petrol or diesel, and then we're creating the pollution. Same way as this wonderful human being, he's into clean tech and green energy and biotechnology. We're totally in sync. That is why we have a center of excellence at their institute, that we are into, that we should be having a holistic lifestyle, and we should be handing over this world to the next generation in the shape we got it, or even in a better form. So thank you so much for being with us. And now, wonderful, beautiful, smiling Priyanka ji, she is into youth empowerment and working at a grassroots level. So how beautiful or how easy or how difficult it is to work right at the grassroots level, and how to take it up the line, and because that youth that you're working with, they are the future of the nation. Thank you so much, Manish, and thank you to all dignitaries present here. I think all of my wonderful panelists have already given deep insight, but what I'm working is at the grassroots level when I say, so that means the people who are yet to explore their career and leadership. Well, working with youth is most satisfying because you could really mold them into what you want to become. They have no limitations, and they have brilliant ideas. They have the voices which can really navigate the world. And here, tomorrow, they will be the biggest startups for sure. Now, when we talk about startups, when we talk about youth leaders, they are the one who would explore, because there is no tension, there is no limit, no restriction on trying their horizon. The more we grow, we actually become very restricted about experimenting stuff. And that's what gives me a lot of more energy and zeal and enthusiasm to work with the young entrepreneurs, I would say, or the young leaders. Thank you so much. Wow, thank you, Priyanka ji. And when she's talking about experimenting, that is life. Trust me, in your life, never ever stop experimenting. You know, you never know how things will happen for you. I keep on doing this, and I don't know when 9 companies happen to me and 10th is on the way. So she is the right example and a wonderful inspiration to us. Thank you, Priyanka ji. Now,
I can see there is a paucity of time as we already started late. So taking care of Jitendra ji and the Sharda University, I would quickly like to wind up this panel with the last quick question, whereby I would request my panelists just to answer in 30 seconds, quickly, one by one. See, they have only trying to switch off my mic itself. That okay, from the author Sherry itself, just 30 seconds, author Sherry. But I would like to share one more thing here. Yes, author I Sherry, recently visited PM House as a corporate delegate on behalf of Sikh community. I also happened to get a chance to be a part of National Skill Education Promotion Council organized by ASSOCHAM. I'm also officially appointed right now as Vice Chairperson for ASSOCHAM in India for Skill Council. So the discussion which was happening with Mr. Mami Dala, who is the UDC chairman presently, is how we can bring the revolution in India, Munish. And the three things which he has touched upon, and I'm really glad that you have working with Mentor Access. Number one is entrepreneurship. These are the three skills we were talking about. The second thing was technology, and third thing which I am here for, that's communication. Public speaking is the number one skill which you have to learn, because you all are students of media, art, and journalism, and you got to learn this fine art of memorizing your talk, presenting yourself, using your body language, voice modulation. These are such eccentric and important, imperative skills for all of you to learn. So this is just an industry update for you, my dear friends. I know you are just enjoying yourself back out there. You are enjoying our talks, but let me tell you, these three skills are very important. I repeat, entrepreneurship, second, technology, and third, communication. Over to you. Thank you so much, author Sherry, for these deep insights, and when you're telling us about how you are making things possible. Use your mic. Wow. See, this is the power of sharing and the coordinating. So this is how beautifully, and if you feel we could be of any help, we are directly working with PMO, with our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, whereby we are working towards that India is going to be a global problem-solving machine by 2030, and we're working on a multiple initiatives with him, and with the another governments as well. We're working directly with Government of Mauritius and Government of Australia, and we have so many patents in Germany, in Australia, and India, as well as Mauritius. So if you think our organization at MentorX could be of any help for any of you, it's a global call I'm making today. You feel if we could be of any help, we are always there for you. So quickly, I'm gonna ask one by one my fellow panelists that if they can quickly give a message right from Priyanka ji. The 30 seconds, what's your message for the youth? All right. Never. No, I think it's working. Never underestimate. So it's 30 seconds, the 10 seconds is wasted replacing mic, I'm so sorry. Never underestimate the power of networking. Your network is your net worth. Wherever you go, create opportunities, open collaborations. Thank you. Always follow your passion. It will reach the heights and it will give the potential to work for. We both are done. So I'll say in 10 seconds only, think big, start small, and keep going. So persistence is the key to success. Whatever you do, just keep doing. Thank you. Thank you. I would like to add, EPC is Export Promotion Council. So Mr. Jitendra ji and Sharda University, I got a call yesterday only. They are offering the skill sector, export skill sector training for the startups. So we can arrange a workshop here. So let me know so that we can connect with you. Thank you. And in the starting of my speech, I just mentioned about 3 C's, which was the connectivity, courage, and the capital. And by ending, I would like to end by 3 P's, which is required for any successful venture or career or business, which is the patience, perseverance, and presentation. So just believe in yourself, do not think anything else. Thank you so much. Wow, from 3 C's to the 3 P's, and these all wonderful panelists on board. I'm so glad. Thank you, Mr. Ishan. Thank you, Gaurav Gupta ji, Parmeet Singh Chadha ji, author Sherry ji, Dr. Shantanu Das, and Priyanka Bahal ji. And this concludes the session. And I'm so glad that Gaurav Gupta ji, you're offering your unconditional support for Sharda University and Jitendra ji. And if you feel pleased, we already have our Center of Excellence as well in AI and robotics, as well as into entrepreneurship and innovation. Anywhere we could be of any help,
We are wonderfully here for all of you. Thank you. And I believe whether it's all the panelists, whether it's Ishan ji or Gaurav ji or Chadda ji, author Sherry, Dr. Shantanu, Priyanka ji, all our unconditional support is always there, and I'm watching on their behalf. Thank you so much. So a huge round of applause for all these star-studded panel. Thank you. Much appreciated. And thank you, Jitendra ji and Sharda University, for making it possible. Thank you so much. We would like to thank our very dear honorable guest and the host for this entire show, Ms. Dr. Monish Jindal, for hosting the show with so much of energy and positivity. Thank you very much, Dr. Monish. हेलो, ये सेशन वाकई बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला कि किस तरीके से अगर कोई एक स्टार्टअप है किस तरीके से हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं। चड्डा साहब को मैं सुन रहा था तो बात का जो एक निष्कर्ष मैं निकालूं, धैर्य की बात आपने जो की, आपने कहा कि ये जो स्टार्टअप की बातें हैं आज के समय में हमें सुनने को मिल रही हैं, अदरवाइज़ तो हम अपने बुजुर्गों को देखें काफ़ी समय से यही काम करते हुए आ रहे हैं। आज का समय मेक इन इंडिया का समय, आत्मनिर्भर भारत का समय, साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल का समय। तो कहने का आशय यही है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, उस आइडिया को अगर आप लेकर चल रहे हैं और अच्छी सोच है, धैर्य है और जब मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो मंजिल हमें मिलती ज़रूर है। सो फाइनली अब मैं इन सभी अतिथियों को सम्मानित करने के लिए मिस्टर जितेंद्र आपको इनवाइट करना चाहूँगा। मिस्टर जितेंद्र, डॉक्टर एस कुमार कृष्णा सर, वाणी मैम एंड डीन मैम, प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। और इसके बाद फाइनली जिस घड़ी का हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, आप लाइफ में गुदगुदाना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, ज़िंदगी में टेंशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई चाहता है कि एक छोटी सी मुस्कुराहट अगर हम अपने चेहरे पर ला सकें और मेरी वजह से किसी के चेहरे पर आ जाए तो निश्चित तौर पर हमारा दिन बन जाता है। यानी कि आज है जोक डे, तो सबसे पहले आप सभी को जोक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जोक डे, वर्ल्ड जोक डे, यस, होमवर्क कर कर आया था मैम थोड़ा थोड़ा। और जिस तरीके से मुझे अभी मिस्टर दीपक के ज़रिए पता चला कि जिस तरीके से हमारा ये रेडियो पार्टनर है, सुनो शारदा तो है ही ऑब्वियस, बिग एफएम से बहुत जल्द हमारे बीच में होने वाले हैं खुर्राफाती नितिन को आप सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, राइट? आवाज़ नहीं आ रही मुझे, मैं समझ सकता हूँ। यस प्लीज, अवार्ड मैं बोलता हूँ, प्लीज प्लीज। आगे से फ्रेम। एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आ रहा है। शायर खुद ही कहते हैं कि कौन कहता है, और वो शायर हैं दुष्यंत कुमार, कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। जितेंद्र जी, ये सभी के लिए है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो यारों तबीयत से उछालो, एक पत्थर तो यारों तबीयत से उछालो। तालियां आप बजा सकते हैं प्लीज मेरे लिए भी, थैंक यू। आपको भी भूख लगी है, मुझे भी लगी है। अच्छा, मुझे लगा कि आशीष सर भी कह रहे हैं कि मुझे भी लगी। ये मुस्कुराते चेहरे वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब मुस्कुराते रहें, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में टेंशन बहुत ज्यादा हैं। हाँ, एक साथ पकड़ा दीजिए प्लीज प्लीज, आइए जल्दी, क्योंकि समय का अभाव है। सर ने कहा ट्रॉफी और फ्रेम स्टिकर आइए जल्दी। सो भूपी हमारे बीच में हैं और आगरा से आए हुए हैं हमारे एक छोटे से बुलावे पर। इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, ये हम इनसे सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। इस अवार्ड सेरेमनी के बाद मैं बैठा दूं सर, प्लीज टेक योर सीट्स। आप लोग बैठिए सर, आप लोग बैठे सर। मिस्टर त्रिपाठी सर,
यहाँ पर कौन है? मिस्टर ईशान, चलिए प्लीज आप। हेलो हेलो हेलो। एक मोमेंटो स्मृति चिन्ह ब्लैक। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप लोग अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे बीच में बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लेकर आए मिस्टर भूपी फ्रॉम यूपी। उनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं इस छोटे से अवार्ड समारोह के बाद। मुझे भी उनको सुनने के लिए यूँ कहें कि बड़ी बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा हूं। आप लोग प्लीज़ आ जाइए। डॉक्टर शांतनु दास को सम्मानित कर रहे हैं मिफ के चेयरमैन मिस्टर जितेंद्र एंड वाणी। डॉक्टर शांतनु दास। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। Now I invite Dr. Parmeet Singh Chadda sir. Now I invite Mr. Gaurav Gupta. Gaurav Gupta sir. Now next is Mr. Author Sherry.
Next is Ms. Priyanka Bahel. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीनो हजरात, जिस घड़ी का हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम सब इंतजार कर रहे हैं बूबी फ्रॉम यूपी का, जिनसे हम प्यार, इश्क, मोहब्बत समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और यहां मुझे वो खूबसूरत शेर याद आ रहा है। थैंक यू, शाबाश बेटे। ये इश्क नहीं आसान, आने दो, वेरी गुड। कहां छुपे थे तुम? ये इश्क नहीं है आसा, इतना समझ लीजिए। आप कुछ कहेंगे? अच्छा, ये इश्क नहीं है आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहता हूं बूबी फ्रॉम यूपी का। वेलकम बूबी। शारदे माँ को नमन करता हूँ और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। गगन ने मुझे इतने प्यार से आप सबके सामने बुलाया, इतनी देर से इतनी अच्छी एंकरिंग होस्ट कर रहे हैं, भगवान की आत्मा को शांति दे। Before I start up with my torturing classes and lengthy poems, I would like to thank Sharda University, Shri Y.K. Gupta sir, Dr. Sood ma'am, and Jiten ji, Mr. Jiten ji. अभी आपने देखा पैनलिस्ट आए थे और कितनी अच्छी अच्छी बातें करके गए हैं। ये सब सोचने की बातें हैं और सोचने में कुछ नहीं लगता। कल गगन मेरे पास आए, धन्यवाद। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुर्सियों पे गमले रखे हुए हैं। थोड़े से हिलते रहें, तालियां वालियां बजाएं, मेरा स्वागत खुद ही कर दीजिए। उसके बाद मैं जरा सा मूड में आ जाऊं तो आपको हंसाने की कोशिश करूं। तो गगन मेरे पास आए, कह रहे मैं बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट लेने की सोच रहा हूं, कितने पैसे लगेंगे? मैं बोला एक भी नहीं। बोले क्यों? मैं बोला 10 बार तो मैं सोच चुका। तो सोचने में कुछ नहीं लगता। तो आइसा जो है, आइसा इसलिए है कि ये करने के लिए है, करने में बहुत कुछ लगता है। जो कर लेता है वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। मेरे टाइम पे व्यवधान आते रहते हैं। मेरी शादी 2008 में तय हो गई थी, हुई 2011 में है। व्यवधान आते रहते हैं। अच्छा, जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी सासू माँ मुझे फ़ोन करती थी कि बेटा कुछ दिनों के लिए बेटी को यहाँ छोड़ दो, कुछ तो मन लगे। अब शादी के इतने दिनों बाद मैं फ़ोन करता हूँ, कुछ दिनों के लिए ले जाओ, कुछ तो मन लगे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक प्रोग्राम में हमारा आगरा का बंदा चला गया, इतना मोटिवेट हो गया, घर जाके अपनी वाइफ को 500 रुपये दिए। बोला लो 500 रुपये रख लो। उन्होंने पूछा जी आप ये किस चीज़ के पैसे लाए हो? क्या कुछ नहीं, आज मैंने शर्त लगाई थी, मैं जीत गया, उसके पैसे हैं। उसकी वाइफ ने पूछा भाई ये किस चीज़ की शर्त है, किससे लगाई थी? बोला यार मैंने शमसू से शर्त लगाई थी। शमसू कह रहा था बकरी की 4 टांग होती हैं, मैं बोला 3 होती है, मैं जीत गया, लो 500 रुपये। बोली ना जी, शर्त तो आप गलत जीते हो, बकरी की टांग तो 4 ही होती हैं। बोला यार मैं शर्त जीत के लाया हूँ, ये ले 500 रुपये, 3 होती हैं। बोली नहीं जी, बकरी की टांग तो 4 ही होती हैं। बोला यार तुम मेरी बीवी है क्या शमसू की?
बोल नहीं जी बीवी तो मैं आपकी हूं, पर बकरी की टांग तो 4 ही होती है। बहुत देर तक समझाई, जब वो नहीं मानी तो बगल में रखी हॉकी उठाई और उनकी पिटाई शुरू कर दी। जब आधे घंटे तक उनकी पिटाई करी तो वो रोते रोते बोली, जी मैं मान गई, बकरी की 3 ही टांग होती हैं। बोला शमसू भी यूं ही माना था। तो ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा, आगरा के लोग हैं बड़े, वो अभी कल बारिश आ रही थी, मुझे हल्की सी सर्दी सी लगी, मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं डॉक्टर साहब थोड़ी सी ठंड लग रही है, भीग गया हूँ और कोल्ड हो गया है, दवा दे दो, कितने पैसे लोगे? बोला 500 रुपये। मैं यार सही से लगा ले, 100 रुपये में तो क्वार्टर ही आ रहा है। तो ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा, एक आगरा का बंदा अपने घर गया तो शराब पी के गया था, हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी को सेवन नहीं करना चाहिए। वो घर चला गया तो उसके पापा ने उससे कुछ नहीं कही, जाके सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसकी मम्मी उसके पापा को डांट रही हैं, जी तुमने तो बच्चे बिगाड़ दिए, कुछ नहीं करते, तुमने सर पे चढ़ा लिए हैं, कितने बिगड़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। पापा बोले, अरे हो क्या गया, बात क्या है? कि कुछ नहीं, तुम्हें नहीं पता वो कल कितनी पी के आया था, कितना लड़खड़ा रहा था, कितना नशे में था, कितना हिल रहा था, और आपने उससे कुछ भी नहीं कही। तो वो बोले, अच्छा तो वो हिल रहा था। कह रहा यार 2 पैक तो मैंने भी लगाया, अगला तो सही है, मैं ही जा रहा हूँ चांद पे। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। अच्छा, आगरा के बच्चे, मेरा भतीजा मेरे पास आया एक दिन, किसी ने मुझे धमकी दी कि मार मार के तेरा भूत बना देंगे। तो मेरा भतीजा मेरे पास आया, बोला चाचा एक आइडिया है। मैं बोला बेटा क्या? कि चाचा जब वो आपको मारेंगे ना तो आप उनसे कुछ मत कहना। मैं क्यों? बोला जब मार मार के वो आपका भूत बना देंगे ना। मैं हाँ। कह रहा तब हम उन्हें डराएंगे। बताओ, बच्चों से कर लो बात। अच्छा, वो स्कूल में चला गया, अभी 2-2.5 महीने पहले होली गुजरी है, तो उससे टीचर ने बोल दिया कि भाई होली पे निबंध लिखो। तो जो हमारे जो ब्रज के बच्चे हैं वो चीजों को प्रैक्टिकल में ज्यादा भरोसा रखते हैं रेदर देन कि उसको लिख के बताएं। तो उसने क्या निबंध सुनाया होली का टीचर को, वो मैं आपको सुनाता हूँ। टीचर ने बोला होली पे निबंध सुनाओ। तो टीचर को होली पे निबंध सुना रहा है, जो आगरा के बच्चे हैं, जो देखते हैं वही करते हैं ब्रज के बच्चे। बोला होली का त्योहार मथुरा से आरंभ हुआ है। आगरा के अत्यंत निकट होने के कारण कुछ लोग इसे पागलपन का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आधा दिन तो चला जाता है रंग लगाने में और बाकी का दिन उसे छुड़ाने में। होली के दिन हम सब दोस्त मिलकर दारू पीते हैं। इस दिन हम ब्रांडों पे गौर नहीं करते हैं, जो मिल जाती है उसी को सुड़क जाते हैं। होली नशे का त्योहार है। कुछ लोग इस त्योहार को रोज मनाते हैं। इस दिन हम एक दूसरे पे कीचड़ फेंकते हैं और टांग खींचते हैं। वैसे ये नेताओं का पसंदीदा खेल है जो साल भर संसद भवन में खेला जाता है। थैंक यू सो मच। तो ये चीजें होती रहती हैं। मैं देख रहा हूँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, तो उनके लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं हम आज़ाद हो गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक शेर है, खासकर बेटियों के लिए एक मशवरा भी है। कल खा जाएंगे तेरा आज खा जाएंगे, कल खा जाएंगे तेरा आज खा जाएंगे, सपनों के सुहाने सभी साज खा जाएंगे। चिड़िया बिटिया तू कमसिन है, अभी पिंजरा ना तोड़, बाहर निकल गई तो तुझे बाज खा जाएंगे, बाहर निकल गई तो तुझे बाज खा जाएंगे। एक मशवरा लड़कों के लिए भी दे दूं कि अपने हाथ, इधर से आवाज आनी बंद होगी, थोड़ी सी बीच बीच में ताली करते रहें तो मुझे हौसला मिलता रहेगा। मैं थोड़ा सा नर्वस हूं ऐसे बड़े लोगों में। अब लड़कों के लिए मशवरा है कि अपने हाथों से ही अपना दिल खुरचना चाहता है, अपने हाथों से ही अपना दिल खुरचना चाहता है, पत्थरों पे सर पटकना चाहता है। दौलत शोहरत कामयाबी सब कुछ तो है, भाग जा क्यों इश्क में उतरना चाहता है, भाग जा क्यों इश्क में उतरना चाहता है। तो मुझे तो आप देख रहे, ऐसा इश्क में 2 चीजें होती हैं, जैसे गगन ने बताया, मुड़ मुड़ के देखना, उनका दोनों पे क्या असर पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा।
कि तुम्हें क्या जुल्फ सवारी, दुपट्टा लहराया और हो गया मुड़ मुड़ के देखना तेरा। तुम्हें क्या जुल्फ सवारी, दुपट्टा लहराया और हो गया मुड़ मुड़ के देखना तेरा। अरे कितनी नब्ज दबानी पड़ती हैं, हमसे पूछ क्या है मुड़ मुड़ के देखना तेरा। थैंक यू सो मच। तो ये चीजें तो हमारे साथ बहुत बहुत होती रहती हैं, आगरा में, मथुरा में। अभी बात चल रही थी मथुरा की, मथुरा में जमुना जी है, वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, ठाकुर जी की बात चल रही थी, तो वहाँ पे स्नान करते हैं। तो कुछ लोग गाँव से गाड़ियाँ भर भर के स्नान करने के लिए जाते, तो एक स्नान में गए, जो भी डुबकी लगाए वही बोले जय जमुना मैया की, डुबकी लगाए जय जमुना मैया की। अब एक आदमी अंदर नहीं गया, मैंने पूछा भाई तुम क्यों नहीं जा रहे, बोला मेरी बीवी का नाम जमुना है। अब वो कैसे बोले, फिर भी वो चला गया अगला, उनने डुबकी मारी, बोला जय जमुना, और जो तू है सो तो है ही। थैंक यू गाइस, इट्स माय टाइम। जोरदार तालियां हो जाएं भूपी के लिए, वाकई बहुत अच्छा भूपी, थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच में मिस्टर कपिल खंडेलवाल सर हैं, जो कि स्पेशल गेस्ट है और गिफ्ट पार्टनर्स भी हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर, जोरदार तालियां। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर जितेंद्र एंड वाणी। जितेंद्र एंड वाणी, आप कॉल करेंगे जितेंद्र को प्लीज़। आपको देखकर सर दो लाइनें याद आ रही हैं, क्योंकि आपका सहयोग मिला है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था भूपी जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये सच बात है कि एक दूसरे के सहयोग से आज ये इवेंट इतना बड़ा हो पा रहा है, तो ये होना वाकई बहुत ज़रूरी है। मिस्टर जितेंद्र आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ, और साथ ही साथ अमित सहगल सर आप भी। खंडेलवाल सर, जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे खंडेलवाल सर का, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So Jitendra sir, so can we move on? Second panelist. इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच हैं हमारी SMFE की स्टूडेंट को एंकर मिस पलक। पलक आइए, थैंक यू। Thank you, sir. We are glad to invite our second panelist, moderated by Dr. Nancy Juneja ma'am, co-founder, Mentor X, CEO of Level Up, Life Skills and International Mentor. Kanika Chawla ma'am, founder, director and mentor of the Popsicles. Arushi Chug ma'am, she is currently working on a technology that enables to an engineer an inner transformation for self-empowerment, personal growth. Rahul Gandhi sir, founder Options Design in Asia's top 5 ad agency. Dr. Manisha Gupta ma'am, director Semco Solution India Private Limited. Munish Jinder sir, founder of CEO and Hover Robotics. Ayana Gupta sir, ma'am, founder and managing director of Mmiff. Welcome all the respected panelists on the stage, sir and ma'am. Please come on the stage.
Hello. All are here, na? A very good afternoon to everyone. I feel, afternoon gets a bit lazy, isn't it? A very good afternoon, everyone. Let's give some energy, guys. Can you see the power-packed panel speakers here, all there for you? Yeah? I know it is a task to listen, but trust me, when they will be sharing the golden nuggets, this will be like the wisdom bites that you'll be getting today. I remember the days when I used to sit in my college and my university, somewhere like this, and trust me, thanks to all these panels arranged in the universities, that we are what we are today. Standing before you is Dr. Nancy Juneja, founder and CEO of RevUp Life Skills Unit, co-founder MentorX, and proud to be here as a moderator of this wonderful panel. And I must say, the kind of weightage of knowledge I'm seeing here, I gonna get goosebumps here, isn't it? So let's have a round of applause for the wonderful panel here, guys. It's working now. This is not working. Just, we need another mic. Yeah. We need one to shift upon. Ji, sir. Definitely. Sharing is caring. So let's just start from this. While we say sharing is caring, trust me, when we all start sharing our knowledge, that is the real care the nation needs. Isn't it? That is the real care, what we can do for each other. And I must say, sitting here today proud, at Iisa 2022 Indian Innovative Startup Conference, this is really nice to see at my left, right, center, front, each and everywhere, people with knowledge, people with intellect. What more I can ask for today? Wonderful. So let's just begin the wonderful panel discussion here to increase my knowledge. When we say startup conference, I must say, it is a lot of knowledge, it is a lot of sharing of growth hacks, it is having an entrepreneurship mind. As it is said, it is not important to, be an entrepreneur, but it is important to have that entrepreneurship skills. It is important to have that entrepreneurship mind from the formative years. And I feel all these brains here, once we just figure out the kind of experience they have, we will know it all, what we need to ace in this journey. Well, I see Dr. Munish Jindal here, and I am very fortunate to be his co-founder at MentorX. A lot of learnings in all these years from you, sir. And I'll just tell, when I say startup, you have been, running around 9 different companies, and not just 9 different companies, so many verticals. I've seen you working like a real horse. I mean, trust me. And when I see startups, I always see that urge of startup in you every day. I mean, every day you're starting up something new, something new, creating something new. So I want, what is one advice, probably from your career, that you wish to give to these young Turks here? Over to you, sir. Thank you so much. Usually it's always ladies first. Maybe ma'am has started because I'm the only guy here among these 6 beautiful, powerful women in the world. I'm so privileged sharing a podium with all of you. Thank you so much when you're asking about advice to the young Turks. See, the most important aspect is patience and perseverance. What happens when we start something? It takes time. How many of you, you all are studying here, how many of you have done this, that you took an admission in Sharda University, 3 months after, you went to your dean's office, hi dean, 3 months in the university, degree. It doesn't work like that, right? If you are in a 3 years or a 4 years course, 6 semesters or 8 semesters, you burn your midnight oil, you do the hard work, you write the exams, and then even after 3 or 4 years, when the convocation happens, then you get the degree. So same is true for the real world. When we start a venture,
It takes time. Nurture it with all your hard work, dedication, focus, perseverance, patience. Any venture you start, it takes 3 to 4 years as a gestation period. And this is what my co-panelists, whether it's Aina ji, Kanika ji, Arushi ji, Manisha ma'am, or Dr. Nancy itself, you will see these women, they have built their careers over their own passion and grit over the years. They rose to name, fame, success, and excellence, not in overnight. It's been years and years of hard work and a smart work behind that. And with that, I would love to hear from my co-panelists. Thank you so much. Can we have a round of applause after each of the panel? It means it takes a lot to share your journey. Otherwise, people are secretive of their, winning nuggets. And I must say, sir, I've been really modest here because I started with sir because now is the time when we see the real woman power on the stage. Isn't it, women? So sir will be having a lot of patience now, so I thought I'll just start this in the beginning. Anyways, and yes, moving ahead. So to the pretty girl next. Aina, I've seen your journey, I've witnessed your journey. I mean, from the startup to raising and nurturing so many startup girls and actually being an inspiration for many. And I'll just wish to ask upon that what it takes, apart from the grit and passion, what it takes to be there where you are. Thank you, Dr. Nancy. I'm thrilled to be here. It's a very proud moment for me, and it's a big opportunity. One second. I just need to know your journey straight from Yeah, heart. the only possibilities in your life tomorrow is what you've built today. And I read this quote by Les Brown in an article, and it has inspired me that, it's we ourselves who are the barriers. So as a woman entrepreneur, it's not an easy thing to be an entrepreneur because you are, working. It's not an easy job to deal with, so many things. And you're multitasking, you have kids, being a mother, being a wife, being a daughter. You have to do so many things. I still remember when I started my career in the catering, corporate catering. I went out for a work, I got the work, I had committed to them. I was not able to arrange a chef, so I had to cook on my own. Things were, I used to work in the wee hours. Things were not easy for me. I used to run errands to get the banners done, and it was really, really tough time for me arranging the chef. And I still remember that tough time had made me what I am today. So, and what I did was, I have 2 kids. My son is 9 years old, my daughter is 7 years old. They are super crazy, and they are adorable, and I love them. My husband is a constant motivation for me. Generally, it is said that, behind every successful woman is a man. Sorry, successful man is a woman. We understood. Yeah, Behind. in my case, it's my husband who is my constant support, and today I'm standing as a proud founder and managing director of Maitri 5-star PG Accommodations. Currently we have 3 successful established branches in New Delhi. 2 branches are in Karol Bagh and 1 is in Indupuri. And we have 2,000 plus girls who have lived and stayed with us. 7 renowned institutional collaborations from Pearl Academy to IIFT Narayana, and many more, and 12 years of experience. It's a home away from home where where girls from different parts of India come here and take admissions in different universities, colleges, and we give them a secured and safe place to live in. We are giving 5-star facilities with most affordable prices, where it's fully furnished air-conditioned rooms with attached bathrooms.
everything is available, Wi-Fi, all the facilities, Wi-Fi, laundry, we have terrace garden, gym, spa, sauna, this kickboxing, self-defense classes is being conducted, and career mentoring and counseling is being done on the regular basis. And we are, the girls from different girls are, on their birthdays, we are celebrating their birthdays. Every festival is being celebrated so that they don't miss their homes. So wonderful. So it is just not an accommodation. We are the nurturers. Wow. We are giving them the right values at the turning point of their lives. So, and motivating all the young girls to do wonders in their lives. I've already motivated many girls and they are excelling in their fields. So this is what I love doing. And now we have seen that a lot of IS officers and IPS, SHOs and ACPs and politicians approach Maitri for the bed in, in our accommodations. So this is what I made it. Really nice, So really nice. I would and like to say that, whatever the situation is, whatever the difficult time is, you should never give up. And you should always follow your dreams with the zeal and the confidence. And this is how the leaders are. It's wonderful. This is really This wonderful. is how the isn't leaders it? are. So, that is what happens once an entrepreneur shares her or his story. He has lived it. It comes from within. And that is what I can see from the pulse of the voice. Really nice that you shared your story. And I can surely see you are a girl who's inspiring millions of girls. So best wishes for the same. So next to us is Mrs. Kanika Chawla. Again, I'll say when I see you, Mrs. Chawla, and I see a futuristic educationist in you, I feel education in India, when I entered around, 22 years ago, it was like people questioning that education should be with the people with spectacles or with gray hair. I see some nodding heads here, but education meant to be boring. Till the time Mehuna and Sushmita Sen changed it all, isn't it? So, sitting next to Mrs. Kanika Chawla, who have searched the best out of everything and, created a startup school, which is creating its own example, its own inspiration. And this is really nice. Popsicles is creating waves. I would love to ask you that what have been your ideas as a startup? Because I feel it's still a startup, initial journey, and you're the best to tell that what ideas you introspect and get implemented there. Thank you for this amazing opportunity, Sharda University and Dr. Nancy, for a wonderful question. I feel thrilled and feel so glad to be part of such youth who is giving time and patience and listening to all of us. So from me, I would just want to add that never underestimate the power of your hobby. Usually we tend to spend our time with the things which we like. For example, I also pondered upon what my likings was. In the summer vacations, when our cousins used to get together, I used to always pick them up and settle them up, and she used to start teaching them. So that was the hobby which was lately discovered into my passion. And now the Popsicles Early Learning Center has come up. Now the center, Popsicles Early Learning, why? Because the formative years of learning are those years which we need to really, really focus upon. If we talk about entrepreneurs and entrepreneurship, we all know that how important it is, and India as a country and the government is taking a lot of measures to encourage them. Why not to have this kind of learning atmospheres right from the children when they're starting up in their lives? So there comes the holistic development. Holistic development in early childhood plays the role of creating creative thinkers and the cognitive development, communication, and collaboration. This is what holistic development is all about. So if we are in 21st century and we want to move into active learners, we have to start our journey right from the beginning. So we
on our online portal as well, we are trying to educate the parents, we are trying to educate mothers how with the simple routine in their lives they can get into the holistic development, with the small measures they can take while reading their books and the kind of books they are required to read and the kind of way of learning they want to empower to their children. So though it is very early, a lot of people say that the first 5 years you can just move around and play, but I personally feel that play is the serious form of learning. Don't underestimate the power of play. Give your children and your thought process the power of hobby. Don't underestimate that. Introspect yourself. Think about the things which you like. Think about the things which you are never bored of doing. Do that, invest in that, and raise your own business. Thank you. Wow, this is so nice, and I guess very well summed up. All the work and no play, we all know what it makes. So definitely great to hear from you, Kanika, and I'm sure you'll be coming up with many innovative practices in education. Wishing you the best. I must say, everyone, I mean, be the veteran, Dr. Jindal or Aina and Kanika, Mrs. Kanika Chawla, and here with series of years experience, Mrs. Manisha Kaushik, I'll say everyone needs hand-holding in entrepreneurship or in their journey. So my question to you is, seeing you as a strong pillar, a women entrepreneur, and every woman entrepreneur has a story where she's sitting, you know, there are a lot of hardships behind. So I wish to ask you that what is the backbone of your success and who you feel you can rely upon in your journey for your success? First of all, thank you so much for giving me this privilege, Sharda University and Team Mentrix. It's an honor to sit amongst you people and talk today. I also thank all of you here. I hope it's not, a sleepy time for you guys and we are not, disturbing you. So guys, wake up and join us. When you start, it's always difficult. At each stage, there might be failures, but these failures are stepping stones to success. So I personally feel that each such small step which we take in the right direction towards your goal takes you a very long way, and in this journey, you become independent. You also realize your potentials, which you can build on, and you also realize what you need, what you lack. So you also add on and boost your own personal development. So in my journey, this has happened. I am a first-generation business entrepreneur accidentally, I would say. I was not cut out for that. I'm a genetic engineer, but destiny has its own ways. And I'm very happy where I am, because yes, when people say I'm a role model for them, I really wonder, am I? Because each stage I am learning. And here I realized that my family and friends, there were people who were standing by me at each stage. There were people who just walked off. So those people, I knew that I could not rely on them. The people who stood by me, yes, I gave them time, and I am there for them for their little things. So that is my story of success, and I really wish each one all the very best. Thank you. This is really precise and so helpful, Manisha ji. I must say the people who walk out give you the best lesson of the life, and they make you reach the level which you never knew. So be somebody no one thought you would be. That is the spirit. Wonderful, Manisha ji. We'll definitely come back to you. And moving ahead is Arushi Chug. So what to say about the girl? I mean, seeing the hardships and seeing your journey, trust me, it's like there was a time when we were in school that entrepreneurship was a daydreaming, probably no one thought of creating a legacy. But of course, people like you, the Gen Next, the Gen Z, and everyone here, they are creating the waves. So I love to definitely, ask you, seeing your profile, according to you, what would be the next version of innovation as we continue to evolve and progress? Because trust me, the jobs that are today, they were not before. No one imagined they were. And the jobs which will be in 5 years from now, we never know. So we have to prepare, evolve our own self. Gen Next, according to the new age life skills, which I propagate. So I would love to, hear from you. Absolutely. Thank you so much for the opportunity. And it's amazing to be here. And so, as we all know, innovation has changed the very face of the planet.
thanks to the scientific modern tools and technologies that we have. As Dr. Nancy Juneja very rightly said, the skills are going to become obsolete. So we have to evolve very rapidly, with great intensity. And, if you ask me, from my experience of life, it's like if I look at someone and if I see fire in their eyes, that's it. You can't stop that person. That person can have 10,000 limitations. You just can't stop that person. Even sitting here, if I look at people and if I just look into their eyes, by God's grace, you just know that person, you can't stop that person. Despite the limitations, there's just no stopping. So, absolutely. So, what I am seeing from my experience, Dr. Nancy, what I am seeing is the current, currently the organizations, they are rapidly evolving at a great pace. And it's coming because, thanks to the innovative, tools and technologies that are there. And it's happening because of the permutations and combinations that's happening, basically. So we are upgrading the versions. We are coming up with newer and newer versions. So I feel the next version of innovation could be where, if we really apply ourselves and if we really work on our competence levels, humanity can see something that even logic cannot understand, because, something so shocking can happen that even your own emotional intelligence cannot decipher what just happened. The basis of why I'm saying this and the passion behind this is because I'm working on a technology called inner engineering. And because of that, I've been able to experience something that has shocked the very core of my life, that has given me empowerment, competence, and definitely the impact that's there. So definitely that's there, behind it. And I would like to quote an example, of Ramanujam. So a brilliant mathematician that's there. And, when he came up with his own field of mathematics, the whole world was shocked. Something like this could happen. All the universities in the foreign country, everybody was shocked. That an intelligence of this kind, a brilliance of this kind, can exist. Everybody was shocked. He took the whole world by storm because he applied himself in such a way that a newer kind of intelligence, a newer kind of brilliance arose out of him. So I'm always inspired and drawn by, people like these. They are my inspiration. And for the crowd here, on a lighter note, it's like if you want to watch a movie in the theater, and if you're waiting for a complex, the climax scene. So if you already know how the climax scene is going to look like, it's going to get very boring because it's going to be predictable and things like that. But if the climax scene is something that you did not imagine and it really shook the core out of you, now that's the kind of movie you want to watch, right? I feel that should be the next version of innovation, Dr. Nancy. Thank you. This is really great. Thanks for the insights, Ayushi. I must say it is like the thumb rule for today. It is innovate or evaporate. So wherever you are, be it donkey years in the business, be you're in job, you're professional, you are a startup, you're entrepreneurship, wherever you are, unless and until you're innovating yourself, your own self. And there's never a competition with anyone else. The competition is with your own previous self. And when you start doing it, then there is, it creates history. So really nice. And I'll just say, there's so much depth in each and every person sitting here. And I'll again move to Aina and very briefly, if you can, give us, something which you have unique plan, for the future ahead, for the girls you're nurturing at your PG. To be very honest, my passion, my determination, my perseverance to do something of my own, to be a boss lady, is what has led me here today. So I wanted to share an incident when I started my career. I started in early 20s. I was working in international airlines, and it was a proud moment for me, dream come true. And initial days were really tough time for me. I was asked to sit on a system, and nobody used to talk to me. I used to learn the system all alone and only working.
I used to go to the cafeteria, eat my food all alone. So I used to come back home and tell my dad, I used to cry in front of him that I'm going to leave my job. I'm going to quit. He used to say that, you know, I still remember the constant motivation, the words he said, that, you know, the bad days will build you bright future. So you're learning now and you'll always be learning. So be a fighter. So these are the constant motivation and being very ambitious in life and unstoppable. This is what I tell my girls, that I'm motivating them to do wonders in their life in whatever respective fields they are. So just believe in yourself and shine on. This is amazing. So you're being the light in someone else's life. Yeah. What more you can do? Thank you. Wonderful, wonderful. Over to you, Dr. Jindal. I will come at the later. Let's hear from the women part. That's modest, really. So yes, again, Mrs. Kanika Chawla, lots in store. I see you brainstorming for the, you know, whatever innovation you can get in education for the early childhood, you're doing that. So I must tell, of course, holistic education, EQ, IQ, everything is important, and past 2 years have told us how everything is important other than the score game. You know, there was a time when I started my journey from Delhi University Debating Society, and public speaking used to be something which, if you know public speaking, you know everything. But then later you realize that this is just an ITA if you need to ace the word. There's so much you need to know in 21st century, the new age life skills. It is not that if you can speak, you can be the master of the game, not at all. Yes, you need to speak to inspire, you need to speak to impact, you need to speak to influence. But alongside, you need compassion. You need critical thinking, design thinking, creativity, curiosity, and not just this, n number of things which I see you doing in formative years. I mean, this is really terrific. So again, being the startup in the early childhood, what are your plans ahead for this age group? So with the Popsicles Early Learning Center, it is not just a center, it's a movement. It's a movement which I have started for the formative years, for the education industry, that yes, we can bring a change right from the child comes into this world. We can bring and make a difference into their life by giving them the right knowledge and the right skill. Usually we put them to a lot of courses and academic knowledge. No, that's not the way. Put them into a lot of play and experiential learning. That's where the difference will come. That's where the holistic development and the future entrepreneurs will come in. Thank you. This is really nice. I'm thinking I'm probably asking a beauty pageant here, and you know, they are actually Pim and Prom. And over to you, Manisha ji. So I feel each one of us, we are doing, you know, wonderful things. But yes, I'll say that each one of us needs that inspiration, needs that kick time and again. So who has been your inspiration, and what you feel that what personally a routine should be followed by an entrepreneur, Gen Next entrepreneur, to be inspired always? Thanks, Dr. Nancy. My inspiration has actually been my mother, because my mother said, never look back. Take each step, baby steps, and that will lead to your dream. So that has been my inspiration throughout, whether it was learning how to ride a bicycle or driving a truck. So I've done each and everything because she was there behind me. I have always believed that when we are meticulously planned and we have a routine, you know, 24 hours will seem like 48 hours. So I follow a very, very, you know, meticulously planned hourly routine. Here I would say, you know, many people ask me that, is that possible? So I say, no. So you have to, you know, each day you learn, you set your goals. And at the end of the day, just 5 minutes before you sleep, just go through them mentally, whether you were able to do it. And accordingly plan for the next day. So hourly, daily, depending on what is your need, it will really help you, and it will also make sure that you don't leave things which you had planned for. So the frustration will not be there. So that is my, you know, mantra for success. And I also feel aspire to inspire before you expire. So this is like something.
This could be the tagline of this panel, huh? Wonderful. Aspire to inspire before you expire. Surely. And when you expire, then also be a story, a magical story for others to read. Yes. So that has been my success mantra, and I would give to the young people who are sitting here. Yeah, thank you. This is really terrific. Something that you do to fuel your mind, to get that innovation and creative bent, Ayushi. Okay. I generally, there is a process, there is a way to infuse energy basically into the thought process. Generally, how to fuel myself, it's a very simple thing, but it has worked for me in a brilliant way. I will sit in one place and I will sing a song with my eyes closed really intensely. And that will be, sometimes it will go to 30 minutes, sometimes it will go to 25 minutes. But the kind of energy it generates at the level of the mind and the way it organizes the mind, there is simply no negative thought after that. So I am definitely someone who has seen a lot of, there were times when I also fell head first. So what I do is to be able to, I don't run away. There were times when I used to run away, then I thought that's not the right way to do it. I would lock my room so that nobody else knows there's a dangal going on inside. And I would just sing intensely, and the song is Laksha to har hal mein pana hai. I would just sing it 20 minutes non-stop. I would, until that kind of energy generates, and there is nothing in my system that says you can't do it. Till then, I'll go on. Wow, this is unshakable peace which we get from the power of music. Yes. Thank you so much for sharing this tip. And before we go to Dr. Jindal and conclude, because he's the best to, conclude each and everything, I need one word from the beautiful woman here about, not a tip for others, about what is the strength, why you are sitting here, you are adding so much weightage to the panel today. So what you can bask upon that, yes, a pat on my back, that I am proud of this quality. Over to you, Ayushi. One word. Go on, loud and clear. Great, Manisha ji. Wonderful, multitasking, great, Kanika. Dare to dream. Dare to dream, please pass it on. Perseverance. Thank you so much. See, I don't have elaborations. I just say that I'm just a new fish in the pond, learning to swim, right? So learning should never end. It has never ended for me, right, since I'm born. And most important aspect of life is we are not meant for mediocre things in our life. Never ever settle for mediocrity in your life. If you are into your comfort zones, if you're feeling, yes, we are getting 3 meals a day, a wonderful, nice home, and we are sorted, that's fine. Yes, life will move on. As Manisha ji said, yes, one day you will expire. So, but what you're leaving a legacy, whether you are going to be a story, whether you're leaving a legacy, you are leaving an empire, or you're leaving something here. So that is what counts for. So move out of your comfort zone to build something up, and make sure when you are rising in your journey, you are making others part of it and making them rise. I wrote a very beautiful thing on Facebook long back that I tried someone climb a mountain, and you know what happened? I myself reached the top. If you can just understand this one line, this will sum up your entire life. So learn to compete with yourself, right? Outgrow yourself and learn to coordinate with the people around you, your peers, your friends, your fellows, your families, your relatives, whosoever. Coordinate without even thinking what you are getting. I was just sitting with the Dean of Sharda University just a few minutes ago, and I was discussing that whenever we meet someone, the first thing we think is, oh, what can they do for us? Or how we can get benefited from that. Rather than that, please change your mindset. And the very first thing you should be asking is, what can I do for you? Yeah. Live with that mindset and you see the magic around you. And I really want now to conclude that let's all stand up and give a standing ovation to all these wonderful women who are the mothers, the daughters, daughter-in-laws, wives, but they are building the legacy. They are building those companies and creating jobs and giving you an inspiration. Let's have a hugest round of applause for the women power on the podium. All the wonderful women sitting on this side, all the wonderful women sitting on that side of the podium as well. Thank you so much. Thank you. Over to you, Dr. Nancy. Thank
you so much, Dr. Jindal, always for, being modest and, raising our egos and attitudes, yeah? And that we have on shoulders. So I'll say, guys, we all will be staying hungry, staying foolish, and that is what you should do. Hunger for growth, hunger for knowledge. That is what we are here for. Thank you so much for being a terrific panel speakers. Thank you so much for giving me a chance to be there. Thank you. Just be here. Please keep sitting, yeah. I would request the organizer, Vani ma'am, please to take over. थैंक यू सर, वाकई बहुत अच्छा सेशन रहा और इसका अगर मैं एक निष्कर्ष निकालूं तो वो गाने की जो लाइन है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है, और जब इस तरीके से दिल दिमाग में चाहत होगी, कोशिश होगी, तो निश्चित तौर पर मंजिल एक ना एक दिन मिल ही जाती है। बहुत खूबसूरत। और फाइनली हमारे बीच में हमारे गेस्ट आ चुके हैं, हरविंदर मनकर सर, माफ़ी चाहूँगा। आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं और बहुत ही फेमस एक सीरीज़ कार्टून की हम लोग देखते हैं, मोटू और पत्तू, अरे मोटू समथिंग कुछ इस तरीके से। सो मैं ज़ोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूँगा हरविंदर मनकर सर। प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ सर, ज़ोरदार तालियों के बीच वेलकम। मिस्टर जितेंद्र, आप भी स्टेज पर आएँ। सो फेलिसिटेट करने के लिए So now I invite Miss Arushi Chuk, ma'am. क्लैपिंग होते रहने चाहिए, मैं समझ सकता हूँ, बट next is Miss Aina Gupta. Aina Gupta, ma'am. Next is सर नहीं है हमारे बीच में। Now, Dr. Manisha. Yes, please. Woo! Now, Dr. Munish Jindal. Now, I invite Kanika Chawla, ma'am.
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. सो नाउ कैन आई इनवाइट लियान. लियान हमारे बीच में एक रैपर है जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के ही एक स्टूडेंट है. वेयर इज लियान? कहाँ हैं आप? तालियां बज रही हैं. मुझे लगता है कि आपके साथी, आपके दोस्त और हम सब आपको सुनना चाहते हैं. लियान, और मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा ये लंच का टाइम है, और लेकिन उसके बाद डेफिनेटली हम लोग उसके बाद लंच की तरफ चलेंगे. लियान, 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 वेयर आर यू लियान? लो. Come on. Tell me what you got, yeah? I like it here, I like it there, and it's not fair. Feels so close, but still so far from here. The dreams so big, I'm in the pathway of hell. In this world so cold, there's no peace for all, no place for the all. Just breathe, that's all. So just hear this thing, let's bring out the peace. Love for the kid, reminisce the sweet couple of days in this cold breeze. Money tree, I see back in the days when the days was cheap. When I was looking for my pit, ripping down the street. Say, I gotta make money out of nothing. They say start up a business and it's kinda troubling. No money, no investments, just a view to achieve this greatness. People think I'm a mad dog, taking every step, every second in the mad dog. I've been rapping in the crack for, so my rhymes so tight. I just rapping in a sec and a long ride say. Losing my motivation, corrupting my mind. What's the situation? Unable to balance this emotion, speak in my mind. Hip-hop's my religion, no gimmick in the season. Fake people don't believe them, real friends never leave them. Believe me one more time, it's the beats on precision, rhymes and bad decision making me feel alive. Some say I suck, but I don't mind. This music keeps me awake at night, deep down in my oceanic mind, in search of the words so I can describe what I see, what I feel every day, every night. Feels a little bit strange, but I'm still trying to survive, depending on a situation. I improvise, focused on my goal, but I get distracted sometimes. No money, no life, happiness disguised as I took flight like a kite up in the skies. As I reach more heights, I'm gonna keep my homies aside. Stay true to this game, I'm blessing this life. So I designed my rhyme in a melodic vibe. No hate for the homies who couldn't keep aside. What you say? Say what? Say what? Say what? Say what? This song 2 years back. This is my original. Please check it out. Drinking up, drinking liquor for the time being, intoxicating my mind for the time. Freestyle on my mind, so I rhyme. 12 o'clock, it's midnight. Ladies, if you stayed up night just to look at me, how rhyme. Search for pussies at midnight, cause I love this cat fight. Tonight I look at the moon and it looks so fine. It's a classic divine, reminisce the time. Rewind, now it's just a fade and wap. Time changes people's minds. Few likes and more dislike, disinterested minds. Haters don't face me, I keep being wise. It's the thought of the devil, but my ex
I recall in my mind. All the hard times, it's got me hypnotized. Stuck up at one place, I'm drowning inside. But still stand up one more time as I improvise. Rise up and show this world how I live my life. Negativity aside, blessed from above, I'm not losing this time. 'Cause that's how I live my life. 'Cause that's how I live my life. 'Cause that's how I live my life. Thank you guys. पिक्चर अभी बाकी है? किस किस की पिक्चर बाकी है सर? लियान की और? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू. सो फाइनली हम किसका इंतजार कर रहे थे? किसका? लंच का इंतजार कर रहे थे. भूख मुझे भी लगी, लेकिन उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं मिस अंजना भाटिया मैम. उनके बिहाफ पर आई थिंक डॉक्टर जितेंद्र हैं, जो कि इनको अवार्ड मिला है बेस्ट सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप में. सर आप आइए. और अवार्ड देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मनकर सर. मनकर सर प्लीज़ आप स्टेज पर आइए. सर मनकर सर प्लीज़ आप स्टेज पर आइए. अवार्ड ही लिस्ट है. जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि बिग एफएम से हमारे बीच में खुराफाती नितिन भी होंगे और साथ ही साथ शाम के वक्त में एक्जी की लाइव परफॉर्मेंस होगी यहाँ पर. सो इंतज़ार मुझे भी है उस घड़ी का, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी एक सेरेमनी. प्लीज़. बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है जब हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचा रहे होते हैं और जब उसको एक सम्मान मिलता है किसी समारोह में तो वाकई बहुत खुशी होती है. ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इस सम्मान का, इस कॉलेज का. बहुत बहुत धन्यवाद सर. वेलकम सर. सो जीते क्या नाम? डॉक्टर डॉक्टर मुनीश जिंदल, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा. प्लीज़ आप स्टेज पर आए. एंड आई इनवाइट डॉक्टर नैन्सी जुनेजा. आप भी प्लीज़. आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ आप लोग.
Thank you, guys. I'm so glad. Don't get bored by seeing our faces. I think it's up to you. You can get bored or you can get inspired that this guy is sincere in the morning. I'm not even an anchor. But since morning, I'm on the stage, and now we are leading another third panel discussion for you, which is going to be much more powerful and enigmatic, that you're going to learn a lot. So for this is the third panel. I'm moderating it. I feel since morning you have get to know that who I am, and still if you don't know me, just simply Google me. Right? Yes. So I would like to invite Mr. Jagjit Singh Sabharwal, CEO of Linchpin Solutions. Let's have a huge round of applause for Mr. Jagjit Singh Sabharwal. If Sabharwal ji is in the auditorium, I would like to invite him on the stage. Then next, I would like to invite Miss Bhavna Mittal, Certified Soul Teacher and Co-Communicator from Dr. G. Gang Shaw, Tao Academy in Toronto. Wow, see, we have people from all across the globe over here. Then I would like to invite Dr. Sangeeta. She is the founder and principal interior designer at Urban Interiors, as well as she is the founder director of Mentorex School of Learning and national president of Mentorex. So I'm so glad to have her among us. Then next I would like to invite Mrs. Varsha Jain, founder and CEO of Mavika Jewels and principal jewelry designer. Then I would like to invite Mrs. Anju Handa, curator, shop, She Connects and He Connects. She's another wonderful lady who's doing wonders in her field. And I would like to have Dr. Arvind Dhingra from GNDC, all the way from Ludhiana. He's executive director of STEP, a science and technology entrepreneurship park among us. And we are privileged that he could make out all the way from Ludhiana in between us. So guys, let's have a huge round of applause for these wonderful entrepreneurs, academicians, educationists, startup CEOs, as well as the women power again on the stage. And I would like to have Dr. Nancy to keep me company on the stage, please. Thank you so much. Can I have the mics, please? So can I again request you to give us a standing ovation to such wonderful, powerful panel? Just request you. And I tell you a secret as well. You know why I'm asking for a standing ovation? Yes, this is toward the respect. And you know, half of you who have gone lazy or a little bit of sleepy, they just suddenly get the energy. So how's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Great. That's the energy we need. And let's begin with this panel discussion on a powerful note. I would request all the panelists to be seated. Yes, please, Dr. Nancy, I would request you to be here. See, yeah, I have there. So see, both the co-founders on each side, gherofying all the panelists. Thank you so much. So we both have taken seats, so they both cannot run away from the stage. And now we can literally, you know, grill them over entrepreneurship, over innovation, over the future holistic growth. So I would like to start it with this wonderful, beautiful Varsha ji. She's this founder and CEO of Mavika Jewels and principal jewelry designer. She's a mother, a daughter, daughter-in-law, and a wife. And leading all the roles so beautifully. And I would really love to know, Varsha ji, what got into you that at this age, you are setting the bars high, burning the passion among all, that even at this age, you can become an entrepreneur. So what? I would really love to know that what. Thank you. Thank you, Mr. Jindal, for the amazing intro. Namaste to everyone. Good afternoon. The way beauty enhances every female, same way the entrepreneurship, the freedom of entrepreneurship enhances, powers the woman, gives her wings to fly, and makes her dreams come true. Since childhood, coming from an entrepreneurial family, I had a stomach for entrepreneurship. I personally believe the environment, the vital environment makes what you become. So like 15 years back, my kids, Avirat, Avika, for 15 days, went for vacations with their grandparents. I had nothing to do much. Then I realized I should start working
Working is very important. As kids, after growing up, will have their own life, own journey, own dreams. So it's better if I use my time in a constructive way. And same way, having a daughter, seeing me like that, I can be an idol model for my daughter also. That's why the seed of becoming an entrepreneur was seed up. Thank you. Wow. So see, this is the woman power, and she is setting the example that it's never too late in your life. And this is another message for the youth who feel, oh, might be I am late to catch the bus. Guys, trust me, you are the babies. You're too young. So explore life. If she can become an entrepreneur, I won't reveal her age. I myself don't know. She might be in her late 25, 26. Or she's 45. Wow. Imagine. So if she is at the age of 45, you guys who are listening, the students, would be 22, 23. She's double of your age, and at that age, she can run a venture into jewelry and diamonds across the globe. Imagine what all you can do. Moving on, I just realized we have another very wonderful and powerful woman sitting among us, Deepika A. Bhatia ji, Dr. DT, Deepika A. Bhatia ji. I would also love to invite her on the stage as our co-panelist, because I couldn't resist seeing her in front of us, that she's here with us. So, thank you so much, Deepika ji, for coming on the stage. So next, I would like to move on to Dr. Arvind Dhingra, when we're talking about startups, entrepreneurship, technology. I consider him as the father of all these things, as he is the director of STEP, Science Technology Entrepreneurship Park in Ludhiana, and the number of years of experience behind him, the knowledge, the intellect, I will just let him speak from there and would love to hear you, sir. Thank you, Mniff ji. This was a surprise that you called us up. So, anyways, friends, sitting out here, entrepreneurship is, already people have told you, it is your passion, it is your commitment, and the way you work it up. We are fortunate to be born in a country which is full of problems. Anywhere you see there is a problem. So if you want to find a solution, you're an entrepreneur. It's a very simple thing. Each day of your life, you get an idea. You just have to nurture that idea, bring it to a form so that you can market it, and the world will be at your feet. You can become a very good entrepreneur. That's what I can say. Thank you. Wow, thank you. See the message that you can get anything in the world if you are willing to work towards that. And guys, trust me, the kind of knowledge and the experience he commands, we have lots and lots to learn from him. He's one of the inspirations for me itself. So thank you, sir, for making all the way from Ludhiana to here. Then right next to Dr. Arvind Dhingra is this wonderful woman I invited right now, Dr. DT Deepika A. Bhatia. See how many accolades. Doctor itself, DT means dietitian itself, and she recently launched a new venture, Adan Healthcare. Ma'am, when you were so well established, already doing wonders in life, what inspired you to launch a new venture, Adan Healthcare, as a CEO? I would really love to hear from you. Thank you, first of all, Sharda University, Iisa, and Mentorex. सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो इंस्पिरेशन है मेरी खुद से लाइफ से मिली, बिकॉज ज़िंदगी जीना एक कला है, तो आई थिंक ये एक आर्ट है. अगर हमें कुछ भी ज़िंदगी में होता है तो मैं ये समझती हूँ कि जब हमारी ज़िंदगी खुद दाव पे लगी होती है तो हम बहुत कुछ उसमें से निकाल कर लाते हैं. क्योंकि अगर हम पुराने एंसेस्टर्स को देखें या पुराने पूर्वजों को देखें तो आज ये जो इतना सब कुछ आप देख रहे हैं, आज जो साइंस इतनी तरक्की कर रही है, वो उन्हीं की वजह से है. बिकॉज अगर वो इन्वेंशंस नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते. तो वो इन्वेंशंस हैं. तो वही एक इन्वेंशन मेरी ज़िंदगी, या मेरी आप ये कह सकते हैं कि मौत से और जो ज़िंदगी से कशमकश थी, उसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया. तो आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे कैंसर था, और उसके बाद से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. तो मैं लोगों को अच्छा फील कराना चाहती थी एज अ डाइटिशियन, एज अ डॉक्टर. मैं चाहती थी कि लोग जो है हेल्थ से कभी भी समझौता ना करें. तो एक ADN जो हमारी हेल्थ केयर है, उससे मैंने एक फूड प्रोडक्ट्स निकाले जिसकी वजह से लोग अच्छा फील कर सकेंगे. या मैं ये कह सकती हूँ कि आज हमारे पास समय नहीं है एक अनार छीलने का, आज समय नहीं है एक पाइनएप्पल खाने का,
तो एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से आएंगे, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो हेल्दी कैसे होगी। तो वही एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें हमने स्लीप, ऑक्सी, एंटीऑक्सीडेंट यानी, और जो जो आज ज़िंदगी में हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, यानी आज हम देखते हैं कैल्शियम, विटामिन डी, B12 की कमी जो लोगों को सबसे ज़्यादा सता रही है, उसी पर हमने काम करना शुरू कर दिया। और नेचुरल सप्लीमेंट्स, ताकि हमारे जो केमिकल्स जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में केमिकल से सामना करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा गट बैक्टीरिया हमेशा नुकसान में जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गई है, हमें हार्ट डिजीज़ हो गई हैं, देन वो जितनी भी हमने पूरी ज़िंदगी में पूंजी कमाई होती है, देन वो हॉस्पिटल में लग जाती है। और इसी का ही एक हमने सोल्यूशन निकाला है, ADN हेल्थ केयर। Wow. Thank you. That's wonderful. See, guys, this is all up to us, whether you want to win a battle, lose a battle with the life. And here is a live wire example who has won a lost battle, right, going through the cancer. And when we read in the newspapers or in the media that Yuvraj Singh won that battle, or Manisha Koirala won it, or Sonali Bendre won it, we say, oh, they are the celebrities. They have tons of money at their discretion and they did it. But here we have one ordinary civilian. Sorry to call you ordinary civilian. Even I am another ordinary human being. From someone from us winning that battle and then making it big, when she was already running her venture into the dieting world and now launching another ADN healthcare venture as CEO, you are setting the bars high, the new benchmarks, and we are grateful that you are among us. Thank you so much, ma'am, for such inspiration. Then I have wonderful Mr. Jagjit Singh ji, the CEO, Linchpin Solutions. Sir, the name itself, the Linchpin, it's very unique, very inspiring. I would love to know the story behind this Linchpin. Definitely. First of all, hello, namaste, adab, sat sri akal. Linchpin basically is a very pivotal thing. If you would have seen a horse ghoda gadi, uske paiye mein, if you would have seen that there is a pin which is put into it. If I'm not wrong, sir, it's the same pin that's in the hand grenade as well? Not exactly. But kind of. Absolutely. Very close to it. If that pin is not there, that wheel will come out and your ghoda gadi will not run. So that is what we feel, that what we are providing certain solutions. If those solutions are not there, there is a possibility that the wheel will come out and your balgadi or ghoda gadi, I'm very fond of saying ghoda gadi, car वगैरह तो बड़ा normal सी चीज़ है. So that is very important. इसीलिए अभी me and my partner Deepak, we had a long discussion thinking of the name, and this is the name that came to our mind. This is what Linchpin is. Wow, wonderful, wonderful. Thank you so much, sir, for sharing the story. And I can make out the role now you are playing in the society, and as a world at a large, it's inseparable. You're playing an integral role, and the way you said that Linchpin is not in the ghoda gadi, it won't work. Now I can proudly say that if Jagjit Singh sir and his company is not there, I think that the world won't function. Or the startup world, I can say, the kind of things you provide. I won't take that big a credit. But you deserve it, sir. You are an inspiration. Thank you so very much. But see, what I feel, rocket science is basically to fly rockets. For all other things, we just need basic things. And working on those basic things is something which we falter on. अगर हम अपने वो basic चीज़ें ठीक कर लें, most of the things are fine. Since morning we are hearing so many good things from so many learned people. But still I feel, जो कुछ भी उन्होंने बोला, it is absolutely fine. We have to follow that. But basics is something which we should never leave. On top of it, I'm sure nobody in this entire auditorium, nobody would disagree to agree with me कि we are Indians. We can't run away from that fact. We are Indians. Being Indians, we are very emotional, and we should not leave that fact. Emotions are such a power. आप emotionally अगर आप सोचोगे, suppose you are coming up with a startup, one gentleman rightly said कि you have to think कि मेरे startup की वजह से 5, 10, 50, 100, 500 लोगों की family का खाना चल रहा है. So that emotional touch should be there. If you put that emotional touch in your startup, I am sure there is no looking back. That is going to help you. I totally am in sync with you, sir. This is what we faced during pandemic. When pandemic happened, you know what? I own 9 companies and we're running it in 65 countries. We said to entire our staff, go back home,
No salary cuts would be there. We will be getting paid whatever we're getting paid. If you can work, work. If you cannot work, just be with your family. You know what happened? They were available at 2 a.m. also. We went online within 24 hours. They were available online. And once it's a real world, I'm sitting here and they're just working behind the scenes with more of the dedication. They said, sir, you were standing when the times were tough. Now we are standing for whole of the life. So when you're talking about that emotional touch, if we see and we work into that the real asset of any organization is the human beings, not that plant and machinery, not your education. It's the real people you work with. If you treat them as a real humans, believe me, no one can stop you becoming the global power. And getting it from you, Jagjeet Singh ji, thank you so much. We're privileged to have you among us. Then next, I have this wonderful, wonderful, very soothing aura of Bhavna Mittal ji. It's right from Dr. G. Zhang Shaw, Tao Academy, Canada. Name itself is so big and huge. I like her aura. And she's a healer. When we talk about healing, when we talk about soothing, the positivity, who doesn't need it? We all need it. So, connecting innovation, entrepreneurship, all together to this world. I would love to know from you, Bhavna Mittal ji. Thank you, Dr. Manish. Thank you to the startup. And thank you, Dr. Sangeeta. You connected me and got me to MentorX. So, सबने अपनी बातें आज कही. Everybody has been sharing their experiences. I'm grateful to be a part of this event today. Like all of us, I'm here to learn, but like all of us, I'm here to share. I'd only like to share one thing, what I have learned in my life, because I had to have a brain surgery 17 years ago. And I have a very peculiar disease which is called hemifacial spasm. उसमें हमारे mind और brain का जो होता है sync body के साथ छूट जाता है. And I was paralyzed. I lost my memory. I was bedridden, and I was on 23 pills a day. So when doctors said there is no treatment for it, God said there is, and I believed in my heart. So I got into spiritual healing. I'm blessed to be a spiritual healer, teacher, meditator, life coach. But ये सारे बहुत बड़े शब्द हैं. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम सबको सक्सेसफुल होना है. And we all have money in common. Money is energy. जब हमारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, रिलेशनशिप मनी के साथ होता है, तो हमारे साथ ये होता है कि पैसे हमारे पास आते नहीं हैं और आते हैं तो रहते नहीं हैं. We set up businesses, we have potential, we have skill, we have everything within us. We are certified, we have knowledge. But why is it that we are not successful in our life? Successful in terms of finances. Because heart is the receiver, mind is the processor, energy is the carrier, and matter is the transformer, the result. When our heart is not sync into what we want to do, जिसमें हम invest अपना heart नहीं करते, mind उसके साथ align नहीं करता, उन पैसों की energy जब उसके साथ align नहीं करती, तो उसका result flourishing नहीं होता. तो सबकी बातों का निचोड़ एक ये है कि जब हमारा हार्ट, माइंड, बॉडी और एनर्जी की सिंक होती है, अलाइनमेंट, तो हम उन चीज़ों के लिए अपने चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, वी आर एबल टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ. एंड दैट इज़ व्हाट माय रोल इज़. सो आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर. आई जस्ट लाइक टू से ट्रांसफॉर्म पॉवर्टी कॉन्शियसनेस इन यू. हमारी ज़िंदगी में 7.8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, सबके पास बहुत है. अगर हम अपना दिल खोलेंगे देने के लिए तो हमें वापस भी मिलेगा. हम नए नोट रखते हैं अपने पास, पुराने नोट दूसरों को दे देते हैं, तो हमारे पास जो सर्कुलेशन होता है नए नोट का नहीं होता. अगर हम ये सोचें इस नए नोट से किसी को खुशी मिलती है, हम दे दें, तो आप बिलीव कीजिए हमें उस एक नए नोट की वजह से बहुत सारा प्यार, इज्जत और रिलेशनशिप विद मनी मिलेगा जो मैनिफेस्ट हो जाएगा हमारे लिए. सो आई जस्ट से हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, विद मनी, विद बिजनेस, एंड वट एवर यू डू इन योर लाइफ. Life is beautiful and we can really come out of it. Wow, that's a wonderful message that Bhavna Mittal ji has given. And this message itself is the power of giving. That even we were discussing since morning in other panels as well. That once you believe, once you start giving,
life comes multifold to you. And a live wire example here sitting in front of you is me. This is what I learned early on, that when you start raising the bar for others, you never know who, how, where, or how many are raising the bar for you. Trust me, guys. Once you connect a dot for someone, the entire universe comes in sync with you, and you don't know how many, maybe millions in this universe, they start connecting those dots. Imagine what kind of charisma it would carry and what kind of charisma it will build for you, that you can be independent. I started working at 14, and when I started working, I had no clue what to do in life, right? Imagine a 14 years young kid, and now sitting here, after 9 companies, 10th company is already on the way, and this is going to be non-stop phenomena forever till the time I'm alive. And thanks to the people like Bhavna Mittalji and to my co-panelists, each one, whosoever is here, Deepika ji, Dr. Arvind Dhingra, Jagjit Singh ji, Anju Handa ji, Varsha ma'am and Sangeeta ma'am. And from there on, I would carry on to Anju Handa ji, the founder of He Connects and She Connects. Itself, with the He Connects and She Connects, she has covered everything. The world is with the he and she, though we believe in the third gender as well, as Mentrix is closely working with the transgenders as well, because we recently are working with Lakshmi Narayan Tripathi ji as well, whereby this movie was also made on them by Akshay Kumar. So we are considering them as also a mainstream society, and we are planning a startup incubator for them. So, but I would really love to hear the concept of He Connects and She Connects from Anju Handa ji. Thank you, Manish ji. And before I start about He Connect and She Connect, I would like to thank a few people, and I am really feeling honored to amongst all the esteemed and dignified panels over here, now and before us. It is a great honor to be present here. I'm very thankful to Institution Innovative Council, Startup in UP, Government of UP Initiative, Launchpad Sharda University, Indian Innovative Startup Organization Awards, and this association. I really want that everyone who is sitting here, they all are a younger generation, you know. They are the nation builders, and whatever you are hearing out here from all the panelists before and after us, that is going to give you something which will definitely, you know, make you successful in your life, you know. These are the experiences we are sharing here, and I am very glad that I am part of it, you know. And coming to this startup, I think this decade is the decade of startups. And I am amazed to see the kind of innovation going around all around. And it is making our life so easy. We are, you name a thing, and that the role of a startup is there, you know. So these startups are coming up, these entrepreneurs are coming up, and not only being successful, but they are also instrumental in generating a great revenue for our country, and also bringing in great revenue from other countries. They are also providing a lot of opportunities to the people who are working with, under or above them, you know. So this is something which we all need to give a big round of applause to all the entrepreneurs sitting out here. And I truly believe that this is the one thing which can make our country proud of so many things in our international world, you know. So coming back to She Connect and He Connect, yes, I am the curator of She Connect, which I started 3 years ago. It is an all-women platform which I started after I wrote my first book on women entrepreneur. The name of the book was Inspiring Entrepreneur Journey from Can I to I Can. This book, while writing this book, I got so inspired, I can't tell you. I narrated the life journey of 16 women entrepreneurs, and Nancy Janeza was also one of those. And many people here are the part of my book, you know. So I thought that I am working so hard, because my journey was very, very, stressful in terms of, I am from an age when there was no internet, no computers, no Google, nothing, you know. So everything you were depending on not even mobile phones, you know. So my journey was so struggleful. So I realized, after establishing a niche for myself, being a preschool consultant and into event management, I have been into 25 years. So I realized that there are so many women all around. They want to do something, not only women, men also.
but they are not getting any help, guidance, motivation to do something. We have to start, you know. So this is how I thought of writing a book on entrepreneur, and reading their story, I got so inspired that I thought that my struggle is nothing in front of them. They have struggled so hard to reach and create a niche for themselves. Then after that, I came up with the second book and the third book, and all my books are released on Global Literary Fest and available on national and international platform. And you will be very glad to know I'm coming up with the 4th edition this year, and we will be releasing this year. And I have covered 60 women entrepreneurs till now. They are from the Formula Car racer to the educational like Nancy Juneja, Jujuli artist, then online seller, and so many of them. So you can have a look at that book. And while I was writing that book, I realized that there are many people nowadays, they don't read books, you know. They need some true inspiration in physically, you know. So I created this platform, She Connects, which was established 3 years ago with the help of Dr. Sandeep Marwa, you know, and he is our mentor, he is our patron. And this platform was launched, and now we have 3,000 plus women entrepreneurs on board. After running it for 3 years, again I realized that there are so many women entrepreneurs platform, and we are talking about women empowerment. Personally, I believe that women are born empowered. There is nothing on this earth which can empower women. She has that empowerment when she is born. You know, the thing is she needs to realize that potential. Any platform, any person, any situation can be instrumental in bringing her that potential out. You know, I don't claim that I empower women. I am no one to empower women. I provide them a platform where they can unleash their hidden potential, you know. And I am not promoting that women need to run a race with the men, or they need to beat them to run a race. No, it's not true. We women and men complement each other. No woman can be successful without men, and no man can be successful without women. Wow. Because that is biologically is created such a system, you know. So we need to understand that system, and we need to complement each other and then move ahead. This so is I really, realized really that, great, ma'am. yes, This is I really realized great. that She Connect is doing great, so why not to create a platform for men also? Wow. So this year on 2nd April, I launched my second platform, He Connects. And when I launched He Connect, yes, as Manish said, there were so many comments coming up when you are starting for the transgender and for the kids and for the family connects, you know. So yes, we are working on all these things, but yes, Abhi, we are working on He Connects and She Connect. This is commendable. Yes. Trust me, this is commendable. So these are the kind of inspirations we need. And thank you so much, ma'am, for being part of this panel. One thing I would like to tell Manishi, sorry I'm interrupting you, to all the entrepreneurs, all the students, every guest sitting over there is that never underestimate yourself. You are born with some talent. Try to bring it out. Don't feel that, don't try to copy others. Be your natural self and pursue what is hidden within you, you know. You can be a painter, you can be a dancer, you can be a educationist, you can be anything. So try to focus on that and take that initiative ahead. That will definitely give you a success. And 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगी आप सबके लिए, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है. Wow. So आप सबको अपना रास्ता खुद तय करना है. Thank you so great. much. Thank you so much, Anjuji. This is really, really inspiring. And when we talk about inspiring, I have wonderful inspiration, Dr. Sangeeta. Wow. She is the principal interior designer at Urban Interiors. She is the chairperson with the Mentrix Women, national president of that. And along with, she is the director for Mentrix School of Learning. Ma'am, how? When people find it so tough to even manage one thing in life, how you are able to manage multiple things, and what would be your message for the youth to manage themselves? Jai Hind. You know, to start with, listening to everybody, learning from everybody. When you said how you manage, I think managing ourselves is the biggest challenge all of us have, and all of us are now nurtured enough living in this platform
where we are networking, and it helps you learn what next will help you to grow more and to keep yourself in a very protective zone, so that you can grow more. And when we are talking about startups, we are talking about youth here. I would really like all of them to have this message from me, that you are creating and living in your immediate first circle. So when you're into your education line, or you're into your schooling or universities, first maintain that circle, because they will be the first marketeers, first end users for you. So if they give you a good word of mouth, you win the battle. Thank you. This is great. See, this is what we call a feedback system. And that if your people are happy around, you don't even need to market yourself. And this reminded me, ma'am, of my hover robotics. I launched my robotics company from my hometown, Ludhiana, because I'm born and raised there, and it was always my dream that if the day I'm going to do something different, I'm going to do it from my own hometown. And I wanted to grow it big. You know what we started doing? We started giving no questions asked 1-year warranty and lifetime free service. We have surpassed any given company. You name about any global company as well. No one gives a lifetime free services on their product. And you know why? Because we knew internally the product we have created, it would never require a service. But what it has done is, it has set the benchmark so high for our customers that we don't need to market ourselves. Those customers, they have become the ambassadors for us, and they are marketing the organization, and we became #1 in India, and we are featured among top 5 in the world. So imagine, as one of my co-panelists mentioned, that we don't even belong to the Google generation. And can anyone tell me how long it takes for one SIM card to activate now? When you buy a new number or a SIM card, can anyone let me know how long it takes? Few seconds. You know, if I tell you something about in our times, we had to wait for 4 years for a landline phone. And you had to pay a security deposit of 15,000 that you deposit for 4 years. And after 4 years, when a landline used to come in the queue system, you cannot imagine my excitement as a young guy. And I couldn't even believe, like, okay, now I can dial someone's number. We used to have that dial thing. Dial, rotate. And imagine now, trust me, even if you have a patience of 4 minutes to go to a store, and even if you, in 4 minutes, you don't get that activation message of your SIM card, you're asking the telecommunication company why my message hasn't arrived. So we belong to that generation, and we have created a mark. Imagine what kind of wonders you can create. And for now, I'm thankful to my panel, but we will continue with the round 2, and I would like to invite my co-founder, my inspiration, Dr. Nancy Juneja, to lead the second round. Dr. Nancy, she is the founder of RevUp Life Skills. She's a thorough academician, educationist from past 15 years. She is the global chairperson of Mentorex Women. She is at the forefront, whereby she's connecting women with women across the world. Imagine running the show in 65 countries at this age, whereby she's a mother, daughter-in-law, and a wife. And for creating her own tribe, as of now, more than 2 million women are connected with Mentorex Women. And this is commendable, ma'am. I don't even know how many zeros are there in this million. And you running this show, you in 65 countries, and under her able leadership, even we are flourishing, and her vision is to be in 200 countries by this year end. And this ecosystem, the platform she has created, you know, I was just asking, ma'am, does this Mentorex belongs to us, or how many of us? Because we have Dr. Sangeeta also, Varsha ji is also part, Deepika ji, Payal, everyone sitting here. And you know, her answer was, Dr. Munish, we are dedicating this platform to all the 8 billion people on earth. If anyone's gonna ask us who Mentorex belongs to whom, we say it belongs to you. This is the sheer power she commands. And I'm literally in awe of you, and I'm really, really blessed that I'm working with you as a co-founder. Please come on this chair. It's my honor if you come here and lead the second round with the panelists. Thank you so much. Guys, huge round of applause for Dr. Nancy. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Jindal, again, for the wonderful words and, you know, making us high and telling us to do more, to be a bit more, and to contribute a bit more to this nation, isn't it? So, well, this is all about complementing each other. And that is what I've learned. That is what I've learned from him. And I'll just say that Dr. Jindal,
whatever. Okay, so this, I'll just say that it was so much learning. I mean, the women and me sitting here was in awestruck listening to all the answers. It was like wisdom of experience coming from you. And you know, wherever we are, we all started as startups. And I guess we all are startup if we wish to grow, isn't it, guys? To everyone out here, all the students, guys, to the last benchers right here, to all the students right here, we all are startups, whom you see here, and you are the budding startups. So we all are one community together. As Dr. Jindal said, yes, with MentorX, surely we have created an ecosystem to create this environment where we support each other, where we stand for each other. And you know what? When we stand for each other, when we be for each other, trust me, the world becomes a beautiful place. No one looks at you that maybe she will answer or not, maybe she will be of help or not. They just be there. For everyone out here, this is the time when Gen Z can, you know, reach out anyone. Can reach out any one of them. I mean, they'll be more than willing to give their mail IDs, even approach them for any of the assistance, any of the internships, letter of recommendations. I mean, you know, I feel for all the weightage out here, they are the people who will say, including me, that we have done our bit, life has given us much. Now is the time that we want to contribute to the other's life too. And that is what make our life fulfilled. So I feel for the second round, the first round has been really brilliant round of questions. And I'll just say that I'm an open book and I want to just write upon something, a masterpiece, you know, lesson from all of you, one by one, probably a 30 seconds lesson which you feel that I have also learned from my fellow beings. We all are learning some way or the other, isn't it? So it's not just learning that, you know, I am sharing my own learning. It is like learning as a student. I was learning as a student while I was sitting there from this esteemed panel here. So Deepika ji, the learning recently you have learned from anyone, be it your child or be it your help at home or be it your idol in the entrepreneurship world. So I feel, yeah, I'll just shift it. 30 seconds learning. Guys, this is really nice. A clap in the hall since the day one, you know, moment we enter without telling you to clap. So a round of applause for the 30 seconds nuggets. That's called for a good one. Wonderful. Thank you, Nancy ji. ज़िंदगी हमेशा सिखाती रहती है. No one is perfect. कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए सीखते जाओ. और एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि वो टाइम भी था जब हमें कैमरा के आगे आने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन आज वो टाइम है जब इतने लोगों के सामने दिक्कत नहीं होती. तो इसलिए हमेशा ज़िंदगी में सीखते जाओ. Thank you. Wow, so what we learned, be a lifelong learner. Guys, please keep a note of these golden nuggets. Wonderful, sir. Wonderful, ma'am. And now coming to Arvind, sir. I adore him completely, and trust me, this was my wish which I told you 10 minutes back. He has taken a wonderful interview of mine, and it was really a soulful journey. And I just told sir that I wish to ask you something today. Thank you. The only message is believe in yourself, do everything with full dedication, and put your 100%, 110% for everything, and the success will be yours. God will conspire and will inspire you to reach the top. Thank you. Wow, wonderful, so precise. Jagjit Singh, sir, from you, golden nugget from your experience. Well, always try something new. डरो मत यार, कुछ ना जो दिल में आता करो. I would give my example. I'm an engineer basically, but I tried my hand in modeling. For around last 4 years, I'm into modeling as well. But amazing yaar. I tried something new and I was successful. So, daro mat, whatever you want to do, bring out something in yourself और करके देखो यार, success will be yours. Wonderful, sir. This is really nice. जो डर गया वो घर गया. Yeah. So the bung. Yeah. I'll say Anju ji, over to you. Thank you, Nancy. I believe that मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में अगर challenges नहीं होते हैं तो हम वो नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं. So लाइफ में बुरा वक्त आना और challenges का आना एक अच्छा साइन है कि आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंचने वाले हो. So लाइफ में challenges को कभी भी ये मत सोचो
कि ये इसकी वजह से मेरा देखो समय खराब हो गया या मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है. They are the teachers for you. So learn from every challenge and then they will make you very successful. Yeah. Really amazing, really amazing. So never ask life, why me? Ask, yes, give me more. Yes. Over to you, Bhavna ji. Thank you, Nancy ji. I really appreciate and acknowledge the way you're contributing to society and to every person. Thank you. I have only one thing to share with my experience. Like we all know, ये पूरी दुनिया हमारे लिए एक energy ही है जो हम एक दूसरे के साथ feel करते हैं, right? So when the only thing that we need to do is, because the only truth of life is we are connected to each other, all of us. Like we say, it's a quantum entanglement. तो उस entanglement से हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने अंदर वो छोटी सी positivity ले आएं. Of if not doing anything big, if not doing anything great, let's not do anything unpleasant. अपने आप को थोड़ा सा love, थोड़ा सा respect दीजिए. जब आप अपने आप को प्यार देंगे, respect देंगे, believe करेंगे, you know, तो वो आपको automatically दूसरा इंसान भी love करेगा, respect करेगा, honor करेगा. Because it is in what we believe in ourselves, what we have, what we give, and what we receive. Wow. This is so amazing, so amazing. So taking responsibility of your own life, because whatever you are, you will attract the same. Wonderful. Varsha ji, the inspiring mother, the inspiring entrepreneur, something from you. Thank you, Nancy. I think we should become a brand. Products are made in the factory and brands are made in the heart. Quality is not an act, it's a habit. Thank you. Great, superb, superb. Dr. Sangeeta. I think, first of all, we all need to speak to ourselves and be our own inspiration, rather than looking up that someone will come, shake us, wake up, and tell us what we actually are born and what is the purpose of our life. So we should look around and see what is actually needed in humanity for our community growth, so that the ecosystem we want to create is there. Wonderful. This is really nice. So I feel we all are the global citizens sitting here, and we're not just talking about me, myself. We are raising above the me, myself. That is what is the crux from Dr. Sangeeta's talk. And each and every panelist, each and everyone contributing to the word out there. Thank you so much. Let's have a standing ovation for each and everyone. And let me invite our host and host, Dr. Manish Jindal, right here. Thank you so much, Dr. Nancy. It's always being a privilege to be under your able leadership. So nice of you. I'm so grateful for such power-packed panel, and that too when it was a lunch hour. Still, I'm so surprised at your energies. And so keep up these energies and keep inspiring us, right? You, trust me, you are the inspirations. You are those people who carry the torch, and that torch you have to pass on to next generation. So with the inspiration, with your hard work and grit and passion, keep passing on that torch and the message. Quickly, we're going to felicitate you right now, and then we will head on to lunch. Please, I will request organizers to just quickly felicitate the panelists, please. Yep, we'll announce. So we have, okay, Jitendra ji, aye, or can we invite Mankat Saab? आए प्लीज स्टेज पे हमें ऑनर करने. डॉक्टर संगीता. दीपक चावला जी और नीरजा गुप्ता जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए. वाह. आइए जी, आइए. Please come and let's honor Deepika Bhatia ma'am. Deepika ji, आ गया. Deepika Bhatia ji, the certificate. Dr. Sangeeta, please. Dr. Sangeeta.
it would be a privilege to honor you, the Principal Interior Designer, Urban Interiors, and the Founder Director, Mentor School of Learning. Next is Jagjeet Singh Sabharwal. Please. Next is Jagjeet Singh sir. Now, Varsha Jain ma'am, founder and CEO, Mmiff Jewels. जोरदार तालियां प्लीज. तालियां होती रहनी चाहिए, इसके बाद ब्रेक है. Thank you. Is a round of applause, please. Wonderful. What goes around comes around. So please, a round of applause. Good one. Now, Anju Handa ma'am. Now, Thank Bhavna you. Mittal ma'am, proprietor Bhavna Mittal. Next is Dr. Nancy Juneja, founder and CEO, Rev Up Life Skills, Global Chairperson, Mentors Women. Mr. Arvind. Oh, trophy. Now, I invite Mr. Arvind Dhingra sir. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए. So finally, lunch is ready. लंच आप सबका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू सो मच. मैं पूछ लेता हूँ. ठीक है.
proceed for lunch just outside. Yes, everyone, please join us for lunch.
पापा जी
सामने से। क्या बोलूं? यस क्या बात है, हम सेल्फी यहाँ करा रहे हैं। हाँ ये अरे भी बिजी है।
देवियों और सज्जनों, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हाँ क्या? ओ अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। खाना खा लिया ना? आवाज नहीं आ रही? लंच हो गया ना सबका? वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो जब तक कुछ है मेरे पास मुझे ही सुन लो। सो मीनवाइल मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि बिग एफएम से खुर्राफाती नितिन बहुत जल्द हमारे बीच में होने वाले हैं। खुर्राफाती नितिन, जोरदार तालियां। साथ ही साथ बिग एफएम से हमारे बीच में आ चुकी हैं रीजनल प्रोग्रामिंग हेड नॉर्थ इंडिया दिल्ली एनसीआर सुलक्षणा मैम। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सुलक्षणा मैम का। सुलक्षणा मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। इससे पहले एक छोटी सी परफॉर्मेंस होने वाली है। बैंड का नाम है शारदा बैंड और शाम के वक्त में एग्जी का इवनिंग लास्ट में, ठीक है ठीक है। तो मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग? बताओ, मॉर्निंग वाले अंदाज में कुछ और? आवाज नहीं आ रही है मुझे भाई, मेरे ही तो स्टूडेंट्स हैं एसएमएफई वाले, प्लीज। यस चलेगा। माँ कसम, छोटे से ब्रेक के बाद खुराफाती नितिन आने वाले। उनकी मूछें, इतनी सारी मूछें, वो कैसे मेंटेन कर लेते हैं? ये सवाल मैं जरूर उनसे पूछूंगा। ये भी एक बड़ा स्टार्टअप है। और साथ ही साथ स्टार्टअप के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो मॉर्निंग में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी समझी कि किस तरीके से एक स्टार्टअप, उस स्टार्टअप को एक अच्छा आइडिया मिल जाए और एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बदल जाती है। जिन पैनलिस्ट को मॉर्निंग में हम लोगों ने सुना, सुलक्षणा मैम, अभी हम आपको भी सुनने वाले हैं क्योंकि आपके साथ मैंने नज़दीकी से बहुत अच्छा काम किया है शिमला में और आप चंडीगढ़ में हुआ करते थे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम आपको यहाँ सुनेंगे। तो स्टार्टअप की जो बात हो रही है, तो स्टार्टअप का जब यहाँ जिक्र हो रहा है तो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, लोकल फॉर वोकल की बात हो। लोकल फॉर वोकल का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि 1905 में मैम स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये उस वक्त भी था, यानी कि स्वदेशी अपनाओ, सेम चीज़ वही है, लोकल फॉर वोकल। सो बहुत जल्द हमारे बीच में शार्क टैंक के पैनलिस्ट भी होने वाले हैं, उनको भी हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आई थिंक बैंड इज रेडी। सेजल,
Now, I would like to call on stage NEN वाधवानी फाउंडेशन से हमारे बीच में हैं डॉक्टर सुजाता एंड संगमित्रा जी. सो प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और आपको जिस कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया जा रहा है वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर ऑफ द ईयर. जोरदार तालियों के बीच मैम का बहुत बहुत स्वागत मैम. इनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर एस कृष्णा सर, आप मंच पर आएँ. अमित सहगल सर, आप भी मंच पर रहिए प्लीज़. जोरदार तालियों के बीच बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू मैम, थैंक यू सर. डॉक्टर सुजाता मैम एंड संगमित्रा मैम, would you like to say something? कुछ आप कहना चाहेंगे? Please come. I take this opportunity to thank Sharda University, IISA, Amit Sehal sir, for inviting us to collect this award in the category of being an entrepreneurial ecosystem enabler. Both of us, myself Sujata and Sangamitra, are from Vadhwani Foundation. A lot of us here would know us by National Entrepreneurship Network. So, we actually enable student startups, entrepreneurs who are part of incubators with a structured program that we offer through our NEN. We are currently working in LATAM, India, African region, SIA, and we are still hoping that we are going to touch lives of more entrepreneurs. Thank you so much for awarding us. This is truly encouraging. I received this award on behalf of my foundation, and thank you Sharda University and IISA. Amit Sehgal sir, thank you so much for giving us this award. Thank you. Thank you everybody. Thank you Sharda University for this opportunity to be here and this privilege that has been given to us. And as Dr. Sujata mentioned, we take this opportunity to accept this award on behalf of Vadhwani Foundation NEN, and we look forward to working with all the student entrepreneurs that are part of this organization, and look forward to have great ventures coming out of it. As you have seen so many different kind of startups and ventures working so successfully, and the MDs and CEOs have given such great talks over here, and we look forward to you also coming up over here, and we are there over here to support you for that. Thank you so much.
Mic on, please. हेलो 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 कीबोर्ड के लिए बोला है एक बार जाओ पीछे जाओ सुफियान मैं वहीं पे बोल रहा हूँ जल्दी हेलो हेलो इसमें आवाज है हेलो 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 जा check one yo check yo check one check sound check check one yo yo check one we need to do a sound check check हेलो हेलो लड़कियों को इन दो माइक्स पे एक वायरलेस अपने पास रख एक वायरलेस साक्षी के लिए इन दोनों को इसको इन दोनों की सेपरेट माइक्स के सेट चेक द माइक्स एंजल तेरी माइक हमें हेलो 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 आज आसमां से आ गई आगे मैं जहां से ये क्या हुआ भैया हाइज बोलो आज आसमां से आ गई थोड़ी आगे सी मैं और, जहां से ये क्या हुआ उड़ी नींदें आँखों से जुड़ी रातें ख्वाबों से मुड़ी ये जाने मैं कहाँ check game हेलो Yes, guys. So I have a request for you. Ask your friends who are sleeping there, relaxing in the hostel, to come and join you,
So we are going to have wonderful performances here. Hello. Hello, hello, check. Hello. Hello, hello. हेलो हेलो ये चाहिए इसके लिए कीबोर्ड के लिए वी नीड सप्लाई फॉर द कीबोर्ड चेक अगर यहाँ पे लीड हो तो वो नहीं चाहिए अच्छा नहीं वो तो वैसे भी चाहिए लेकिन लीड चाहिए हेलो हेलो Check. हेलो मार्विन गे गाओ एक बार मार्विन गे गाओ जल्दी 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 Let's Marvin Gaye get it on. we need more gain on this one Marvin this mic Gaye get it on. one number one Let's Marvin Gaye get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. You've got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. more gain gain Let's Marvin Gaye get it on. Just like they say in the song, until the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on. इसका भी गेन भैया इसका गेन बढ़ा दो और इस वाले का Let's Marvin Gaye and get more it more on. more You've got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Marvin. when you are singing use these mics okay let them use these mics check one Hello, hello, hello. Let's Marvin Gaye and get it on. You've got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. check भैया guitar the guitar is not working
Check, 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 check. Okay, check, check, check. Check one. Check. Yo. माइक चेक. हेलो हेलो हेलो. कंट्रोल रूम थोड़ा सा गेन और बढ़ा दो और थोड़ा सा रिवर्ब. हेलो 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 हेलो. क्या बात क्या बात. So guys, are you ready? नहीं, आवाज नहीं आई मेरे को. आप तैयार हैं सुनने के लिए? बैंड इज रेडी. बैंड का नाम आपको पता है क्या है? नहीं पता? मुझे नहीं पता था तो मैंने उसको नाम दिया शारदा बैंड. लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे पता चला बैंड का नाम है कांडी क्रू. सो प्लीज हम बुलाते हैं उनको. जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं कांडी क्रू का. लव इट. प्लीज वेलकम कांडी क्रू. ये Hello, check, 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 check. Thank you. Best of luck. Thank you, sir. How are you guys feeling today? Good afternoon to everyone. How are you guys? Oh, we have people sleeping in their hostels today. Don't worry. Okay, so hello everyone. My name is Sufyan Roof, aka Abadox. I'm a beatboxer representing Kandi Crew today. It's a band of Sharda University. We have different people with different genres, different musicians, different artists doing different stuff. Okay, we'll be performing a set today. I mean, the set includes various performances. All right, we have the piano, and I'll be doing beatboxing for you guys and a lot of stuff. So, you guys excited for this? Come on, come on. I need some hype. Come on, dude. Woo! Okay.
Okay, so for the first performance from the Gandhi crew, I'd like to call Aryansh on the piano and he'll sing for you guys. Enjoy. Mic check, hello. So the song I'll be singing for you all is called Barishe. मुझको आहों में भर लो ना तुम सुन जरा मेरे पास आ अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमियाँ बारिशें हैं तेरी ही बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमियाँ बारिशें हैं अब तू आती है बुलाती है बिस्तर से यूं गिराती है किस्सों में बाहों में बस तेरी जब बारिशें बरसती हैं पागल जैसे थिरकती हैं तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें हैं तो और तू ही मेरे दिल की रज़ा है तेरे बिना दिल भी खफा है तो तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी तुझे इतना प्यार दूं तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में वार दूं अब बिखरी तेरी ये जुल्फों से आंखें तेरी जब दिखती हैं दिखता है मुझे वो आसमां के खोलूं पंख मैं मेरे उड़ जाऊं मैं खो जाऊं मैं इस आसमां में पतंगों की तरह Thank you so much, everyone. Now I would like to call Sakshi and Angel on the stage, please. सुनो ना कहे क्या सुनो ना दिल मेरा सुनो ना सुन लो जरा तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर तेरी बाहों में होगी सुबह
जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे हाँ बाहों में तेरी आके जहाँ दो यूं सिमटने लगे सैलाब जैसे कोई बहने लगे खोया हूँ मैं आगोश में तू भी कहाँ होश में मखमली रात की होना सुबह बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे झूले मुझे इस कदर बेइंतहा। Thank you. Thank you, everyone. Now I would like to call Raza on the stage. Can we please have Raza? Volume, come. याद तिहारी मोरा मन तड़पाए सारी रहना नींद ना आए याद तिहारी मोरा मन तड़पाए सारी रहना नींद ना आए जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ना सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना जा जा रे अपने मन
கொஞ்சம் நிலவ கொஞ்சம் நிரப்ப ஒன்றா சேர்ந்தால் எந்தம் தேகம் கொஞ்சம் நஞ்ச கொஞ்சம் அமுதம் ஒன்றாக சேர்ந்தால் எந்தம் கண்கள் கொஞ்சம் மிருகம் கொஞ்சம் கடவுள் ஒன்றா சேர்ந்தால் எந்தம் நெஞ்சம் சந்திரலேகா 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 चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा लम्हों को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद ही से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो Thank you. Now would I like to welcome Tenzing, Angel and Nikki for their amazing performance. A huge round of applause for them. Oze as well. I'll take this, no? Hello, hello. Hello, 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 hello. Volume. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. That's Marvin Gaye, get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. Guitar volume. Let's Marvin Gaye and get it on. You've got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got these kinks us to ourselves. You don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourselves. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble. I'd rather be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song.
got to have you, babe. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. So subtle, I'm in trouble, but I'd rather be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You've got the healing that I want, just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Ooh. Thank you. Hello? 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 Found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what
just my sins, to carry love, to carry children born. We're still kids, but we're so fighting against odds. I know we'll be alright. This is time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see the future. With you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite songs. When you said you took Thank you. Check, 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 check. All right. Okay, so let's do hip hop now. All right, something fast. Okay, we have a crazy rapper. All right, his name is D Unknown. Let's call him up. He has 2 of his original songs. All right, he'll be performing original songs for you guys. So let's go, let's go, let's go, let's go. Yo, what's up, Sharda University? My name is D Unknown. Can I have my track, please? Yeah. Hey. Select on the beat. D Unknown. Yeah. Let's go. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. किंज करां तेरी गलबात मैं तां किंज करां तेरी गलबात मैं तां 3, 2, 1 किंज करां तेरी गलबात मैं तां चुप हो गया विक तेरे चेहरे दा नूर साडा दिल खो गया तू आई ना जे मुड़ के मैं मर जावा ना तेरे बाजो चलदे सी मेरे ऐसा कला हाँ मैं फड़ हथ मेरा सोनिए डाल मेरे दिल उत्ते थोड़ी जे निगाह दीवाना तेरे नैन ने जे कीता जट नूं ए जट दा भी दिल कोई कढ ले गया दीवाना तेरे नैन ने जे कीता जट नूं ए जट दा भी दिल कोई कढ ले गया किंज करां तेरी गलबात मैं तां चुप हो गया विक तेरे चेहरे दा नूर साडा दिल खो गया देखो तेरी आंखों को उनमें है गहरा समंदर में डूब गया हूँ लगे मैं बीमार था दुनिया से सच बोलूं तो इससे उब गया हूँ मिसाल है बोली कि तेरी आवाज में सूरज खुद में वो गीत तू जीत है जीत निशानी में हार ना चाहूँ ना मिटा मैं छूट गया हूँ न रातों में नींद न दिन में है चैन क्या मुझे प्यार हुआ है कलम में है नूर ये कैसा हुजूर क्या फिर इकरार हुआ है मैं जानता ना किस बीट पे है दिल का गाना ये नया फसाना क्या मैं जीत में हार और हार के जीता ये खेल करार हुआ है ये खेल करार हुआ है दीवाना दीवाना तेरे नैन ने जे कीता जट नूं ए जट दा भी दिल कोई कढ ले गया दीवाना तेरे नैन ने जे कीता जट नूं ए जट दा भी दिल कोई कढ ले गया किंज करां तेरी गलबात मैं तां चुप हो गया
विक तेरे चेहरे दा नूर साडा दिल खो गया किंज करा तेरी गलबात मैं तां चुप हो गया विक तेरे चेहरे दा नूर साडा दिल खो गया दिल खो And there is another song I wrote to encourage startups, as we are here for the startups, right? So I recorded this song yesterday only. So I just made that song yesterday. Can I have my track too, please? जो करता बातें मुझे कहने दो ना बनाई लहरें उनमें बहने दो ना जो बातों में है समुंदर सारा लगे आए इतने ऊपर बैठे रहने दो ना जो करता बातें मुझे कहने दो ना बनाई लहरें इनमें बहने दो ना अब तो हाथों में है समुंदर सारा लगे आए इतने ऊपर बैठे रहने दो ना मैं जो आज ये खुश हूँ मेहनत सालों की उनके ख्यालों की सब कैसे खालों की यारों के साथ में खड़े घर वालों की यार मेरी बात में दम जो मैं मेरे काम की मेहनत दाम की सम्मान की खड़ा किया खुद से जो पूरे ब्रह्मांड की और मेरे थोड़े सपने अलग थे तो लगते गलत थे जमाने को काफी अब हम लड़के फलक पे तो नाम निकाल के मांगते माफी अब मैं ध्यान न देता कुछ किसी से न कहता अभी जाना काफी दूर है नौकरी के चाहूँ न नोट 1000 खुद के तो 100 मंजूर है आया हूँ नहीं आए हैं साथ ही अरब ले भी काफी है न जाना मुझे जॉब 9 से 5 लगे मेरे लिए ना इंसाफी है आया हूँ नहीं आए हैं साथ ही अरब ले भी काफी है न जाना मुझे 9 से 5 लगे मुझे जैसे ना इंसाफी है जो करता बातें मुझे कहने दो ना बनाई बहने दो ना अब तो हाथों में है समुंदर सारा लड़के आए इतने ऊपर बैठे रहने दो ना जब करता बातें मुझे कहने दो ना बनाई लहरें इनमें बहने दो ना अब तो हाथों में है समुंदर सारा लड़के आए इतने ऊपर बैठे रहने दो ना हवाओं में है थोड़ा सुकून न कुछ है दम न कोई होती फिक्र खोलता अब भी खून बस फर्क है होता खुशी से निकल मेरी बातें होती जिधर फक्र से जाते हैं यार और प्यार हर दिन होता त्योहार क्योंकि कल चुके किल माजा कुछ घर बार कई प्रकार की देखी हालात मैंने हर बात किया वो वादा तो पूरा जो काम से नशे में गई थी याद समाचार में काम किए पूरी दुनिया से बोले थे जो काम चार बैठे घंटों में घंटे भर से लेके हम तक पूरे डर चार यार Thank you so much, Sharda University. My name is The Unknown, and this first song called Galbaat is releasing in the last week of this month, that means July. Thank you so much. This was me, Abhishek. Thank you so much, guys. Sure. So, are you guys ready for the guest, XZ? Are you guys ready for XZ? Can I have a cheer for XZ right here, guys? So, we are welcoming XZ, MTV Hustle fame, female rapper. She's brilliant, she's crazy, she got the dope flows, she got the dope lyrics. So, can I have XZ on the stage right now? Can I have cheer for XZ, guys? Guys, a huge round of applause for XZ.
Okay, so here's the issue. XZ is not prepared yet. But आप लोगों ने बचपन में रेडियो तो सुनी होगी, राइट? रेडियो में खुर्राफाती नितिन को किसी ने सुना है? So we have from 92.7 Big FM, खुर्राफाती नितिन. Can I have a huge round of applause? Can I have cheers for खुर्राफाती नितिन? Welcome, sir. अच्छा लगा बुढ़ापे का एहसास दिला के. उन्होंने कहा आप सबने बचपन में सुना होगा इनको. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील ओल्ड. तो मेरा नाम है खुर्राफाती नितिन. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर बुलाने के लिए. कितने लोग हैं यहाँ पर जो शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? बॉस, यू गाइज आर सो लकी. पता है मैंने बहुत बारी एड सुनी थी, द वर्ल्ड इज एट शारदा, ऐसे बोलते रहते हैं. आज मैं पहली बार आपके गेट में एंटर हुआ. मुझे लगा हाँ गेट है, ठीक है. आई वॉकड इन, मतलब आई डिडंट वॉक इन, आई ड्रोव इन. आई वॉज इन ऑ. आपको पता है वो गार्ड ने मुझे बोला चलो आगे चलो, क्योंकि मैंने गाड़ी रोक दी. आई वॉज ऑ स्ट्रक. इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है आपकी. एक बार जोरदार तालियां शारदा यूनिवर्सिटी के लिए. सीरियसली मैन, मतलब मुझे आज एक्चुअली, मेरे को नॉर्मली लोगों से जेलसी नहीं होती, मुझे आज आपसे जलन हो रही है कि मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ा, मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा. बट बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए. और मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने सुन लिया था कि एक्सी के लिए ज़्यादा चीयरिंग हो रही थी, मेरे लिए कम. तो ऑब्वियसली आपको उससे मिलना, मुझसे नहीं. बट मैं सुबह 7 से 11 आता हूँ 92.7 बिग एफएम पर एक शो लेकर जिसका नाम है दिल्ली तड़का मार के. और वहाँ पर हम कई बातें करते रहते हैं. हाल ही में हमने एक कैंपेन करी कि दिल्ली के धाकड़ कहते हैं हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट है. हैशटैग मेरा घर हरा घर. आपको बोलने का फायदा नहीं, क्योंकि आपकी मैंने देखा यूनिवर्सिटी पहली बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत सारे पौधे लगे हुए, बहुत अच्छी बात है. पर आप भी जब घर पे जाएं तो मेक श्योर कि आप पौधे घर पे लगाएं, ठीक है? धनिया पुदीना के अलावा भी कुछ लगाएं, यानी कि चटनी का सामान ही उगा रहे हैं सारे के सारे लोग. पर ऐसी चीज़ें हम करते रहते हैं. तो सुबह 7 से 11 जरूर सुनिएगा. एंड वही गाने लगाते हैं जो आप अपने साथ जो है गुनगुना पाएँ. टाइमलेस म्यूजिक हम उसे बोलते हैं. तो दैट्स ऑल दैट आई केम हियर फॉर. और मुझे लगा कि एक्सी के आने से पहले ही आपसे मिल लेता हूँ, क्योंकि बाद में मैं आऊँगा तो आप बोलोगे भू उतरो स्टेज से हैं, एक्सी परफॉर्म करने दो. बट एक बार मैं चाहता हूँ आप जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाएं जो यहाँ पे परफॉर्म करके गए हैं. व्हाट टैलेंट है, मजा आ गया. और वहाँ 6 लोग जो बैठे थे अपने मोबाइल हिला रहे थे लाइट ऑन करके, उनके लिए भी तालियां बजाएं. और पीछे मिल्क शेक पड़ा, आप सब पी के जाइएगा, आपकी काफी एनर्जी वेस्ट हो गई. बट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर. और मिलेंगे सुबह 7 बजे ऑन 92.7 बिग एफएम. मैं हूं खुर्राफाती नितिन. गॉड ब्लेस. मुझे भी किसी को इंट्रोड्यूस करना है? अच्छा, 3 से 4 लोग को मैं फेलिसिटेट करूंगा. अच्छा, मैं दूंगा. मुझे लगा मुझे इनाम दे रहे हैं, मैंने आज इनाम बांटने हैं. अच्छा, तनख्वाह से पैसे तो नहीं कटेंगे ना? हमारी रीजनल प्रोग्रामिंग हेड भी आई है, पता लगा उनके साथ को मांडवाली कर रखी है. हम इनाम दे रहे हैं, पैसे इनके काट देना आप. आइए, बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा मौसम है बाहर, बहुत बारिश हो रही है. बारिश होते ही जैम लग जाते हैं. ब्रेड लेके बाहर जाइएगा, सैंडविच बनाइएगा जैम के साथ. मैं गुड़गांव से आया हूँ, बहुत ज़्यादा जैम था. कितने लोग हैं जो अभी ड्राइव करके यहाँ पे पहुँचे हैं? आप? अरे वाह, कोई गुड़गांव से आया है? मैं गाड़ी यहीं खड़ी कर रहा हूँ, मुझे ड्रॉप कर देना प्लीज़ वापस. मेरे बस की ना है, या मेरी बांध लो पीछे गाड़ी आप. बट हाँ, बट ऑनेस्टली यूनिवर्सिटी का नाम बदल दो. शारदा यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग जो है SITY नहीं CITY होना चाहिए. तुम्हारे यहाँ बसें भी चलती हैं अंदर? बसें अपनी खुद की बसें हैं ना? क्या बात है भाई साहब, चाहिए होंगी बसें, तो चाहिए होंगी. सीरियसली मैन, मतलब मेरे जैसे इंसान आ जाए तो यहाँ पे उसका वजन ही घट जाए 2 दिन में. आज यहाँ क्लास है, आज वहाँ क्लास है, परसों दिख ही नहीं रहा, वजन कम हो गया. ये क्या था? किसी बात के लिए चेयरिंग हुई है, ठीक है. मेरे वजन घटने में क्या बात है सर, थैंक यू. और ये सर कौन है? सर आपका नाम क्या है? ये तो डायरेक्टर साहब है ना, अमित जी. ये बहुत ही खूबसूरत इंसान है, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में. आपको पता है इतना सुंदर ऑडिटोरियम. अबे मैं जबरदस्ती टाइम काट रहा हूँ, कोई आएगा बताएगा मैंने करना क्या है, कौन किसको फैसिलिटेट करना था. माइक पकड़ा के चल गए ना. मुझे बीट बॉक्सिंग आती कि मैं बीट बॉक्सिंग कर लूँ थोड़ी देर. मैं आपको बता सकता हूँ कि मूंछों में जैतून का तेल लगाना चाहिए, ज़्यादा अच्छी उगती है. मेरी माँ मुझे आज बोल रही थी कि थोड़ी सी और लंबी हो गई ना, हम इसमें तोरे ही लगाएंगे.
हाँ ठीक है, बढ़िया है, वेरी नाइस। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? Okay. हाँ जी, अरे वाह। या तो आप दाढ़ी मेरे पे चिपका दो या मेरी मूंछ अपने पे चिपका लो, फिर सही लगेगा। नहीं, किस लिए? माइक मेरा है, मैं क्यों दूंगा आपको? कमाल कर रहे हो। एक तो पैसे नहीं दिया आपने आने के हैं, ऊपर से माइक भी ले लो आप। बोले भाई इसको भी जरा थोड़ा सा हम भी बोल लेते हैं। अरे वाह। ये आप एक बात बताओ, आपने हाथ पॉकेट में रख के बात की शुरू की, अभी भी हाथ अंदर है? कुछ सब छुपाना होता है ना सर, दिख जाता है। बच्चे बैठे हैं, दिख जाता है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा जी, मैं बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ, जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीश है सर। मुनीश जी को याद रखिएगा, उन्होंने ऐसी बातें करी हैं, प्लीज वायरल कीजिए इनको। मैं सर की बात बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने ऐसी बात करी है, और बोलिएगा नितिन साहब जो है बड़े डिसेंट आदमी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था। मैं अभी बता रहा हूँ, सर कह रहे थे कि बचपन से सुना है, हमने बचपन से सुना है। और अबे आपने कहाँ से बचपन से सुनी है? सर जब हमारी दाढ़ी मूंछ नहीं आपके बचपन में तो मेरे बाप ने मुझे प्लान भी नहीं किया था। तब हमारी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, तब उल्टा पलटा नहीं आता था। अरे क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। अरे वाह, क्या खाते हैं बता दो सर। खाने पे ही तो सारा जोर है, कमाल कर रहे हो आप। ये तो रविंदर बाजी सुन रहे हैं, क्या खाते हो? अगली बार वही स्पॉन्सर करेंगे वो। सर क्रैश कोर्स मत बोलो आप, अभी 2 बारी गाड़ी बची है बड़ी मुश्किल से मेरी रास्ते में। पाजी तड़ दो बड़ी अलग ही चलती लगता है। सानू। वो जो बंदे चल रहे थे गाड़ी में, वो उन्होंने क्रैश कोर्स कर रखा था, बड़ी मुश्किल से बच गया। आपको बताऊं बलविंदर पाजी की बात? बलविंदर पाजी, हाँ जी। इनकी बात यह है कि जिनसे इतनी जेलसी जिस भी अवार्ड में आते हैं, हम पीछे खड़े रहते हैं, सारी उड़न के पास आती हैं। क्या बात। देख लो अब भी देख लो कैसे बैठे हैं। पाजी तनु देख के याद आ गया कि माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा किशमिश में आ रहा है। वाह। तो मैं श्याम अली जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। किसको बुला रहे हैं हम? श्याम अली जी को। आइए सर। श्याम अली जी प्लीज मंच पर आए। नितिन जी जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई, प्लीज। फ्री मैंगो शेक मिल रहा है आज सबको, चलो। ओहो, अभी मिला सर थोड़ी देर पहले, गोपाल 56 का मैंगो शेक ही मिला है। अच्छा, उन्होंने क्या वो सिर्फ लंच में मैंगो शेक कौन देता समझ नहीं आया। वेलकम, वेलकम टू द स्टेज। आइए, हमने भी माइक के पैसे नहीं दिए, आपने भी नहीं दिया, आप भी बोलिए कुछ। पर उनको भी नहीं पैसे। आप अपना माइक दो। एक क्वेश्चन है आपसे। एक क्वेश्चन, हाँ जी हुकुम। खुराफाती क्यों? खुराफाती, एक्चुअली खुराफाती इज अ टाइटल दैट माय मॉम गिव मी। तो बचपन से मुझे बोलती थी कि बड़ा खुराफाती है, तो मुझे उस टाइम पे लगता था मेरी बड़ी इज्जत अफजाई हो रही है। मेरी माँ कह रही खुराफाती, वाओ। आई थॉट कोई बड़ा अलग टाइटल है कि सारे बच्चे यहाँ और मेरा बच्चा वहाँ। फिर बाद में बड़े होकर समझ आया शी मेंट ही इज अ नोटोरियस किड, बट देन आई जस्ट थॉट कि अपने नाम के साथ जोड़ ही लेते हैं, बिकॉज आई वाज द वन हु स्टार्टेड प्लेइंग प्रैंक्स ऑन रेडियो। तो इंडिया में जो प्रैंक कॉल शुरू हुए थे, सबसे पहले मैंने शुरू किए थे, तो मुझे लगा कि अब हाँ जी आपने भी शुरू किए थे। अच्छा, आपके ऊपर प्रैंक किया था मैंने? अच्छा, हाउ स्वीट मैम। मैम आपकी साड़ी बड़ी खूबसूरत है, एक बारी खड़े होकर दिखाएं आप। खड़े हो जाइए आप एक बारी, खड़े हो जाइए आप एक बारी, कमाल कर रहे हैं। एक बारी सामने आए हो, वाह क्या बात है, जोरदार तालियां इनकी साड़ी के लिए। और इमेजिन करो मैं कितना अच्छा आदमी, मुझे पैसे बिल्कुल नहीं मिले इस इवेंट के लिए, मैं अपनी तरफ से सबकी तारीफें कर रहा हूँ। हाँ जी मैम, सो दैट इज वाई खुराफाती। माई खुराफात फॉर टुडे इज दैट ऑल ऑफ यू डोंट नो, बट जितने लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, हमने ताला लगा दिया, 100 रुपए के दिए बिना आप बाहर नहीं जा सकते। तो इन्होंने कहा था इवेंट के पैसे नहीं मिलेंगे, मैंने कहा मैं इकट्ठे कर लूंगा, तुम मेरे पे छोड़ दो। तुम बाहर जाके दिखाओ बेटे। अब बच्चे खुश हैं, कह रहे अच्छा क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ेगी, यहीं बैठेंगे। थैंक यू सर। आइए, पौधे आ चुके हैं, धनिया पुदीना सब है इसमें, और साथ में शिकंजी मसाला भी है। अरे वाह, मैंने सुना था जैन शिकंजी वाले आने वाले, आए वो कहाँ हैं? अरे सर बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई जैन शिकंजी की तरफ जाए, लोग जाते हैं जैन शिकंजी मतलब शिकंजी पीने के लिए, आप वहाँ छोले भटूरे और पनीर पकौड़ा जरूर खाएं, और बाहर निकल के नान खटाई के डब्बे लें। सही कहा मैंने? अगली बार आऊँ पैसे मत लेना मुझसे, इतनी तारीफ कर दी मैंने। यस सर, और आपके लिए भी है सर। सर आप ही का, सर सब आप ही का। जोरदार तालियां प्लीज। सो नेक्स्ट अवॉर्डी इज डॉक्टर संजय कुरकुते, सीईओ स्वामी इंजीनियरिंग एंड एंटरप्राइजेस, और जिस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिल रहा है वो है फैकल्टी स्टार्टअप ऑफ द ईयर। जोरदार तालियां प्लीज।
Next is Simi Sood ma'am. Please come. जोरदार तालियां please. Woo! आपके लिए भी है. आइए मैम प्लीज. और नितिन सर की थाली में हाथ लगाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हरविंदर कुमार मनकर सर. प्लीज आप आइए. डॉक्टर एस के कृष्णा सर प्लीज आप स्टेज पर आइए सर. एंड वाणी मैम. डॉक्टर एस के कृष्णा सर प्लीज कम. नितिन सर वाला का है? जोरदार तालियां प्लीज. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. सर एक छोटा सा संदेश जो हमारे एसएमएफई के स्टूडेंट्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आरजे बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको देखकर बड़े हो रहे हैं, आरजे की दुनिया में काम कर रहे हैं. अब तुम्हें बार बार बोलना बंद करोगे? तुम्हें देख के बड़े हो रहे हैं. मतलब हाँ वैसे बात तो सही है. मतलब तुम में से कहीं के पिताजी माताजी जो मेरे जितने ही होंगे शायद. बट मेरा बस यही संदेश है कि अ लॉट ऑफ पीपल यू नो हु वांट टू कम इनटू द रेडियो इंडस्ट्री, पहली बात तो उनको लगता है कि बस हमें रेडियो में जाना है, आरजे बनना है. एक बात तो ये कि आरजे के अलावा भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं वहाँ पे, करेक्ट. एक और बात है कि अगर आपको आरजे बनना भी है तो आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा. अब आप देखिए दिल्ली में कितने रेडियो स्टेशन है, अगर आप हर रेडियो स्टेशन में भी 4 से 5 रेडियो जॉकी लगा लें तो उतनी, लेट्स से कि अगर 8 रेडियो स्टेशन है मेन राइट, तो 40 रेडियो जॉकी, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो थोड़ा पेशेंट होकर आइए अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं. अंदर घुसिए, प्रोड्यूसर बन जाइए, कंटेंट डेवलप करने के लिए कोई स्क्रिप्ट राइटर वगैरह जैसे होते हैं हमारे पास, कॉपी राइटर्स होते हैं, तो वो बन जाइए. मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, सेल्स में आ जाइए, कुछ भी कीजिए लेकिन किसी की तार मत तोड़िए, सॉरी. हाँ, पर पॉइंट ये कि आइए, ऑब्जर्व कीजिए. कई बार होता है ना दूर के डोल सुहाने. कई बार ऐसे होता है कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, तो बड़ा बोरिंग है. यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि रेडियो जॉकीज ने खूब सारे गाने लगा रहे हैं, एंड व्हेन यू पिक्चराइज अस तो आपको लगता है कि हेडफोन लगा के एकदम साइकेडेलिक म्यूजिक चल रहा है और लाइटें जल रही, झिक 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 झिक. ऐसा कुछ नहीं होता है. आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने अपने शो का पूरा गाना कब सुना था, क्योंकि जब गाना चल रहा होता है उस दौरान हम ये सोच रहे थे कि आगे क्या बोलना है. जितने भी लोग कॉल कर रहे होते हैं उनसे बात करनी होती है, कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे होते लोग उनसे बात करनी होती है, अथॉरिटी से कनेक्ट कर रहे होते, तो इट्स मेहम. अगर आप आके कभी देखेंगे इंशाल्लाह जब हमारे स्टूडियो खोलेंगे, आजकल तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं शारदा यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट को इनवाइट करता हूँ, जितने भी लोग आना चाहते हैं आप आइएगा ज़रूर. आई शो यू द स्टूडियो. तो एक बार आके देखिएगा, हो सकता है आपका जो है रवैया रेडियो की तरफ थोड़ा बदले. लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि बहुत सारे मीडियम्स आए हैं. कई लोग कहते हैं कि अब जो है हमने बहुत नेसेंट स्टेजेस में रखा हुआ है, इसके साथ हम बहुत कुछ और कर सकते हैं. तो आने वाले टाइम में देखिएगा रेडियो विल रूल, मैं तो कहूँगा ही. थैंक यू. गगन जी आइए, माइक ले लीजिए. गगन जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाइए. आई थिंक आपका कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं राइट? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. मैं जाऊँ? Radio rules. One of the reason I love radio, you don't get specs with that. Yeah, watching too much of it. So my name is Shamli Rathor. I am also a partner with Sharda University in Zambia. So we basically bring a lot of students from Africa to India in Sharda University. And I'm very glad to be here, and I just heard about the Sharda incubation program. So please, Sharda University, please give your big hand for Sharda University. Guys, you can do better than that. How's the Josh? Sharda University, guys, how's your Josh? High, okay. How high? Okay. So
what I liked about what Nitin just said about the Sharda University, when I was coming down here, we have a lot of adults here. How many of you would agree that you want to go back to studies, looking at the campus? You have a cool campus, guys. Our universities didn't look like this. So we are here about to talk about the startups. So, you know, earlier the university was like, yeah, you would become an engineer, doctor, or you would go back for a job, for an IS or something. But today we are talking about not the job seekers. We are talking about people who are going to provide the jobs. So startups are just not about, you know, making money or getting somebody's money. It's about making an impact in the society, where you're just not creating the job, you're just also talking about where you could be giver to the environment, you could be, you know, doing something which is sustainable for the environment. So I work for sustainable organizations. So I work with a lot of brands like Zara and Sephora to, you know, guide them how to make their products which are sustainable. So I just heard about from your director how they're helping, you know, Sharda students with the startup. They provide a lot of facilities here, and they have an incubation program. So really, one more round of applause for Sharda University here. And I'm glad to know about Sharda Filmmaking Institute also. It's really something amazing, and we're already looking at the tie-up in Zambia and other parts of Africa for Sharda Filmmaking Universities also there. Okay, anybody from here who would want to take the mic from me, because I'll keep speaking otherwise. Thank you so much for having me here. So, Sharda, are you guys ready for some beatboxing? Are you guys ready for some beatboxing? Let me call upon stage Sufyan for the beatboxing. Let's go, guys. Sound check. Let's go, let's go. Check, 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 sound check. Check, check, check. Okay. Hi everyone. I already introduced myself earlier, but let me give you a quick introduction of myself. My name is Sufyan Rauf, aka Abadox. I'm a beatboxer. I've been beatboxing for more than 8 years now. I'm the founder of Kashmir Beatbox Community and one of the founders of North Beatbox Community. I'll just beatbox for you guys. But before that, let me ask you guys a question. How many of you know what beatboxing is? Anyone? Alright, we have a definition of beatboxing, alright. Beatboxing is the art of mimicking drum sounds. But, you know, it's a very old definition of beatboxing. Today, alright, looking at the current beatboxing scene, it's not just drums. You can imitate any sound with the help of your mouth, alright. If we talk about old school beatboxing, it was but, you know, beatboxing evolved with time, alright? So today you can, you know, alright, I'll do a quick performance for you guys. I hope you guys like it.
What? All right, I'll do a routine for you guys. Game of Thrones किसने देखा है? A lot of Game of Thrones fans here. Okay, we'll do the theme song. All right. Okay, we'll just do. I'll do 13 sounds, all right, and we'll try to, increase the speed of the beatboxing. The sounds are, listen. That's 13 sounds. All right, all together. Okay, what if someone sings Indian classical music and I beatbox to it? Would that be crazy for you guys? Let me call upon Sakshi. Sakshi, let's go. All right. All right. They want me to perform more. Don't worry about it. Okay. Let's repeat a set, all right? Let's do something else. One of my tracks. This sound actually is called inward bass, all right? I'll teach you about a sound. When I started beatboxing, all right, I started with 3 sounds. I mean, every beatboxer who starts beatboxing, they're not like pro in the beginning, all right? They start with 3 sounds. I'll teach you the 3 sounds. You won't be able to do it right away, but I'll just give you an idea. The 3 sounds are B, T, K. Sounds are represented by alphabets, all right? So the sound B is P, the sound T is T, and the sound K is the snare. All right, so it's all right. So if you want to start beatboxing, these are the 3 sounds you want to, learn in the beginning. So I'll make a pro beat with just these 3 sounds. All right, just using. Okay.
Whoa, whoa. You know how I feel. Whoa, whoa. Sun in the sky. Whoa, whoa. You know how I feel. Whoa, whoa. And I'm feeling good. Okay, the favorite one. I know you guys liked it. I've performed it before. Let's go. Yes. Okay, listen. Oh, mama pendeu, mama pendeu, mama pendeu. Padama sambhava, padama sambhava, padama sambhava, padama sambhava. Hum Dalai Lama, hum Dalai Lama, hum Dalai Lama. Lama tashitale, lama tashitale, lama tashitale, lama tashitale. What? Okay, Sakshi, get on the stage. Get on the stage. Can we have Sakshi on the stage? Where's Sakshi? Where's Sakshi? Sakshi on the stage. All right. Thank you, guys. Thank you so much. Wow. So he was looking for Sakshi, but he got Dr. Munish Jindal as a present. So thank you so much. I hope you all enjoying the show. So we would love to have our wonderful Khurafati, Nitin Khurafati, my big brother from another mother. We know each other from since age 6-7 years. We used to meet at 3 Pegs Down, if you remember, Saket. Yes, see? But I don't drink, guys, but he's a dear friend, and it would be a privilege for me to honor him on the stage. I would love to have Nitin Khurafati on the stage, as well as I would like to have Dr. Krishna Kumarji on the stage, please, to facilitate my big brother, Nitin Khurafati. Bhai, how are you? I also just want to say thank you to all of you for inviting me here. यहाँ पर बहुत सारे दिग्गज लोग आए हैं. अभी मैंने जैन शिकंजी का नाम लिया. एक और मुझे अभी एपिसोड मैंने इनको देखा, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैंने आपका एपिसोड एक बार खड़े होकर दिखाइए. ये लेट्स ट्राई आपने देखा होगा, नमकीन वगैरह बनाते हैं, और ये शार्क टैंक वाले लोग इनके दीवाने हो चुके थे. एंड आई थिंक इंश्योरेंस समाधान वाले भी आए आज. अरे I love the idea. I think ये वही है ना जहाँ पर अगर आपको कोई क्लेम में दिक्कत है, कुछ है, then you can approach you guys and get all the help that you want. क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां. कितना बढ़िया काम हो रहा है हमारे देश में. तो इंश्योरेंस समाधान और लेट्स ट्राई, इनको भी ट्राई कीजिएगा दोनों को. आई थिंक बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं. जैन शिकंजी तो हैं ही. फैंटास्टिक. थैंक यू. Now I call on stage Surakshna ji from 92.7 Big FM. Please, Surakshna ji. देखो थोड़ा तालियां बजाते रहना चाहिए.
I would love to have Mr. Nitesh Chauhan, who is the Managing Director of Mellowcare Wellness, Green Park, New Delhi, which is an anti-aging clinic of its kind, providing various tech-based and innovative solutions for aging and a published research scholar. It's an honor to honor you, Mr. Nitesh Chauhan. Now I would like to have Mr. Pushp Nagpal, who is the founder and director of Campo Royal Thenolti, preferred destination for leisure and holidays, a very dynamic and young professional who is much enthusiastic and passionate about his work. We would love to honor him. Now I would like to have Professor Dr. Aruna Anchalji. She is the Dean and Head of Department of Education, Baba Mastnath University, Asthal Bohar, Rohtak, Haryana. Wow. She's a doctorate in education with more than 2 decades of teaching experience in education and research, and we would love to honor her as the Academician of the Year. Thank you so much, ma'am. A huge round of applause, guys. Thank you. Next, I would love to have Dr. Manju Gupta. She is having 21 years of rich multicultural experience with education industry, strong credentials in rolling out innovative teaching methods, business strategies, and operational excellence. She is the MD of Port 8 and CEO of Global Group. She's been conferred with Aspiring Startup of the Year. Thank you so much. Next, we would like to have Ms. Shreya Kansal on the stage. She is an entrepreneur and international certified yoga teacher who's with 10 plus years of experience working with Ministry of Ayush, many NGOs and Noida Traffic Police. Today, we would like to honor her with the best corporate yoga trainer. She's the mentor with Shreya's Den. So we have here Mr. Vinash Bhaskar Chhate, the future ABC trainers and consultants, and on his behalf we have Mr. Sharad Munde to receive this award. Mr. Sharad Munde. No, it's on in the name of.
Huge round of applause. Thank you so much. Next, we have Dr. Arvind Dhingra. He is a faculty in Electrical Engineering Department, Guru Nanak Dev Engineering College, the most prestigious college and deemed university in Ludhiana. Is a member of various professional bodies with IE, ISTE, Triple IE, and IEEE. Wow! A huge round of applause for such acclaimed academician on the stage. We would love to honor you, sir. Next, we would like to honor Science and Technology Entrepreneurs Park, Guru Nanak Dev Engineering College. It's a wonderful incubation center incepted in Ludhiana. STP GNDC has been nurturing the young technocrats to become entrepreneurs since 1986. Agri-based manufacturing startups and software development startups have graduated from STEP TBI. Would love to honor them with the Best Incubation Center of the Year. Guys, huge round of applause. Sir. Ravinder sir, please. Next, we would like to honor Manisha Kaushik ma'am. She is Dr. Manisha Kaushik, and it's a privilege for me to read out her intro. She's the director, Semco Solutions India Private Limited. She's a genetic engineer, gold medalist, microbiologist, first generation business entrepreneur, PhD in management, TEDx speaker, global woman empowerer. Thank you so much, ma'am. It's indeed a privilege for us to confer the Women Entrepreneur of the Year award upon you. The Women Entrepreneur of the Year 2022, guys, huge round of applause. Okay, I would like to welcome Ms. Shilpi Sharma ma'am, founder of LinguaBiz India. It is a leading translation agency of India in New Delhi. She has done education in arts from Rajasthan University. She has around 19 years of experience in management and service industry also. She started her journey at a very young age, working with some of the reputed government organizations and also with almost all the major big and also with the almost big brands such as Indian Institute of Company Secretaries of India, CBGA. Some of her major clients are TVS, Metronics, Jagran, Pehle Mamta Child, and Mother Care, Medanta Hospital, Genesis, Maruti, Bajaj International, and etc. So please welcome Ms. Shilpi Sharma ma'am to honor us with her kind words. Next, we would like to honor Miss Bhavna Mittal. Bhavna Mittal is a life coach, a new age alternative healer and teacher, humanitarian philanthropist in Delhi, and a certified soul teacher and Tao communicator from Dr. Master G. Zhang Shao Tao Academy in Toronto. It's a privilege to honor you on the stage, ma'am, with the Social Entrepreneur of the Year 2022. Huge round of applause for Miss Bhavna Mittal. Next, we have Miss Arushi Chug. She is currently working on a technology that enables one to engineer an inner transformation for self-empowerment and personal growth. We have wonderful Arushi Chug ma'am here.
And I have a wonderful announcement in between. We have Exie from the MTV. She's just going to perform in few minutes. Few minutes means it could be few seconds as well. Next we have Sheshadripuram First Grade College. Sheshadripuram First Grade College from Yelanka, Newtown, Bangalore is committed to high standards of academic excellence through value-based education with the primary objective of education to create dynamic leaders in the corporate sector as entrepreneur, academician, researchers, and professionals. So we have Dr. Professor Shantanu Das from Sheshadripuram First Grade College to receive this prestigious award. Guys, huge round of applause for Dr. Shantanu Das. He's been conferred with wonderful award with the Best EduTech and Social Impact Institution of the Year. Thank you so much. We have Mr. Rahul Singh from Chandigarh, CEO, Tarunam Private Limited. The Kunj, the project works on increasing the farmer income. They also have a farm to fork supply chain for fresh fruits and vegetables. It's an honor and a privilege to honor you on the stage, sir. We have wonderful Priyanka Sachdeva ma'am among us, and it's a privilege that she's among us, and we would love to honor her. Thank you so much, Priyanka ma'am. Now we have wonderful Professor Dr. Shantanu Das. He is the head of Department of Biotechnology at Sheshadripuram First Grade College and Secretary of North Bangalore Science Forum, First Kalam Library in South India. He is a walking scientist, as I always call him, and he's very dear to me, and we are privileged that he's among us. We are conferring the Innovator of the Year in Biotechnology, Solid Waste Management, and Green Energy. Guys, please huge round of applause for Professor Dr. Shantanu Das. We have Miss Nidhi Bansal. She's certified yoga practitioner, is the chairperson of Council of Poets and Authors, Mentrix Women, and founder of Let Urja Talk, and also director of Litero Fashionate magazine. We are privileged that she is among us. Thank you so much, ma'am.
We have Dr. DT Deepika Bhatia, CEO Adan Healthcare, Director BE Healthy, and founder of Aas Ek Prayas NGO, working for cancer awareness, and international chairperson, Food and Nutrition, Mentrix Women Delhi. It would be our privilege to honor Dr. Dietitian Deepika Bhatia on the stage. Can we have Miss Yojana Jain on the stage? We would love to honor her as our special guest today. Cholo. Can we have Miss Varsha Jain? Varsha Jain is the international jewelry designer, founder and CEO of Myavika Jewels, and chairperson of International Council of Jewelry Design Mentrix Women Delhi. And it's indeed a privilege for such inspiring women for being present in between us. Ma'am, it's an honor to honor you. Can we have Miss Aina Gupta is the founder and managing director of Maitri, 5-star PG accommodations for girls, New Delhi, an established entrepreneur with 3 leading accommodation estates for girls in Delhi. She's been conferred with Most Inspiring Entrepreneur of the Year 2022. Huge round of applause. After that, can we have Miss Jyoti Sharma? Miss Jyoti Sharma, an IIM alumna, is dedicated math educator and founder of Offline Center JSS Class, running a YouTube channel for youth skill development. She's been conferred as the Academician of the Year 2022, and we are privileged that she's among us, and see her beauty that she brought her mother along with as she's getting awarded. So it's a privilege to honor you, ma'am. Jyoti Sharma, ma'am. Huge round of applause. We have Kanika Chawla Mangas, founder, director, and mentor of Popsicles and Early Learning Center, passionate to bring change in our traditional learning and parenting styles. She is being conferred with the Holistic
Early Child Development Educationist of the year 2022. It's a privilege for us. Guys, huge round of applause for Miss Kanika Chawla. XE is coming on the stage, guys, and we're going to have some mesmerizing performances from XE. Hopefully I'm good. It's the first time I'm anchoring the show. Oh, thank you, thank you, thank you. So, few round of applauses for me as well. Thank you so much. So you don't have to wait any longer. We have wonderful, mesmerizing XE from the MTV, and she's going to perform among us and mesmerize us with her performance. Who all are excited to see her? I'm not feeling the energies. How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? That's the way it should be. And after XE, do you know whom we have? We have Shark Tank fames among us. And you know, your excitement, your thrill, suspense is going to be at the next level with the Shark Tanks. Soon after XE, we're going to have Shark Tanks with us. So stay tuned with us and keep guiding me also, yaar. कि और क्या करना है आगे? तालियां ही बजा दो, जोर से थोड़ा. अरे मेरे को पेमेंट कौन देगा वैसे? काम तो मेरा हो रहा है. देखो अब ऑर्गेनाइजर भी देख रहे हैं, पेमेंट के टाइम पे ना सारे गायब हो गए हैं. So excited? Great. ये कौन सी लिफ्ट से आ रही है सर? एक्जी मैम इधर से आ रही है. We have XE ma'am coming on the stage. Guys, let's have a huge round of applause. There we go. Countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yeah. There we have wonderful XE with us, mesmerizing us with her aura and the charm. There you go. The stage is all yours, XE. Behind you. Thank you so much. Sharda University, how are you? Thank you so much for having me. This is Iisa Awards, this is XE, and I'm super stoked to perform for you today. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सुबह से मेरा वेट हो रहा है, and Sharda is super excited to have me, but I'm more excited to be here. So who's ready for the set? Who's ready to hear some rap? Great. So I've kept the set very crisp. The first song is औरत. MTV Hustle पे मैंने ये पहला rap perform किया था अपना audition पे. This is my first Hindi rap that I ever did, for which I got my first performance award as well, music award, and I'm super blessed. This is for all the women who are doing something in their lives about women empowerment. Let's go. Play Anant. कहूँ अब क्या है सच क्या है झूठ मेरे बारे में, खड़ी हूँ यहीं आके पूछ मेरे बारे में. औरत हूँ की जात मेरी माँ ने दी, लोग ना खुश थे बातों जमाने की रोती थी कि क्यों है गृहस्थी में मुझको परवाना, और भाई को इजाजत थी हाजिरी वापस 7 बजे की जरूरी थी. वो खड़े ताने कौन सी इज्जत गवा दी माँ, जाके पूछूंगा. पूछेगा किससे? तू स्कूलों में चर्चे थे लड़कों की किससे, तू लड़ते थे मरते थे रोते थे हंसते थे. देख मुझे आज मैं ऊपर को रास्ते पे, वरना मान आज भी मेरे बयानों का. इतना मैं पढ़ ली पर मत था गवारों का, इश्क के समंदर बस औरत घुमाने का, बस वक्त औरत उठाने का. ज्वाला सीने में जो औरत के ताने ना दो, आग सी लगन में बढ़ने दो, बढ़ने बढ़ने
संपूर्ण ना जरूरत किसी लाले की, खुददार हूँ इज्जत है माँ के प्याले की, करूँ शक क्योंकि फर्क माँ के सहलाने और तेरे उस मतलब से बहला फुसलाने में मेरा सच अब टपके सरानों पे हर लड़की रोए, अब चिपका उन डालों पे धो लूंगी मुख मेरा चढ़ दूं चट्टानों पे, क्योंकि जनता मेरी बाप है क्या देख मुझे, एक जान चाहे एक चीज भरी भीड़ ऊपर अपना नाम चले नीचे प्रजा बड़ी चीज, मेहनत दिन रात देना मुझे सीख, देख ऊपर घोड़े महाकाली मेरी जीत, वक्त अब औरत उठाने का, क्या वक्त अब औरत उठाने का, झूठों के पर्दों से औरत उठाने का, क्या क्या वक्त अब औरत उठाने का, क्या वक्त अब औरत उठाने का, झूठों के पर्दों से औरत उठाने का, क्या वक्त अब औरत उठाने का, क्या वक्त अब औरत उठाने का, क्या वक्त अब औरत उठाने का, हिप हॉप में औरत उठाने का, थोड़ा डर औरत उठाने का। Are you feeling it? Are you feeling it? This is just the beginning. So आप सब लोगों ने मेरे को MTV हसल पे देखा होगा, right? Right? मुझे interaction चाहिए, seriously, I know कि this is Sharda University, this is Iisa Awards. I'm very happy to be here, but this is also a hip hop performance and I need interaction from you guys, right? Let me hear it. Sharda University, having fun. Great. So the second song coming up is Janani. ये गाना हर उन लड़कों के बारे में जो बहुत ज़्यादा माचो बनते हैं but actually में होते नहीं हैं. It's just a joke. It's just a joke. Please इसको दिल पे मत लेना. So let's play Janani. कुछ लोग ले लेना personally. It's fine. मुझे कैसे पता जनानी लोग है, This song is for India के जनानी, जो बड़ा टफ माचो मैन कितने चले जी, छाती चौड़ी मेरे काम करो मैं घर का राजा हूँ, रानी तेरी बैठी तू खड़ा बोले मैं प्यादा हूँ, उनकी जिद है बनना सिद्ध है, पर छुप के देखी गॉसिप गर्ल माचो मिथ है, हिपोक्रेसी पे तो जीते हैं, बोले बेबी स्टे स्लो, मिनट में कॉल करे बेबी मेरा बीपी लो, मैनी पेडी oh yes तू है जनानी, who gossip to your mummy or PMS thing, he came from nowhere, he's going nowhere, मुझे कैसे पता जनानी लोग है, hands up अगर तेरा वाला जनानी, और तेरे खड़े अगर तेरा वाला जमानी, जनानी बोले तेरी मेरी तेरी फाइट है, मैं हंस के बोलूं तेरी जो कि बड़ा लाइट है, जनानी बोले तेरी मेरी तेरी फाइट है, मैं तेरे खड़े अगर तेरा वाला, न वक्त up लड़े और जीते जो लड़की आसपास, पर उंगली की गुदगुदी से हर वो खास खास, टाइम पास इनके लिए जो शेकी मारे बात बात, पे लड़की पटी और फिर दिन में चमचा बॉस का रात को करना इनको स्पून है, पर भाई की बॉडी फ्लेक्स से दिखना भी तो कूल है, रोकना कोसना हर एक बात पे टोकना, और उनको रोको तो फिर अपना काम कर छोड़ना, he came from nowhere, he's going nowhere, मुझे कैसे पता, ये सब बंद करो यार, कोई नहीं बेटा स्टाइल है तेरा, क्या बोली, कोई नहीं बेटा स्टाइल है तेरा, समझती लड़की सब है, रोना धोना सबका चलता सब कुछ मस्त है, सब में छुपी है जनानी, तो उससे शर्त है, तो टेंशन ना ले अभी अच्छा खासा मर्द है, he came from nowhere, he going nowhere, मुझे कैसे पता जनानी लोग है, hands up अगर तेरा वाला जनानी, तो तेरे खड़े अगर तेरा वाला जमानी, जनानी बोले तेरी मेरी तेरी फाइट है, मैं हंस के बोलूं तेरी जो कि बड़ा लाइट है, जनानी बोले तेरी मेरी तेरी फाइट है, बथेरे खड़े अगर तेरा वाला जनानी. So I think we're not gonna do one on Baby. The next song we're gonna do, क्योंकि मुझे bars करने हैं यहाँ पे. I wanna fucking spit. Sorry for the profanity. मुझे बोला गया था कि मैं यहाँ पे abuse कर सकती हूँ. So I'm gonna do 152 bars here, without any hook, only bars. So Sharda University is gonna witness history. For the next 7 minutes straight, we're only gonna do bars. And कोई भी अगर आज ये सोच के आया था कि लड़कियां रैप नहीं कर सकती हैं, let me change your mind. Let's go. Let's play Mother OG 64 bar challenge that I did with Red Bull. Your favorite. Hey, I hear you. Hey, let's go.
Mother OG on the track. Agsy. Mother OG on the drill, yeah. Hey. Karan Kanchan on the beat. Karan Kanchan on the beat. This with the GG rap करूँ HR51 gang मेरा needy Friday से freaky FRIENDS में मैं Phoebe let me BB Habibi आजा दस तेनू कितना मैं भी कीकी नाम आगे सी रखूँ मैं cool क्यों झुकूँ जब करे सकूँ rule करण है बीट पे अर्जुन ने दिया था हेड मुझे सीट पे ये वो बैड बिच वाली वाइब ना करूँ स्निच वाली वाइब खा जाऊँ इंडस्ट्री चीट पे उठाई और जब सितंबर खत्म मैं वर्गो ग्रीन डे न करते कुछ फ्री में ब्रांडा नू पता हूँ स्ट्रीट पे टाइम देखो 420 ब्लैक रोल कर बेबी fuck the green yeah now we smoking a zaza puff puff pass बोलो PPP I'm pushing the beat गाना पी से है पैसा पी से मैं फ्री दिस कल्चर बस व्यूज के लिए ठीक मेरा विजन है लेगेसी विजन है पी नाम मदर ओजी सारे मेरे पुत्र हों सारे ओजीज पूछो मम्मी बात क्या है अभी तो फ्लो चेंज किया मम्मी बात क्या है मैनेजर चाहे बनूं मैं ड्रेक पर करूं मैं ये से रिलेट खुद की रिकॉर्डिंग पे खुद ही मैं लेट मिलता है हेट पर बढ़ता है रेट क्योंकि हिंदी रैप हैंडीकैप मेरे बिना ब्रो मैं यूनिक मैं मिस्टीक एक्समैन मार्वल नाउ देसी नारी मैं करा स्विच पंजाबी तो हिंदी हिंदी तो इंग्लिश कंपटीशन डरा हुआ that is facts though competition डरा हुआ that is facts whoa hold on kill the drill yeah you get it Agsy got the skills yeah मेरे fans और haters सोचते हैं that they know me but you don't know me वो कहते हैं Agsy late Agsy big गई है controversy Agsy ये Agsy वो Agsy got no mercy ये ले दो collect million की तो वीडियो बनी I got bars I got flows who gon' take it from me drop on the up है जरूरी मेरी जीत सब OGs जब तक mother OG आती on the beat हूँ मैं deep stop burn करूँ लगी आग सी नीनिया लोका with the heat yeah you can call me Patty Allen पर ना करूँ कभी flash yeah swipe करती खुद के cards never cash yeah कहते मुझे loner lone wolf वाली बात इनके clans करूँ clash yeah दिखते लोगों के gang I don't need no friend सुनो solo soldier boy करूँ superman मिलते cash मिलते shoes I go you मेरे haters भी अब करते stand दिखते rappers के gang I don't need no friend सुनो solo soldier boy करूँ superman मिलती respect मिलते views I go you हाँ हूँ मैं cocky but I love my fans I absolutely love 64 bars. I think मेरे best bars हैं अब तक के. Do you agree? Have you seen a girl spit like this before? No पे भी चिल्ला सकते हैं. It's fine. Have you ever heard a girl spit like this? Come on. तो 152 bars की streak हम complete करेंगे. This was just 64 bars. So the rest, I'm gonna tell you a story. I need water. Can I get water? Thank you. So COVID के time पे, when I was not supposed to go out, nobody was supposed to go out. मैंने अपनी बहन के साथ बैठ के every Friday for 50 Fridays, that's like a whole year, I dropped a verse. And what I'm going to present to you next is the best 5 out of those 50, and that's going to complete the 152 bars. Are you excited? Sharda University! Just give me a sec, I really need to have water. But thank you so much for being such a great audience. I love you all. Let me get the drip on. Okay, let's play this. I'm ready. This is all now. मैं कर रहे भाप वो डाविडम body you me left right on डाविडम look की मैंने बोले bro you वाकिलान लिखा जो मैं feel कर रहा Punjabi reggae kendedari something new naturally agasi unique jive diamond blue hip hop diwani kende menu new competition ani mera till their flow is new I
I'm all about loyalty, all about good vibration. गलत रास्ता चुना नहीं इसलिए वे relaxation. Distinction क्योंकि flow मेरा chameleon. तू कितना दिखावा भी कितना तो snitch तू opinion. पर मैं ना plastic, ईमान नहीं elastic. पहले पहले कम सी फिर भी सपने bombastic. मना वे लगे रहे टाइम पर ले आने किसी तो self made man. 2020 मेरा vision है majestic. मैं कर रहा hip hop for the freedom. Body to me left right on the rhythm. लोग की मैंने बोले bro you are killing. लिखा जो मैं feel कर रहा that's my feeling. मैं कर रहा hip hop for the freedom. Body to me left right on the rhythm. लोग की मैंने बोले bro you are killing. लिखा जो मैं feel कर रहा that's my feeling. Number two. क्योंकि I'm bored. चलो कहानी सुनाती हूँ, Friday बनाती हूँ. Imagine I'm from South Delhi and accent जरूरी है क्योंकि oh Lord. Well आग तो आग ही रहती है. Take notes में flow सिखाती है. भाई यार मॉप करना यहाँ ड्रग थोड़ा ज़्यादा है. Of course रखो अब real. मिला middle class family में 3 time meal. करोड़ों की deal. जब तक आम बात नहीं डेवी जोन्स वाला दिल. तेरे लिए बस हसल एक शो था, मेरे लिए मूवी. Kill Bill. International banker थी, आज internationally known मेरे skill. Exclusive कुछ मेरा परबल. Organic सब कुछ हर्बल. लगी आग सी हर जगह हलचल. तेरी छोटी सोच से छोटा मेरा सर्कल. Ass पर pretty. सब कहना चाहे hello to the kitty बंदा मेरा gangster. तेरे लिए पेटी पड़ती ना बीच में पर बेबी घर चल. Axie dreams. Oh beat chick. हेलो ये रैप नहीं है मेलो हम मैं लिटिल मैं गोलू पर कॉल मी बिग फेलो मेरा रूल वर्ल्ड वाइड निकी एम स्टाइल रिलेटेबल चाहिए था ना येलो तेरे फेवरेट रैपर ने मोनोपोली बना रखी है मुंह फाड़ के देते सलाह पढ़ना सलाह वो सही है मैं पीटी इविल ना दूं सीधे मौत ताकि देखे कैसे टीएचएच में मैंने आग सी लगा रखी है नो कैप रिस्पेक्ट है हनी सिंह और इक्का को काफी सीखा और वो पीछे थे जब कोई दिक्कत हो अब लेवल अप नीचे देखूं जैसे मैं डिवाइन ना कोई राजा ना रानी जो आगे मेरे टिक्का हो एनीवे खत्म हुए बांधे में खास है मेरी माँ और सारे ओजीज मेरे पास है क्लास से है मदर ओजी देते क्लास से अब चक्कर कॉपी मेरा वैसे भी ये लास्ट है Number 4 you know it What's poppin'? Free verse Fridays Hi मेरे verse high five I'm grinding In other wanna be जो बचा भी हो 50% I wanna be पर उनकी क्या गलती कंपटीशन तो मुझे पता बस मेरी मैं हूँ MVP मैं वो प्लेयर हूँ रैप है रियो तो टोक्यो में है हरियाणा की थोड़ी तू ऑन कैम स्वैग है दिल्ली का गला करूँ बहुत रैम खाई तेरे पे बेटा ओ डैम मेरे ओजी बेटे सूते निकले बहुत वैम I am in DET VMAs मैनिफेस्ट करूँ chilling with Kim and ये साइड में ग्रैमी हूँ 2 या 6 आने पासे पैपिश DNA with all that represent India मातर भाषा ना छोड़ू लो कह दिया क्योंकि मेरे जैसे रैपर ही नहीं जो छूले या आगे 10 साल में कह दिया मदर ओजी no one can do it like this Checking your reflection and telling your best friend like girl, I'll split my Bust it Is you fucking 2 shots fuck it रखने पड़ते lyrics clean I'm ahead of time dirty mind खत्म soap वो भी 30 times punch पे punch मेरी कॉम then I bust it I don't discuss it गांधी yeah I plus it and I cuss cause I can't even घर पे कोई ज्यादा बोले झुका देते डर से मेरे लड़के मेरे लिए लड़ते वो सारी चर्बी उनके सर से और मैं ना violent I'm the innocent type I meditate on them bitches फिर मैं कहूँ yikes मैं ना skinny legend share ना मैं Lizzo beat Indian में party मेरी colored height कल एक लड़की ने बोला मुझे I look high थी वो pretty but petty भी like a lot she wasn't my type किया नहीं right swipe bitch I'm Axie I don't do thoughts bust it is you fuck it 2 shots fuck it Sharda University 152 bars we just witnessed history or what I love the energy yeah that's my sister out there So bars तो सुन लिए हमने Do you want to listen to some बिल्कुल प्यारा सा R&B पंजाबी song Are you up for that? आधे लोगों को I think पता होगा गाने का नाम खाई है Oh, love you जिसने भी कहा I love you already So sorry guys I need water again
But I think this will be our last song here. And the song is Khai. It's all about love. मेरे लाइफ के आई थिंक 5 मास्टरपीसेस बनाए मैंने और उनमें से सबसे पहला खाई है. It goes like खाई तो भी गहरा मेरा प्यार. So I can rap, definitely. You've seen that. But I always wanted to be a singer. And the last song has to be my masterpiece. I hope you all love it. And if you want, you can get your phones out and get the flashlights on because it's all about love. I see flashlights. Thank you guys, I love you. So let's play Khai, yeah? I'm not gonna be like all energy because it's a love song. Let's go. हो मेरी गली विच लंघदा ते टुटे तारियां तू मंगदा ओ कहंदा सैर करावांगा मैं जट्टनी बह जा नेड़े तारियां नू छड्डनी ओ जट्टी खाई तू वे गेरा मेरा खाई तू वी गेरा खाई तू वी गेरा मेरा प्यार ओ मन ले खाई तू वी गेरा मेरा प्यार सैर करावांगा तू चलनी बह जा नेड़े आके जुल्फां नू खोलनी इन्नी दूरों आया वे कुछ तां बोलनी तेरे लिए रब नू छड्डदा ना छड्डी मैनू ये तेरी मेरी मुलाकातें मुझे काटे क्यों हो सिर्फ बातें आँखों में आँखें तेरी बाहों में कटे दिन और रातें बह के इरादे चला के मैं सारे कह दूं ओ जट्टी खाई तू भी गेरा मेरा खाई तू भी गेरा खाई तू भी गेरा मेरा प्यार ओ मन ले खाई तू भी गेरा मेरा प्यार मैं बेकार ना तू शकनी खाइयां तो मैं डरदी तेरे आना लड़दी चल दी लोड़ मैनू तारियां पसंद ने मैं दे आवा सारे तारे ने खाइयां तो मैं डरदी तेरे आना लड़दी डर भी मैं छड्ड दूं जे तू बन जावे चनवी पर जे तू बने मेरी चननी हो मेरी गली विच लंघदा ते नच्चो बादलां नू छड्डदा कहंदा सैर करावांगा मैं जट्टनी बह जा नेड़े तारियां नू छड्डनी ओ जट्टी खाई तू वी गेरा मेरा प्यार खाई तू वी गेरा मेरा प्यार हो मन ले खाई तू वी गेरा मेरा प्यार सैर करावांगा तू चलनी ओ जट्टी खाई तू वी गेरा मेरा प्यार खाई तू वी गेरा मेरा प्यार हो मन ले खाई तू वी गेरा मेरा प्यार cooked another one. I think ये पहली बार है जब मैंने खाई परफॉर्म करा है रिलीज करने के बाद. And I see the love. I am so blessed to be here, Iisa Awards, Sharda University. And I just want to give all my love back. And मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. जिस टाइम से मैं गाड़ी से उतरी हूँ, till the time I'm here, I've ended the performance. I've got so much love. Thank you so much for being here for me. बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत वेट किया है सुबह से, guys. I know, I see you. I love you all. Thank you. That was Agzi. Wow, guys, that's Agassi among us. We are indeed privileged. Thank you, Agassi, for such wonderful performance. And we would love to honor her. Can we have Harvinder Mankar ji on the stage? Balvinder ji, Dr. Krishan Kumar sir, as well as Vani ma'am and Jitendra ji. And I would like to have Mr. Deepak Bhuvneshwari Unyal, co-founder and CEO Insurance Samadhan. Shilpa Arora ma'am, co-founder and CEO Insurance Samadhan. Mr. Anubhav Jain, CEO Jain Shikanji, HBMB Food Products Private Limited.
Mr. Nitin Kalra, founder and CEO, Earth Crust Private Limited.
Done, please. Let's move to the green room. Thank you, Agassi. Thank you so much. Let's move ahead with the next panel, sir. We have Shark Tank panel now. Wow. How's the name itself? Huge round of applause for Shark Tank. No excitement? How's the Josh? Hi. Baitho chairs pe, please. Go on to your chairs. Let's maintain the decorum. It's a big thing, guys. Trust me, it's a big thing when we have Shark Tank fame among us. These wonderful people who have made their mark, who have created the history, they have created their own legacy. Right from the scratch, I know, because I am an entrepreneur. Now I might be running 9 companies, but I know I've started from the scratch and how it feels. So I adore these wonderful guys who started from the scratch and they have created their own mark. Let me welcome Mr. Deepak Bhuvneshwari Uniyal, co-founder and CEO Insurance Samadhan. Ms. Shilpa Arora, co-founder and COO Insurance Samadhan. Mr. Anubhav Jain, CEO Jain Shikanji, HBMB Food Products Private Limited. Mr. Nitin Kalra, founder and CEO Earth Crust Private Limited. One hand mic, please. Huge round of applause for one Shark Tank fame. Wonderful CEOs I have. The CEOs. So this is big. Trust me, this is big. It's a golden opportunity for all of you that we have them among us. The struggles, the hardships they have gone through from there to here. Trust me, it would be looking to you that now they have become big or the journey has been easy. I myself have been through it and it's been 25 years continuously. I've been working through it right at the age of 14 when I started working to today, establishing 9 companies, and I can understand how these guys have made big. So let's salute them and have a huge round of applause for all of them. Everyone, let's have a huge round of applause, please. The ones who are standing, please take the seats. Everyone, please take the seats. Let's maintain the decorum over here. It's a humble request. So, I would like to introduce Mr. Deepak Bhuvneshwari Uniyal. Wonderful, the gentleman in the green t-shirt, sitting right next to me, the co-founder and CEO of Insurance Samadhan. Next to him is Ms. Shilpa Arora, co-founder and COO, the Chief Operating Officer, Insurance Samadhan. We welcome you, sir. Then we have Mr. Anubhav Jain, CEO Jain Shikanji, HBMB Food Products Private Limited. You know, he is nurturing people, especially during the summers. So we are grateful to you, sir. Then we have Mr. Nitin Kalra, founder and CEO of Earth Crust Private Limited. We welcome you, and in this panel, we will get to know what exactly we all are into. So let me begin with Mr. Deepak Bhuvneshwari Uniyal, sir. Insurance Samadhan, wow. Till date, I've heard a lot about insurance, right? Yes, and we certain times when we have to buy insurance, maybe life insurance, or journal insurance, or car insurance, health insurance, we get confused. So first time I'm hearing this Insurance Samadhan, I would really love to throw a light what exactly this is. Thank you for having us here. So good evening, everyone. So like the name says, we are Insurance Samadhan. First thing is we don't sell anything. We don't sell insurance directly or indirectly. We only come into the picture if somebody realizes that they've been missold, there's a fraud which has happened, or there's a claim which has been rejected. So we're a tech platform. We resolve insurance complaints. We're a grievance management platform. We're the only one in the country doing this. So we're a category starter. We've solved more than 14,500 grievances in last 3.5 years. And hopefully very soon we'll be in Middle East and Africa. Thank you. Wow.
This is wonderful. No one ever thought, trust me, there were times like even I had lost my monies with the insurance and all. At that time even I was thinking why there is no regulatory body or why someone is not coming forward to solve this, because insurance is a peace of mind and you're losing money itself with the insurance. But now that has made me curious, what is your revenue source then? That I would shoot to Shilpa Arora ma'am, your co-founder and CEO, and she might be better knowing where's the money coming from, where's the money going. Because I'm sure the ones who in the audience, they would love to know if you are not selling insurance, where you're making the money from. Ma'am, mic is yours. So as Deepak has mentioned, we are a technology platform. So we filter the complaint. So if you have a complaint, it will go through the filtration process. There are certain questions that needs to be answered. And once those filtration processes complete and we feel the complaint is genuine and we need to help you, then we charge about 500 rupees as a registration fees. This is just a commitment from your end that you would cooperate through the process of resolution. In case we are not able to solve the problem, we refund this 500 as well. So our model is primarily success based. So if we get the money, if we resolve the problem that you are having, then we charge 12% plus GST as a success fee. So that's how our revenue comes. Thank you so much. So this is how beautifully they have carved a niche, and as well as they are only charging when there is a success. So there is a learning there, that if you really have to build a customer base and you really have to grow, only charge if you have literally provided a service or a product to your client. If you haven't provided, you haven't solved their problem, doesn't matter even if you have worked for them, we shouldn't be charging. And this is an inspiration. Trust me, you guys are literally, they say lead by example. That is what Insurance Samadhan is. And from there on, I would love to move on to Mr. Nitin Kalra, the founder and CEO of Earth Crust Private Limited. Wow, the name itself is unique. And I would really love to know that what does Earth Crust does. Thanks for introducing me. So actually our brand name is Let's Try, okay, which is into namkeen and snacking. I think in India, everyone eats snacks somewhere in the morning, afternoon or night, or with their, dinner, lunch and everywhere. But the ingredient, through which it is being made in India is the main concern in India. Okay, people are using lowest, cheapest ingredients available in market, and we try to take a further step, to provide. We actually know what India eats, okay, but we also know what India needs, okay. So that's where we came with the new and healthy snacking range, where we made our products with 40 to 50% premium ingredients. So suppose you are eating namkeen and you're eating Let's Try namkeen, you can be rest assured that you're eating 50% premium ingredients with the same taste. Any brand in India can provide to, currently at this point of time. So suppose we have one ISQ, which is flax seeds bhujia. You must have heard about, so it itself is a very great ingredient. We are using 40% flax seeds in a single namkeen, made out of 100% groundnut oil. So that's where we started our journey, and we are looking forward to provide new and healthy way to eat Indian snacks to the Indian people. Yeah. Wow, guys, so they are setting the bar higher every time, especially during the pandemic, whenever I was snacking, trust me, you cannot stop snacking, but there was a guilt feeling. Trust me, a guilt comes that what are you doing? You are like whole day, certain times what happen, whole day you're dieting, that you're trying to control the calories, suddenly you just binge on these snacks, these namkeens and all. And I'm glad that someone in the market has come up with the Earth Crust Private Limited with the healthy snacking. Wow, this is great. How can I get some free samples? Let me bribe him. I'm the moderator. So look at the thorough entrepreneur. I asked for free samples, guys, and he said you can order it from our website. See, no, he's saying you can order it from our website. He's not sharing the free samples. He's saying, so he's a thorough entrepreneur and other learnings. So whenever someone, you youngsters, anyone asks from free samples, buy it from our website, right? So जब नमकीन खाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? प्यास लगेगी. प्यास कैसे बुझाएंगे? शिकंजी से. Wonderful, a smiling, gorgeous, charming. अनुभव जैन जी हमारे साथ, जिन्होंने शिकंजी, जैन शिकंजी के नाम से अपना नाम कमाया और हिंदुस्तान के परचम पे अपना नाम लहराया है, HBMB Foods Products Private Limited से. तो सर, शिकंजी तो मैं अभी बना लेता हूँ. तो जरा मैं जानना चाहूँगा कि हमारी जैन साहब की शिकंजी में खासियत क्या है?
सर उसके लिए जैन होना ज़रूरी है। सर यहाँ पे हम बैठे हैं ना, हमारे लिए ऐसा होना ज़रूरी है। जो नींबू पानी को 60 रुपए में बेच रहा है। लेकिन सर थोड़ा तो और बताइए ना कि देखो सीक्रेट फार्मूला तो ना बताएं, बट कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आइडिया, क्योंकि शिकंजी घर घर में बन जाती है, नींबू लाओ पानी में निचोड़ो। देखो अब मेरे को आप कहो सडनली मेरे पास आप आओ कि यार शिकंजी बेचते हैं, मैं कहूँगा यार शिकंजी नींबू लाओ घर में पानी निचोड़ो, बन गया, उसमें क्या करना है? तो थोड़ा तो बताओ कहाँ से हुआ। शिकंजी सिर्फ नींबू से नहीं, उसके साथ जो मिला मसाला हम जो बनाते हैं वो मेन इंग्रेडिएंट्स है। सिर्फ नींबू और पानी से ही सब कुछ नहीं होता। शिकंजी मसाला हमारा 1957 से हमारे ग्रैंडफादर का दिया हुआ एक यश है, जो कि उस ज़माने में वो हमारे ग्रैंडफादर अपने नॉन्स को देते थे वैसे ही, कि पेट में दर्द है या फिर वैसे ही नॉर्मल डाइजेस्टिव के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है उसमें। उसी तौर से चलते चलते वो एक ब्रांड के तौर में बदल गया। तो काफ़ी लोग हमें कहते थे कि उनके जैन शिकंजी ये क्या चीज़ है, मतलब नॉर्मल शिकंजी नॉर्मल पंजाबी में बोलते हैं शिकंजवी, नींबू पानी ठेले पे बिकता है, लेकिन उसको एक ब्रांड के रूप में हमने बस इसी तरीके से हुआ कि कस्टमर्स हमें इतना प्यार दे रहा है, जो टेस्ट हम 1957 में देते थे वो आज भी हम कस्टमर्स को वैसे ही देते हैं। और दिन प्रतिदिन हमारे कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, हमें ऑनलाइन इतना प्यार मिलता है हमारी वेबसाइट से, हमारी अमेज़ॉन से। तो अभी हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है कि हम और उसको आगे क्या लेके जाएं। हम अभी आउट ऑफ इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, इंडिया के साउथ पार्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, तो और जहाँ भगवान ले जाए। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितनी बढ़िया एग्जांपल इन्होंने सेट की कि घर पे के शिकंजी है उसको इन्होंने ब्रांड बना लिया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शिकंजी बिक रही है, जो बिक रही है, जो हम कभी सोच नहीं सकते। और एक देखिए 65 साल की लेगेसी को कैरी करना, सेम फ्लेवर, उन्होंने बताया कि अभी भी वही फ्लेवर, सब कुछ वही है। तो एक 65 साल की लेगेसी है जिसको वो कैरी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या कर सकते हैं हम कि आपकी कोई भी इंश्योरेंस ट्रबल्स है तो इंश्योरेंस इनके पास चले जाए, इंश्योरेंस समाधान ये कर देंगे। उतनी देर इनकी हेल्दी स्नैकिंग करो, उनकी शिकंजी पियो, ठीक है, आराम से चिल मारो, टेंशन नहीं है। तो लास्ट इसको एक क्विक हम क्लोज करेंगे। एक सबसे एक पहले से एक चीज पूछूंगा। दीपक भुवनेश्वरी उनियाल सर, एक दिस इज अ यूनिक आइडिया आपके मन में आया कि यार इंश्योरेंस का समाधान देता हूं, जो लोग परेशान हैं, आई सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बट what is your one message to the youth if they want to start something, how they can do it? So our hardcore belief is intent and people. If you have right intent and if you have people with you, what you do with both of them is the game changer. So नीयत सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके साथ टीम है, आप जो उन दोनों के साथ करते हैं वो आपका गेम चेंज कर सकते हैं, and that's what we very thoroughly believe and follow. Wow, this is indeed great, and intent and the teamwork. If anyone that follows, and trust me, I think you came late, but this is what we were discussing since morning, that if your team is great, you can reach anything, because it's not the product, it's not the service, it's exactly the human beings you work with, how you treat them, they're gonna take your company to the heights. So I'm glad that you have such wonderful ethical values. Yeah, I would love to know it. Especially, I'm sure students would like to know. Though we could have picked people from the industry, because we come from the industry, have very good connects, but we very categorically decided that we will pick up people from universities. So our almost 60% staff we picked from universities. Shilpa taught them. They were graduate students, and not even graduates. Some of them were not even, they were doing this second year, and since it was COVID, so they were at home. We picked them. Some of them became, so they were interns, they became executives. Today, some of them are managers, and 2.5 years, they've been doing wonderful work. So I think the message is, even students can do wonders. They've been doing really a great job with Insurance Samadhan. Wow, this is wonderful. And quickly, just very quickly, I would like to know from Shilpa Arora ma'am, just any takeaway message she would like to give to the youth today. So currently
currently, as Deepak said, we have students primarily who completed their second year and were in the third year, and COVID hit, and they had all the time to work. So they started with us as interns. The major challenge that we saw with them was discipline. So we had to really work hard with them in terms of management of time. The time you come to office, how you work, how you conduct yourself, which was a challenge. So I would say that when you are ready for the work, first thing that is important is discipline. You have to respect each other, and the third thing that is important is lead by example. So if you are doing good, your people, your team will do good. Wow, so this is a wonderful learning, discipline, and if you do good, your people will do good. That is like you are setting an example. This is why there is another thing that has come up in today's kids, especially, they don't read. They are only totally digitally inclined, glued to their mobile phones, screens and all. So they say set an example. If you will start reading, they will start reading. So that is true for any organization as well. This is how I am leading my organizations, and I'm glad that ma'am shared such wonderful message. That is called leading by example. You stand at the forefront, and I would like to add on what we do at the organization, ma'am. If something good happens, we give entire credit. Happens that shouldn't have happened, I come at the forefront. I say I'm the president, I'm the CEO. It has happened because of me. Please talk to me. So when something wrong happens in any of your org, take an owner's credit on you. Only you are responsible for that. So, and give a right ethical answer to that and try to solve it. And when there is something good, let your entire team enjoy and celebrate it. And that is what you would have seen maybe in the cricket matches as well. Mostly captains, when they win the cups, they invite entire team and they let them enjoy the victory. So from this victory, there is wonderful human, Mr. Nitin Kalra, who has been victorious enough in making healthy snacking. So this is done, right? You all four are wonderfully established. That is fine. You have tasted success now. But when you started, there were hiccups, there would have been hindrances, would have been obstacles, or there would have been failures. So I would really love you to give a message how to tackle failures. So I'll say one thing that, to these young students, you have to be 100% sure. So I'm saying whatever you are doing, I see young age, they try multiple things, that I'll do this, I'll do that, and they give their 50-40% to one of the tasks. I'll say whatever you want to do, give your 100%. So when I started, we have nothing. We started from a 10 by 10 feet room. Now we are operating at 32,000 square feet facility. So this is we have achieved in single year. And what we did when we started, everywhere, we didn't have money, we didn't have manpower, no one was able to join us. They actually saw that, we are operating from a single room. What would be their future? No one joined us, okay? So we operated, we grew our brand from the ashes. Now everyone knows about Let's Try. And now on LinkedIn, on other job portals, we get 100 requests to join our company. So we have achieved it in single year. And only mantra was that we give our 100%. I took a loan, I did everything to achieve that single task, and finally we were able to achieve it. Wow, so inspiring, starting from 10 by 10 room to 32,000 square feet. Sir, you have made me nostalgic that this is, I'm somehow seeing my reflection, or it would have been story of, I say, most of the startups, they start from home, they start from garages, or they even start from their own bedrooms with a chair. Even 3-4 days ago, I was hearing Mukesh Ambani ji. He said that Reliance started as a startup. His father started in the bedroom itself from a chair with 1,000 rupees. So you took me to that 6 years ago when I started my hover robotics. Like, no one was willing to work, and people even didn't accept my product. They were like, you are making a hoverboard. Like, who needs a hoverboard? India doesn't require it, it's gonna be expensive, there won't be any acceptance. But I was always keen on, I'm the pioneer of e-mobility in India. I kept on going, and now we are #1 in India, and we are among top 5 in the world. And so I'm glad that this is how beautifully you can grow. So this is the right example in front of you, these all four, including me, we are sitting here, that when it just requires a thought, then it requires your passion, and as ma'am said, it requires discipline, your perseverance, hard work and smart work, and you can achieve anything in life. And when we talk anything in life, हमारे बीच में दीपक, हमारे बीच में अनुभव जैन जी,
जिन्होंने वो कहते हैं ना घर से शिकंजी को निकाल के बेच दिया। सर ये बड़े बड़े काम तो चलो कर लेते हैं, मैंने तो बड़ा यूनिक सा प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है ना, जो किसी ने ना देखा ना सुना। मेरी मोनोपोली है आज, मेरा कंपेटिटर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर लोग साहब ने बुलानी नमकीन, चलो इनके नमकीन वाले कंपेटिटर हैं लेकिन बाहर से खरीदनी पड़े। आपका तो कंपटीशन घर में बैठा है, तो वो कंपटीशन को कैसे टैकल किया? सर लोगों को ये बताया कि नमक से शिकंजी मत बनाइए, शिकंजी मसाले से शिकंजी बनाइए जो हम बनाते हैं, और लोगों को टेस्ट चढ़ाया उसको उनको, और उन्होंने अब घर पे नमक से नहीं शिकंजी मसाले से शिकंजी बनानी शुरू कर दी है। और दिन पर दिन हमारे पास कॉल्स आती हैं कि सर हम जो घर पे शिकंजी बनाते हैं उससे टेस्ट क्यों नहीं आता है, आपकी शॉप पर ही क्यों टेस्ट आता है शिकंजी पीने का। तो वो रेसिपी हमने उनके घर तक पहुंचाई है, अपना प्रीमिक्स बना के शिकंजी। तो यही है। और बाकी स्टार्टअप तो सर जैसा आपने कहा कि रिलायंस का हुआ, उन्होंने भी स्टार्टअप कहा। स्टार्टअप हमारा 1957 में हमारे ग्रैंडफादर ने एक पान की शॉप से किया, जो आपने भी देखा होगा गली के कोने पे पान के खोखे होते हैं छोटे से, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे फादर ने, हमारे ग्रैंडफादर ने, सब ने मिलकर इतनी मेहनत करी है, बसों में जा जाकर शिकंजियाँ बेची हैं, और उसका ही आज हमें ये यश है जिसको हमें आगे तक और लेकर जाना है। सर इस यश को हम भुलाने लायक ये यश नहीं है, और कोशिश करेंगे आगे तक इस चीज़ को याद रखा जाए। बिल्कुल। और मैसेज सर मैं ये दूंगा कि जैसे जो अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है कि जो मैं सबको मैसेज दे सकूं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर पेशेंस है और आइडिया है तो अच्छा काम किया जा सकता है। क्योंकि ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि मुझे ए पे जाना है तो ज़रूरी नहीं ए आपको अच्छा रिजल्ट दे, बी शायद आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन जाना आपको सभी पर पड़ेगा। आपको अपना मंथन करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सोच है, जो आपका माइंड सेट है, वो क्या चीज़ है। मैंने भी वही करा, मैं जॉब के लिए भी गया, मुझे जॉब से डिनाई बहुत हुआ, और क्यों हुआ, सिर्फ बिजनेस बैकग्राउंड की वजह से हुआ। तो मैंने फिर जब ये डिनाई को मैंने अपना चैलेंज बना के उसको फेस किया, उसका सॉल्यूशन निकाला कि मैं भी फिर अपना एक बिजनेस करूँगा। तो थैंक यू। जैसे इन्होंने बताया, इसको कहते हैं आत्म मंथन। आत्म मंथन से आपके अंदर से बहुत कुछ निकल के आता है। वो हम बाहरली दुनिया में चीज़ें ढूंढते हैं, वो बाहर कुछ नहीं मिलता, निकलेगा हमारे अंदर से ही। तो जब कभी आपको लगे ना कि मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, आंखें बंद करो, शांत होकर बैठो, ये सोचो कि मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है, बड़ी से बड़ी गाड़ी है, अपना खुद का हवाई जहाज है, बड़े से बड़ा घर है, सारे बिल्स वगैरह सब पे हो रहे हैं, अनलिमिटेड मनी है। अब सोचो कौन सी एक चीज जिंदगी में करना चाहते हो। पता है क्यों बता रहा हूं? वो एक चीज जो आप करना चाहोगे ना, वो काम नहीं लगेगी जिंदगी भर, वो क्योंकि वो आपका पैशन है। मैंने कॉमर्स पढ़ा, आई डिड माई BCom, then I did MBA finance, then I did a CA, then I did PhD in artificial intelligence and robotics. Because since childhood, I was so passionate towards technology that I got into AI and robotics. Now people, they get surprised that how come from BCom you shifted to robotics. This is, I say, I haven't shifted, it is expansion, diversity. Because in robotics, I need to know finance, I need to know marketing, I need to know operations, I need to know HR, which my early education taught me. The only thing I added is AI. तो जैसे इन्होंने जैन साहब ने बताया कि इनका सीक्रेट फार्मूला, इससे भी एक बड़ी अच्छी लर्निंग है। फार्मूला नहीं देते किसी को, प्रीमिक्स भेजते हैं सबके घर पे कि तो 60 पैसे के नींबू को 60 रुपए में बेचना 100 गुना, ये कर सकते हैं। तो कोई भी कर, आप लोग सोचो क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। इनसे ज़्यादा आज को आपको एक्सपोजर मिल रहा है। हमारे टाइम पे तो ऐसे इतने बड़े मेंटर्स हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मिल लें इनको। मेरे टाइम पे नहीं पॉसिबल था कि मैं दीपक जी को मिल सकता हूँ, या शिल्पा मैम को मिल सकता हूँ, या जैन साहब को मिल सकता हूँ, या नितिन कालरा जी को मिल सकता हूँ। तो दिस इज ट्रस्ट मी बिग। लेट्स गिव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड कंक्लूड दिस सेशन ऑन दैट नोट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So this is indeed a privilege, indeed even for me, that I'm standing among all these 4 gems of India who are making their mark and creating their own legacy. Thank you so much. Really nice sir, बहुत ही एक meaningful session रहा आप लोगों का। एक्चुअली शार्क टैंक इंडिया को फैसिलिटेट करने के लिए मैं कुछ अपने डिग्निटरीज को बुलाना चाहूँगा। बलविंदर सिंह बिंद्रा जी, हरविंदर मनकर जी, रोचिका अग्रवाल जी, डॉक्टर एस कृष्ण कुमार जी, नीरजा जी और दीपक चावला जी। कौन है? ज्योति
योजना जैन जी, इसके बाद हम कर देंगे। एक बात तो तय है कि इंसान अगर ठान ले कुछ भी हासिल कर सकता है, और इन खूबसूरत लाइनों से मुझे वो बातें याद आ रही हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो इंसान अगर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। एक छोटा सा आइडिया इंसान को कब कहाँ कैसे लेकर जाए, हमें यहाँ सीखने को मिलता है, चाहे वो जैन शिकंजी की बात हो, मिस्टर नितिन कालरा की बात हो, इंश्योरेंस समाधान की बात हो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, जोरदार तालियां प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, शार्क टैंक के जो भी पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज़ आप लोग स्टेज पर रुकिएगा। और मैं जो स्पेशल गेस्ट हैं मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं फॉर मोमेंटो। मिस्टर बलविंदर सिंह बिंद्रा जी, गवर्नमेंट कॉरपोरेट अफेयर्स हेड एट शाहजहानंद लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ, बलविंदर सिंह कैसे पूछिए। Next is Mr. Harvinder Mankarji, writer, director, and cartoonist. इसके बाद हैं नीरजा गुप्ता मैम, प्रोग्राम ऑफिसर एट दूरदर्शन दिल्ली। यस, नीरजा गुप्ता मैम, आप दूरदर्शन में प्रोग्राम ऑफिसर हैं दिल्ली, बहुत बहुत स्वागत है मैम। जोरदार तालियां मैम के लिए प्लीज। आफ्टर दैट आई इनवाइट मिस्टर दीपक चावला, मैनेजिंग डायरेक्टर एट DC टेस्ट प्रेप। दीपक चावला जी, ही इज देयर। दीपक सर, ठीक है। Now, I request Rochika Agrawal ma'am, member censor board of films and designer director at, I think Rajwaras. Sorry, ये कुछ pronounce मैं समझ नहीं पा रहा।
रजवाड़ा 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 राजस्थान वाला, ओके सॉरी. नेक्स्ट इज जिन्होंने हमें खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया, सदी के सबसे बड़े आशिक, मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा भूपी फ्रॉम यूपी को. प्लीज वेलकम भूपी, आइए. यस. उसके बाद है मिस्टर दिनेश राय जी. आप कॉरपोरेट ट्रेनर हैं फॉर मिफ. मिस्टर दिनेश राय, प्लीज कम. हंसना मुस्कुराना ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी सेहत का राज है, और ये राज आज हमने यहाँ भूपी के ज़रिए जाना. थैंक यू भूपी, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लेकर आए हैं आप आगरा से. इसके बाद है मिस्टर दिनेश राय. दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और काफ़ी देर से हम आपको देख रहे थे कि धैर्य धारण किए हुए थे आप. कॉरपोरेट ट्रेनर फॉर मिफ मिस्टर दिनेश राय. इसके बाद कुछ अवॉर्डीज की लिस्ट है मेरे पास. मिस्टर जसबीर ग्रोवर. मिस्टर जसबीर ग्रोवर, अवॉर्डीज की लिस्ट. सर सर प्लीज आइए. मैम के बिहाफ पर आप हैं मिस्टर. ठीक है ठीक है सर, आए हुए. स्पेशल गेस्ट को यहीं रोक देते हैं. ठीक है. जसबीर ग्रोवर, हेतु शुभम, पीयूष डालते, मिस्टर पीयूष डालते. जसबीर, ऋतिक, पीयूष. सर दिस इज Mr. Ritik Shubham, co-founder and CEO of Turks. हाँ. ओके नितिन जी. So can I call Mr. Jasbir? जसबीर ग्रोवर मैम के बिहाफ पर आप हैं सर. फाउंडर कोचिंग जीन, रिजिलियंट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कैटेगरी, ये कैटेगरी है आपके लिए. इस कैटेगरी में आपको अवार्ड दिया जा रहा है. इसके बाद है मिस्टर ऋतिक शुभम. ऋतिक शुभम इज हियर. ऋतिक शुभम सर नहीं है, नहीं है. मिस्टर पीयूष, पीयूष डालके. मिस्टर पीयूष डालके. आफ्टर दैट अब्दुल बरी खान. अब्दुल बरी खान, थैंक यू सर. आई थिंक जितेंद्र जी. उसके बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा जी. तो आप पूर्णिमा जी हैं. पूर्णिमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. अब्दुल बरी खान की बिहाफ पर आप ले रहे हैं. कैटेगरी इज सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर. इस कैटेगरी में आपको अवार्ड दिया जा रहा है, अब्दुल बरी खान. नेक्स्ट इज पूर्णिमा चनन जी. पूर्णिमा चनन, आर यू हियर मैम? नेक्स्ट इज
Somu Singh Soni and Bhuvnesh Kumar. Somu Singh. Mr. Avinash ji. Next is Tarini Kapoor. Next is, I think almost done, sir. Jitendra sir, हो चुका. हाँ. हाँ प्लीज अगर आपको लगता है कि कोई छूट रहे हैं हमसे बाय मिस्टेक. ऋतिक जी नहीं है. पूर्णिमा मैम हैं? पूर्णिमा जी आ रही. मिस्टर पीयूष नहीं. मिस्टर सुधांशु. आइए सुधांशु, आप शारदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं. प्लीज सुधांशु. सुधांशु आप आइए. श्वेता अग्रवाल. ये लगा ठीक है. इनको कॉल किया. हाँ पूर्णिमा जी हो गई. मिस्टर सुधांशु प्लीज कम ऑन स्टेज. आप बजा सकते. जी जी. नेक्स्ट इज श्वेता अग्रवाल मैम. सुधांशु को कॉल करता हूं. फाउंडर सुधांशु. ओके ये आ गए सुधांशु. श्वेता अग्रवाल मैम. पूर्णिमा मैम. तो पूर्णिमा मैम प्लीज आप आए. सॉरी सर. पूर्णिमा मैम. फाउंडर बैकएंड द स्पिरिचुअल हब. Award categories Social Entrepreneur of the Year. पूर्णिमा मैम का. मिस्टर जितेंद्र. पूर्णिमा मैम. Now Shweta Agrawal मैम. हाँ श्वेता अग्रवाल. Shweta Agrawal ma'am, please. Founder, Transcending Beliefs. Categories Social Entrepreneur of the Year. इस कैटेगरी में आपको अवार्ड दिया जा रहा है. श्वेता अग्रवाल मैम. नहीं, I have given. नहीं, विवेक सिंह को हम दे चुके. Sorry. सुधांशु. हो गया. सुधांशु हो गया. विवेक सिंह. विवेक सिंह. Now, I would like to call on stage Anju Handa ma'am, please. Anju ma'am,
आप यहाँ हैं वाणी मैम? शी इज़ नॉट हियर आई थिंक. क्या नाम बता रहे मुझे? जयंती. मिस्टर जयंती मुझे नहीं पता. नहीं. जी उनको कॉल करिए. सर अंजू हैंडल कॉल करिए. बलविंदर सिंह. जयंती विगासी उनके बिहाफ पर आ रहे हैं मिस्टर बलविंदर सर. आइए बलविंदर सर. It's the last, sir. Please. Almost done. अब एक अवार्ड है एस कृष्ण कुमार जी को. डॉक्टर एस कृष्ण कुमार. इसके बाद मैं एक गुजारिश करूँगा कि जितने भी हमारे फिल्म फेडरेशन के मेंबर्स हैं वो एक बार प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए. फिल्म फेडरेशन के नए मेंबर्स, पुराने मेंबर्स सब एक बार आ जाइए. बुला रहा हूँ मैं, बुला रहा हूँ. गौरव 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 फोटोग्राफर गौरव गौरव फोटो खींचनी है पूरे फिल्म फेडरेशन की. कृष्ण कुमार जी का फिल्म फेडरेशन की तरफ से एक टोकन ऑफ रिगार्ड है. हमारे जो चेयरपर्सन है नेशनल बोर्ड के फिल्म, एक मिनट मैं सबको बुला रहा हूँ, सब आ जाइए एक बारी. रुचिका जी, हरविंदर मनकर जी, जो भी दिख रहे हैं, बुप्पी बाजी आप भी आ जाओ. आप न्यू मेंबर हो. दिनेश भाई आ जाइए. कोई भी फिल्म फेडरेशन का, मुनीश भाई, मुनीश जिंदल जी, आप भी अब हमारे फिल्म फेडरेशन के मेंबर हो गए हैं तो आप भी आ जाइए. हम आपको जल्दी से 30 तारीख को ऑनररी लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री वो दे रहे हैं, मेंबरशिप फी. आइए सर. लास्ट में बड़ी ही खूबसूरत लाइनों के साथ मैं यहाँ अपनी बात रखकर समापन करना चाहूँगा. अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, रज़ा क्या है. आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है. फिर किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात होगी. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. डन. थैंक यू.